into the business zone, which will be expected for day. We will be witnessing the cricket here. Well, we can see the grass here. This is the part which is mostly the bowler has been pitching the ball. The grass is here, but it's in lesser numbers, though, which indicates that as the game will progress, we will surely be looking some spin here. But for the very first day, in the first session, always Rawalpindi is helpful for the pacers. So, first couple of days, pacers will enjoy, but as the game will progress, we will surely be looking some magic of spins here. जी इजाज़ पिच रिपोर्ट दे रहे थे और मेरे साथ इस वक्त कॉम बॉक्स में है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर यासिर हमीद। यासिर हमीद, आपको वेलकम करते हैं। शुक्रिया आसिफ, थैंक यू। यासिर, इस वक्त टॉस रेडी है, इस वक्त चलते हैं हिजाब के पास जो टॉस के लिए रेडी है वहाँ पर। Round 7 of the Quaid-e-Azam Trophy. We are live here at the Pindi Stadium and I've got the two captains with me. As far as toss is concerned, it's the visiting team that's going to bowl first. So Southern Punjab has chose to bowl first, but we'll talk with both the captains right now. First we have Saud Shakil for Sindh. Saud, sabse pehle to good morning, and how are you feeling? Alhamdulillah, all good. And you're going to be batting first, right? So do you think that's the correct decision? ये मेरे हाथ में तो नहीं था, उनके पास आज चॉइस थी तो उनके पास ऑप्शंस था, लेकिन कोशिश करेंगे अच्छी क्रिकेट खेलें बस। Absolutely. And any changes in your team पीछे से या कोई playing 11 जो है वो चेंज हो रहा है या नहीं आज? काफ़ी चेंजेस हैं, 3 चेंजेस हैं। खुर्रम भाई वापसी आ गए, मैं थोड़ा बीमार था लास्ट मैच में, मैं भी कम बैक कर रहा हूँ और साथ आसिफ महमूद भी वापसी आ गए टीम में। बिल्कुल, thank you so much for your time, Saud, and good luck for the game. Thank you. And Hassan, you're bowling first. Obviously, you were the home team, visiting team, and you had the choice to pick that. तो plan क्या है? देखिए, अगर पिच में देखें तो अच्छा खासा मॉइस्चर है और हम इसको यूटिलाइज़ करेंगे। जिस तरह हम 4 पेसर के साथ जा रहे हैं तो प्लान यही है कि विद द न्यू बॉल हम स्ट्राइक्स लें और उनको प्रेशर में डालें। बिल्कुल। और आपकी टीम में कोई चेंजेस हैं? हमारी टीम में 2 चेंजेस हैं और एक फास्ट बॉलर नए आए हैं समीन की जगह पे। समीन रेस्ट कर रहा है, थोड़ा मेडिकल इशू है, और सदाकत नया लड़का आया है, वंस अगेन उसका कम बैक हुआ है, फिर उसके बाद अलियास आया है, हसन आया, तो 3 चेंजेस हैं हमारे। बिल्कुल, and we cannot wait to see you in action, Hassan. Good luck for the game. Thank you. Thank you so much. So the news from the centre is that Southern Punjab has chose to bowling first, and it was an uncontested toss. So we cannot wait for the action. यासिर, जिस तरह आपने देखा कि सदर्न पंजाब के कप्तान हसन अली ने जो है वो फैसला किया कि वो बॉलिंग करने जाएंगे। अवे टीम है और हमने देखा है कि रावलपिंडी में ऐसा ही हो रहा है कि ज़्यादा पहले टीम्स जो है बॉलिंग चूज़ कर रही हैं। या बिल्कुल, जो फ्रेश पिच है और उसकी वजह से देखिए टीम्स आपके सामने। सिंध की टीम में खुर्रम मंजूर, सऊद शकील और आसिफ महमूद की वापसी हुई है, और सदर्न पंजाब जिस तरह कि हमने देखा अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। हसन अली को देखेंगे एक्शन में, लास्ट मैच जो इधर हुआ था उसमें वो नहीं थे। और उस्मान सलाउद्दीन, ही इज़ गेटिंग लॉट ऑफ रन्स, 2 सेंचुरीज भी ली हैं उन्होंने लास्ट मैच में की हैं बैक टू बैक। और सलमान अली आगा इनके ऑलराउंडर हैं, तो इट विल बी अ गुड कॉन्टेस्ट। सदर्न पंजाब बॉलिंग फर्स्ट, तो अच्छा है, बॉल सीम होगा। और दोनों बैटर्स जो हैं वो इस वक्त पहुंच चुके हैं। खुर्रम मंजूर पिछले मैच में नहीं थे लेकिन ज़बरदस्त फॉर्म में हैं। अब तक 11,000 से ज़ायद रन्स बना चुके हैं और 31 सेंचुरीज हैं, एवरेज भी बहुत ज़बरदस्त। उमैर बिन यूसुफ भी अच्छे टच में, 1 सेंचुरी स्कोर की है पिछले मैच में। दोनों इनिंग्स में कॉट एंड बोल्ड हो गए थे। अब तक 7 सेंचुरीज हैं 35 मैचेस में। जी हाँ बिल्कुल, उमैर ने अच्छी बैटिंग की है इस काज़म ट्रॉफी में, लेकिन खुर्रम की वापसी हुई है। और बहुत ही अच्छा आगाज अब्बास का 3 स्लिप्स के साथ इसको चेज करने गए थे खुर्रम मंजूर। अब्बास की बॉलिंग अर्ली ऑन देखनी होगी। काफ़ी बाहर बॉल था और खुर्रम मंजूर ने अपने हैंड्स को थ्रो किया इस पे, लकी रहे कि एज नहीं हुआ। पहला बॉल टेंटेटिव स्टार्ट खुर्रम की तरफ से।
यासिर, इसके ऊपर आपसे पहले भी बात की है, लेकिन हमने खुरम मंजूर को देखा है कि अर्ली ऑन स्टेप कर कर खेल रहे हैं और अब्बास की सलाहियत है कि दोनों जानिब स्विंग करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। खुरम मंजूर को की काफ़ी इनिंग्स देखी हैं यहाँ पे इस सीज़न में, और जिस जिस इनिंग्स में ये डिफेंसिव खेले हैं, बॉक डाउन हुए हैं, उसमें ये जल्दी आउट हुए, लेकिन जिसमें अटैक किया इन्होंने उस इनिंग में इन्होंने रन किए। ये अब्बास की विकेट्स 600 विकेट्स हासिल की इन्होंने लास्ट मैच में, बहुत बड़ा माइलस्टोन। ओ, बहुत ही अच्छी गेंद, और अपील भी हुई थी लेकिन अब्बास की तरफ से कोई अपील नहीं हुई। खुरम मंजूर भी मुस्कुरा रहे हैं। सो बहुत ही शानदार आगाज। स्पॉट ऑन डिलीवरी मोहम्मद अब्बास की, और ये पिच जो है इनको सूट करती है। और एक और बहुत ऊंची शॉट, लेकिन इस दफा भी अंपायर आले हैदर बिल्कुल भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं लगे। सो जबरदस्त आगाज हुआ है सदरन पंजाब की जानिब से। या जैसे कि इनकी स्पेशलिटी है इस तरह की पिचेस पे बॉल करना, काफ़ी क्लोज था, लेकिन शायद इम्पैक्ट जो था वो आउटसाइड द ऑफ स्टंप था या हाइट का मसला था। बट काफ़ी इवेंटफुल पहला ओवर अब्बास की तरफ से। द मोस्ट एक्सपीरियंस वन अब्बास, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए भी बहुत आउट किए हैं। ओ ब्यूटी, क्या जबरदस्त गेंद इस दफा पड़ने के बाद बहुत क्लोज रही स्टंप्स के, और खुरम मंजूर इस वक्त किस्मत उनका साथ दे रही है। जी हाँ, बिल्कुल लकी रहे खुरम एक बार फिर। बहुत बड़ा गैप बना और आला बॉल। चौथी स्टंप होती तो डेफिनेटली उसको हिट करती। बहुत ही लाजवाब बॉलिंग अब्बास की, और आज के इस खेल का आगाज अब्बास की शानदार बॉलिंग को देखते हुए। और जबरदस्त ओवर अब्बास का। खुरम मंजूर स्ट्रगल करते रहे। सो पहला ओवर इख्तिताम पजीर हुआ यहाँ पर। सिंध ने अब तक कोई रन नहीं बनाया और लकी रहे कि उनकी कोई विकेट भी नहीं गिरी। ये कैमरा बहुत ही वाहियात आ रहा है। तो सदरन पंजाब ने जबरदस्त आगाज किया है यासिर, और अब उनके कप्तान हसन अली इस वक्त फार एंड से तैयार हैं बॉलिंग के लिए। 3 स्लिप्स, 1 गली और 280 विकेट्स अब तक ली हैं अपने फर्स्ट क्लास करियर में। और बहुत ही अच्छी गेंद। जी हाँ, हसन अली बहुत अच्छा रिकॉर्ड, 280 विकेट्स, और ज़्यादातर ये जाने जाते हैं शॉर्टर फॉर्मेट के लिए, लेकिन लंबी क्रिकेट में इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है, पाकिस्तान के लिए भी और फर्स्ट क्लास में भी। और यहाँ पे बॉल जो है वो बातें कर रहा है, ठीक ठाक टॉकिंग। यासिर, अर्ली ऑन देखना होगा कि हमने देखा है कि जब भी उमर बिन यूसुफ को थोड़ा सा वक्त मिलता है, 30-40 रन बना लेते हैं, तो फिर अच्छा लंबे रन्स की तरफ जाते हैं। जी हाँ, आज उमर बिन यूसुफ से ओपन करवा रहे हैं और साइम अयूब को नंबर 3 पे रखा है। अच्छी टैक्टिकल चेंजेस। सिंध की टीम बहुत अच्छा खेल रही है इस ग्राउंड पे, और इस वक्त टेबल को टॉप तो नहीं कर रहे लेकिन सेकंड पे हैं। अच्छी क्रिकेट खेली सिंध ने सो फार, और आजम खान हमें नज़र आ रहे हैं।
साउदर्न पंजाब की तरफ से। जी हाँ, आजम खान और ये अंपायर तारिक रशीद बहुत ही सीजन्ड अंपायर हैं और उनके साथ हैं आले हैदर जो यहाँ पर अंपायरिंग के फ्राइज सर अंजाम दे रहे हैं। बहुत ही अच्छी गेंद, हसन अली बहुत ही अपना एक टिपिकल अंदाज में आगाज किया बॉलिंग में। जी डेफिनेटली काफ़ी जो स्लिप के फील्डर्स होते हैं और कीपर होते हैं, इस तरह की जब बॉलिंग हो रही होती है तो स्लिप कॉर्डन कीपर बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं, किसी वक्त भी एज हो सकता है। और बहुत अच्छा बॉल बाहर निकाल रहे हैं हसन, बड़ी अच्छी जगह से कर रहे हैं, स्पॉट ऑन है। और इस दफा इसको सीधे बल्ले से खेल दिया है, रन्स मिलेंगे। एक लॉन्ग चेज है फील्डर के लिए, देखना होगा और फील्डर ने इसको कट ऑफ किया। उमैर ने बड़े ही जबरदस्त अंदाज में सीधे बल्ले से इसको खेला था। तो इस तरह ऑफ द मार्क हुई सिंध इन 3 रन्स के साथ। जी आले हैदर तारिक रशीद के साथ यहाँ पर फ्राइज सर अंजाम दे रहे हैं, बहुत ही सीजन और सीनियर अंपायर हैं। और यहाँ पर दूसरे ओवर के खेल इख्तिताम पजीर हुआ और 3 रन्स बनाए हैं सिंध ने बगैर किसी नुकसान के। इस दफा पूरे एतमाद तरीके से इसको खेला। बात हो रही थी कि अगर ये दोनों बैटर्स जो हैं एक अच्छी पार्टनरशिप की तरफ जाते हैं और अर्ली ऑन विकेट यहाँ पर नहीं मिलती सदर्न पंजाब को, तो फिर सिंध के पास एक लंबी सलाहियत है, उनकी लंबी बैटिंग लाइनअप है, सऊद शकील, साइम अयूब, जबरदस्त तरीके से ये अच्छे रन्स बना सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, और खुरम अपना कमबैक कर रहे हैं इस मैच में। जो लास्ट इनिंग खेली थी इन्होंने 100 किया था और बड़ा स्पेशल 100 था वो, हाई स्ट्राइक रेट के साथ अच्छा खेले इस बार। फाइनल लेग की तरफ 1 रन। जी हाँ, खुरम मंजूर ने पिछले मैच में हमने उनको एक्शन में नहीं देखा था, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त एवरेज है और फर्स्ट क्लास का एक बेहतरीन करियर इनका। बहुत अच्छी गेंद, इस दफ़ा यहाँ पर शॉर्ट लेग में हमने देखा एक फील्डर रखा है और इस कैचिंग पोजीशन पर और यासिर जिस तरह हम बात कर रहे थे कि जो सिंध की टीम है इनके पास बैटिंग लाइनअप बहुत ज़बरदस्त है। जी बिल्कुल, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है और जिस तरह हमने देखा इनकी परफॉर्मेंसेस है, बड़ी कंसिस्टेंसी है उनमें। सिंध की टीम ने जो पहले 6 मैचेस खेले हैं उसमें 2 में फतुहात ली हैं, 4 ड्रॉ किए हैं और पॉइंट्स इनके 82 हैं, जबकि सदर्न पंजाब जो है उसने 5 मैच ड्रॉ किए और 1 हारी है। सो सिंध की टीम फिर भी बेहतर पोजीशन में है।
सिंध की टीम ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, हमने देखा है इन्होंने चीज़ों को इम्प्रूव किया है, इन्होंने जो गलतियां थी उनको रेक्टिफाई किया है और एज ए यूनिट खेले हैं। और इनकी बॉलिंग जो है बहुत ही अच्छा रिस्पांस कर रही है। इब्रार अहमद की सूरत में इनके पास एक एक्स फैक्टर मौजूद है जो कि किसी वक्त भी किसी टीम को आउट कर सकता है। अब देखें, और इस दफा आजम खान स्टंप्स के बिल्कुल क्लोज खड़े थे और ये डाउन द लेग साइड, अंपायर आले हैदर का इशारा कि ये बाई के 4 रन होंगे। ये बिल्कुल खुर्रम मंजूर जो थे वो क्रीज को छोड़ के खेल रहे हैं और क्रीज को यूज़ करके फुटवर्क यूज़ कर रहे हैं, आगे आगे खेल रहे थे। तो आज़म ने इस बॉल पे ऊपर आए स्टम्प्स के ऊपर, लेकिन बॉल बहुत लेग स्टम्प के बाहर, वेवर्ड डिलीवरी। अब्बास की तरफ से 4 रन्स 22 के हासिल किए। नया बॉल बहुत क्रूशल है और इस पे विकेट्स लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर जो पहला ओवर देखा था हमने वो बहुत अच्छा ओवर किया अब्बास ने, लेकिन अब थोड़ा सा अपनी लाइन छोड़ रहे हैं। और एज हुआ था लेकिन लकी रहे कि सेफ एरिया में लैंड किया। एक और बाउंड्री यहां पर मिल जाएगी। कॉन्फिडेंस स्टोर नहीं था, आउटसाइड एज हुआ, सो यहां पर 4 रन मिले। जहाँ आउटसाइड एज सीधा खेलना चाहते थे और लकी रहे कि गली के फील्डर में नहीं गया या स्लिप की तरफ नहीं गया बॉल। 4 रन हासिल किए खुर्रम ने। 12 पे कोई आउट नहीं। और लकी रहे दफा तेजी से 1 रन लेंगे। इनसाइड एज हुआ, बहुत अच्छी गेंद हसन अली की। ये बॉल सीधा रहा ये वाला, क्योंकि इनका बॉल बाहर निकल रहा था। लास्ट ओवर सारा उनका आउट स्विंग हुआ है। ये बॉल सीधा रहा और गलत लाइन खेले उमैर बिन यूसुफ। लकी रहे कि इनसाइड एज होके विकेट्स को नहीं लगा। सीधा खेलना चाहिए, कवर खेलना चाह रहे थे। और एक दफा खुर्रम मंजूर फिर सही तरीके से समझ नहीं पाए, गेंद अंदर आई। अच्छी बॉलिंग हसन अली की जानिब से। पहले दिन की पिच और ये मुझे लगता है कि ये स्विंग होता रहेगा। पोस्ट लंच भी हो शायद। पहला दिन है पिंडी में, हमने देखा है कि पहले दिन मूवमेंट मिलती है और बैट्समैन का टेस्ट होता है। बट द गुड थिंग इज कि इस पिच पे अगर आप अच्छी बैटिंग करें, प्रॉपर खेलें, बॉल टू बॉल खेलें, बॉडी के पास खेलें, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अच्छा हो, तो आप रन्स कर सकते हैं। लेकिन ये पहला घंटा बहुत ज़रूरी है, इसमें अपनी शॉट्स को होल्ड करना पड़ता है। इस पहले घंटे में हमने देखा कि दोनों ही बॉलर्स हसन और अब्बास दोनों की जानिब से सब कुछ देखने को मिला। इन स्विंग, आउट स्विंग, क्लोज कॉल्स भी हुई। सो बहुत अच्छी बॉलिंग, बैटर्स लकी रहे। और एक दफा फिर बहुत अच्छी गेंद हसन अली की। खुर्रम मंजूर थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। जब बहुत ही आला बॉलिंग करें हसन, अनलकी, विकेट नहीं मिल रही। दोनों बॉल अंदर आए और बहुत शार्प अंदर आए। और इससे पहले हमने लास्ट ओवर देखा, इन्होंने सारे बॉल बाहर निकाले थे और इस ओवर में स्टंप्स को हिट कर रहे हैं। वेरी गुड आइडिया, क्योंकि गैप बन रहा है खुर्रम का और उन्होंने ये चीज़ एज अ बॉलर उन्होंने नोट की है। वेरी गुड बॉलिंग। 1 रन लेना चाहते थे, जेंटल पुश किया था और उमैर बिन यूसुफ की अच्छी कॉल। ये सिंध का डग आउट जिसमें नेल जॉनसन और
आसिफ महमूद वहां पर थे। और डाउन द लेग साइड बहुत ही अच्छा कलेक्ट किया आजम ने, बहुत अच्छी कोशिश। यकीनी तौर पर ये 4 रन्स बचा लिए। वाह व्हाट अ सेफ, क्या बात है। एक हाथ से उन्होंने रोका और काफी फुर्ती नजर आई आजम में। 13 पे कोई आउट नहीं। और यहां पर ये पहली विकेट गिर गई। बहुत ही शानदार गेंद अब्बास की और एक अच्छा कैच लिया आजम ने। एक्सीलेंट कैच। अभी हम बात कर रहे थे आजम की एजिलिटी की, डोंट गो ऑन हिज वेट, लेकिन जिस तरह उन्होंने मूव किया राइट साइड पे, फिनोमिनल, बहुत ही अच्छी डिलीवरी अब्बास की। जगह पे घिरा, बाहर निकला, दूर से पुश किया बॉल को, बहुत बाहर का बॉल था। उमर बिन यूसुफ अगेन 5 रन बना के आउट हुए, 13 पे 1। और ये सिंध के कप्तान सऊद शकील जो पिछले मैच में रेस्ट कर रहे थे, इनका कमबैक हुआ है। एक ज़बरदस्त फर्स्ट क्लास करियर, 187 रन्स की बेस्ट इनिंग्स इन्होंने खेली और एक एवरेज बहुत ज़बरदस्त है, 51.64। या 55 मैच और बहुत ही अच्छी एवरेज। सिंध की टीम की बैटिंग की को होल्ड करते हैं सऊद शकील, कैप्टन, बहुत अच्छी फॉर्म में भी हैं। लेकिन जिस टाइम पे बॉलिंग बैटिंग करने आए हैं, डेफिनेटली इनका टेस्ट होगा। और वो फेस कर रहे हैं अब्बास को, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है। 601 विकेटें होगी अब्बास की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। यासिर, ये देखना होगा, ये बैटर्स जो है स्टेप फॉरवर्ड करके खेल रहे हैं। आप समझते हैं कि ये टेक्निक ठीक है अर्ली ऑन स्विंग को चेज करने के लिए? डिपेंड करता है कि बैट्समैन ने अगर इस तरह अपनी इनिंग्स को पहले खेला है तो फिर तो ठीक है। देखिए, कोई मूवमेंट नहीं थी। हमें पता है उमर बिन यूसुफ की कोई बैक एंड क्रॉस मूवमेंट नहीं है, लेकिन उसके लिए बड़ा प्रिसाइज होना पड़ता है ऑफ स्टंप पे, स्पेशली बैट्समैन को, कि वेयर इज ऑफ स्टंप इज। और बहुत अच्छा कैच, लो कैच था आजम का। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, बिल्कुल इससे फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर ये चीज़ें आपने की हों पहले, अगर आप यहाँ पे अडॉप्ट करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। हाँ, अगर आपको आदत है इसकी करने की तो फिर ठीक है। लेकिन मेरे फॉर माई लाइकिंग, अगर आप क्रीज में रह के खेलें और इतने ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रही है मूवमेंट। अगर आप बॉल टू बॉल खेलें, करीब खेलें, बाहर का बॉल छोड़े अंदर का बॉल खेलें। दैट्स राइट, बहुत अच्छा छोड़ा। अब्बास सऊद शकील के अगेंस्ट 3 स्लिप्स और एक गली के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। एक शॉर्ट लेग में भी फील्डर है।
जी हाँ, 3 स्लिप्स हैं और काफ़ी क्लोज खड़ी हैं स्लिप्स। तो पहली स्लिप, दूसरी स्लिप, तीसरी स्लिप, यूँ लगता है कि बातें कर रहे हैं आपस में। थोड़ा सा गैप देना चाहिए, ज़्यादा पेस नहीं है बॉल की। थोड़ा सा अगर एक एक स्टेप बाहर हो तो ज़्यादा एरिया मिलेगा इनको कवर करने का। यासिर, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो वाइड स्लिप्स होती हैं, ये क्विक बॉलर के लिए होती हैं कि जिसकी पेस ज़्यादा हो, या स्विंग के लिए भी वो मददगार साबित हो सकती हैं? देखिए, वाइड स्लिप इसलिए होती हैं कि जो स्लिप में फील्डर्स खड़े हैं, ठीक है, ऑब्वियसली वो अच्छे हैं तो इसलिए स्लिप में खड़े हैं। तो अगर वो अच्छे हैं तो अगर वो यहाँ पे कैच पकड़ सकते हैं तो यहाँ पे भी पकड़ सकते हैं, तो एक एरिया आपको मिल जाता है। अक्सर इस तरह होता है कि करीब से बॉल जाते हैं, एक दूसरे को देखते रहते हैं कि एक कहता है आपका कैच था, दूसरा कहता है आपका कैच था, तो वो जो चीज़ है वो ख़त्म हो जाती है फिर उसके बाद। जी हाँ, 5 ओवर्स के बाद एक कामयाब ओवर खत्म हुआ, 13 पर 1 सिंध। हसन फॉरेन से अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे और यहां पर बहुत क्लोज कॉल हो सकती है। गेंद पड़ने के बाद अंदर आई, यहां पर देखना होगा क्लोज कॉल यासिर। जी हाँ, बिल्कुल। और अच्छी शाउट, क्लोज शाउट, अच्छी अपील, अच्छा फैसला। ऊपर से ऊपर जा रहा था बॉल, तारिक रशीद जिन्होंने पहले ही देख लिया था कि बॉल जो है ऊपर जा रहा है, हालांकि प्लीट किया ऑलमोस्ट हसन ने, अपने एक घुटने पे बैठ गए थे। बहुत अच्छा बॉल अंदर आ रहा है, शार्प अंदर आ रहा है। और आउटसाइड एज, खुर्रम मंजूर ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी चेज नहीं कर पा रहे हसन अली की इन स्विंग आउट स्विंग, और इस वक्त काफी मुश्किलात में हैं। ये इस बार बाहर निकला बॉल और बिल्कुल स्क्वायर ऑन हो गए थे खुर्रम। मुकम्मल तौर पे डिसीव हुए। और यहां पर एक शानदार कैच ले लिया स्लिप्स में। खुर्रम मंजूर जो अर्ली ऑन स्ट्रगल कर रहे थे, एक दफा फिर गेंद बाहर निकला आउटसाइड एज, और इस दफा कोई गलती नहीं की, फील्डर ने एक और विकेट हासिल कर ली। एक्सीलेंट कैच। स्पॉट ऑन डिलीवरी, थोड़ी बैकअप लेंथ थी और बहुत ही अच्छा कैच जैन अब्बास का। लो कैच, खुर्रम मंजूर स्ट्रगल करते हुए 4 रन बनाए, 13 पे 2। मैन इन फॉर्म साद इस वक्त बैटिंग के लिए आ रहे हैं। साद ने जबरदस्त सेंचुरी स्कोर की और सिंध को मुश्किलात से निकाला अगेंस्ट सेंट्रल पंजाब। एक जबरदस्त इनिंग्स खेली थी साद ने, और इस वक्त एक दफा फिर सिंध की टीम मुश्किलात का शिकार है। 13 पर 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, उनके साथ कप्तान हैं सऊद शकील। जी हाँ, साद खान जिन्होंने पिछले मैच में डैडी 100 किया, 164। प्रेशर टाइम है, इस वक्त 2 विकेट्स गिरी हुई हैं, लेकिन कंडीशंस डिफरेंट हैं। फ्रेश पिच, फर्स्ट डे, और दोनों बॉलर्स जो हैं वो क्वालिटी बॉलिंग कर रहे हैं। अभी देखना होगा कि साद किस तरह की बैटिंग करते हैं, किस तरह खेलते हैं।
साथ एक ज़बरदस्त इनिंग्स खेली थी अगेंस्ट सेंट्रल पंजाब। उसी टेम्परामेंट को, उसी फ्लो को, उसी कॉन्फिडेंस को आगे बढ़ाना होगा साद ने। जैन ने एक ज़बरदस्त कैच लिया स्लिप में खुर्रम मंजूर का, और खुर्रम मंजूर स्ट्रगल कर रहे थे। जी हाँ बिल्कुल, खुर्रम मंजूर का हमने देखा कोई क्लू नहीं था उनके पास बॉल का। पीछे बॉल थोड़ा सा बैक ऑफ लेंथ किया इस बार। बहुत ही अच्छा कैच जैन अब्बास का, आउटसाइड एज, लो कैच था। अच्छा मिडल गया इसको, साद ने क्रैकिंग आवाज आई थी यासिर बल्ले से। आगे गिरा हुआ बॉल था और उसे अच्छा टाइम किया। उमर बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग फॉर्म में है, उनके साथ आसिफ भी। आसिफ पिछले मैच में नहीं थे, इस दफ़ा फिर हैं, उनको इंक्लूड किया गया है। सो दोनों ही ज़बरदस्त बॉलर्स हैं। और हसन अली का एक कामयाब ओवर यहां पर ख़त्म हुआ, और सिंध 13 पर 2। डाउन द लेग साइड, अच्छा आगाज किया अब्बास ने, और जैसे खुर्रम मंजूर इस स्विंग को चेज करने के लिए जा रहे थे डाउन द ट्रैक, सऊद शकील भी उसी राह पर गामजन है। बहुत ही अच्छी गेंद, और जैसा पिच का बिहेवियर है अब तक फास्ट बॉलर्स के लिए, पहला घंटा जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है। ये पिच की अगर बात की जाए तो जी हाँ बिल्कुल, ये देखिए पिच थोड़ा सा मॉइस्चर है लेकिन काफ़ी उसके अलावा ड्राई लग रही है। और जो अब्बास की बॉलिंग है ये बिल्कुल उनको सूट करती है कि विकेट्स की तरफ हिट करती है इनकी बॉल। जब इस तरह की पिच हो, बैटिंग पिच हो, हमने देखा है इन्हें ये ज़्यादा लेग भी फोर्स करते हैं या बोल्ड किया है इन्होंने, तो ये पिच जो है ये अब्बास को बड़ा सूट करती है जो जिस तरह की नज़र आ रही है। डेफिनेटली ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस करते रहेंगे बैट्समैनों से। जी हाँ, इस वक्त हसन अली ज़मीन पर बैठे हुए हैं, और ऐसा लगता है कि हसन अली बेहतर महसूस नहीं कर रहे, और फिजियो आ चुके हैं। ऐसा लगता है कि उनको क्या आ रही है और वो फिट नहीं है। जी शायद ब्रेकफास्ट ज़्यादा कर दिया उन्होंने। और हसन अली बड़ा अच्छा आगाज़ किया था, और अभी तक तो वो ग्राउंड में है, लेकिन ऐसा लगता है कि उनको ग्राउंड से बाहर जाना होगा और थोड़ा सा रेस्ट करें। ऐसा ही कुछ आबिद अली के साथ भी हुआ था पिछले मैच में, यासिर, इफ यू डू रिमेंबर। जी हाँ बिल्कुल, वायरल भी आजकल काफ़ी फैला हुआ है, तो शायद वायरल हो क्योंकि वो खांस रहे हैं।
लेकिन इस वक्त बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे हसन, और मेरे ख्याल से जल्दी वापस आना चाहिए अंदर, जाएं थोड़ी देर रेस्ट करें, कुछ पिए लें, कोई लिक्विड लें और वापस अंदर आएं। अच्छे बॉल कर रहे हैं, पिक योर सेल्फ माइट अप। जी हाँ, ये सदर्न पंजाब के लिए अच्छी खबर नहीं है कि हसन अली अगर लंबा रेस्ट करते हैं। और इस दफा इसको कदमों का इस्तेमाल किया था और ऐसा लगता है कि ये ओवरथ्रो के रन मिल गए। तेजी से रन के लिए भागे थे सऊद शकील इसको खेलने के बाद। और तेजी से 2 रन्स ले लिए, ओवरथ्रो का फायदा उठाया। जब रन लेना चाहते थे लेकिन वापस भेजा और अच्छी थ्रो, अच्छा डिसीजन, रन नहीं लिया वरना रन आउट हो जाते। अब्बास ने बहुत ही शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया अब तक। अब राउंड द स्टंप्स आने का फैसला किया है सऊद शकील को। 3 स्लिप्स एक गली के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। शॉर्ट लेग में एक फील्डर लिया है। जी हाँ, 3 स्लिप्स हैं, पहली स्लिप, दूसरी स्लिप, तीसरी स्लिप, लेकिन पहली स्लिप और दूसरी स्लिप में गैप जो है वो इतना मुझे ठीक नहीं लग रहा, थोड़ा सा बहुत क्लोज खड़े एक दूसरे के। आज़म की रेंज बहुत अच्छी है, तो पहली स्लिप जो है वो अगर 1.5 स्लिप में आ जाए और जो दूसरी स्लिप है वो थोड़ी और एक स्टेप बाहर हो जाए और तीसरी स्लिप भी बाहर हो जाए, जो फ्लाइंग स्लिप है वो एरिया भी कवर हो सकता है। आजम ने अब स्टंप्स के ऊपर आकर विकेट कीपिंग करने का फैसला किया है। राउंड द विकेट बॉलिंग कर रहे हैं अब्बास। और आउटसाइड एज, यहां पर रन्स मिलेंगे और ये बाउंड्री मिल गई सऊद शकील को। Well, hello and good morning. This is the first day of this Quaid-e-Azam trophy, where we've been getting some sort of help for the Pacers earlier on. 2 wickets down in the wicket column for 19 runs. We are inside some sort of bother, but it happens in a normal 4-day cricket. Mohammad Sadaqat, second game, 3 wickets. Bit early in his first-class career. Work towards onside. Well, I've got Hijab with me in Combox. Morning, how are you?
Assalamu alaikum and good morning to everyone who is listening to us. It's a bright sunny morning here in the Pindi Stadium, and we have got a good game on our hands here. It's Southern Punjab taking on Sindh. Well, Hijab, Sindh has already won 2 games here at Rawalpindi. Some sort of home conditions for them. So they've been playing most of the games here at Rawalpindi. Like, I think it's their 5th game at Rawalpindi. Yeah, absolutely. It seems like they're pretty aware of the conditions. They should be aware of the conditions by now. And that was played with a straight bat. We do see that the captain is now on the field, South Shakil, who was rested for the previous game. But he's back now. Just not that comfortable playing those kind of shots here. Saad, really a good batter, but here you've been looking on to the Sindh, that how they have started here. Some sort of weather conditions, a bit chilly, but we have seen here in the past that batters normally enjoy after lunch break, might be near to the tea session, but this session should be more watchful. That was flicked towards the leg side, towards Muhammad Abbas. Well, we have seen that Southern Punjab has bowled really well in this first session today, this morning. Like their captain Hassan Ali told us, that there's a bit of a moisture present in the pitch, and they're going to take full advantage of that moisture. And we have seen Muhammad Abbas do that. He's bowled brilliantly. And Southern Punjab look very active in the field today as well. So that's a pretty good sight to see, isn't it? Well, Saud Shakil, we did see that in the previous game. His stance is a bit more familiar to Fawad Alam. 8 gone, 20 for 2. Muhammad Abbas, right on target. This is what the sort of conditions, bit windy, cool, really liked by Muhammad Abbas in his bowling. Well, Muhammad Abbas has bowled consistently well. He has kept the batters in check. We haven't seen a lot of loose balls from him. Yes, exactly. He's really a talented bowler, not only representing Pakistan, but he has presented county cricket. He has got plenty of experience. But the batter, Saad, who has got 161 runs. Previous game, Hassan is sitting in dugout having a cup of tea. I think the weather is demanding for such kind of cup of teas. Oh, absolutely. I wouldn't mind a cup of tea myself, to be honest with you. But hopefully he'll be back on the ground soon. Oh, that was a brilliant ball. We have seen a lot of swing this morning from Muhammad Abbas. We're seeing the colors of the old Muhammad Abbas coming back. He's been very tidy, very impressive. Yes, that's really a good line for a left-hander from really a talented bowler. He's just pitching it
whipping up from the good length area. As he has got plenty of experience. It's still with a new ball. Look at that, whipping up from the good length and surprising the batter. Almost squared on. Was about to nick it. That's better. That's better way to play such kind of deliveries. And earlier on, you need to be with a straight bat because some sort of wind. As we are sitting in com box, we can really feel it. The wind is blowing here, and Abbas is bowling against the wind. Absolutely. We have seen that the batters from the Sindh have struggled with middling the ball a lot in this session this morning. And I think their primary concern right now would be just to bat the session out, not lose any more important wickets in this session, especially not to Mohammad Abbas, who's kind of been lethal this morning. Flicked on towards the leg side. They're running hard. A little bit of a mix-up in the middle, but they're comfortably back for 2 runs. And I think that's better. If you're not looking toward boundaries, the bowling has been superb. So you need to chip in like with singles, because Rawalpindi venue, not that big, but you can still get 2 runs. Azam Khan having a good day earlier on, airborne. Azam Khan looks charged up this morning. He's had a good morning. And as a bowler, that's what would you like to see, you know? Your whole team, especially your wicketkeeper, giving it their best. And then again, whipped it towards the leg side. No run there. At the end of the 9th over, the score is 22 for the loss of 2 wickets. Way towards offside, Sadaqat Khan, and there you see Saud. I was telling you that the way he's just making his stance seems like Fawad Alam. And since you've mentioned that, I can see it too. We have seen a bit of a change in the batting order for Sindh today. Saim Ayub, who usually opens, we haven't seen him in action just yet. It was Khurram Manzoor who opened the innings with Umair bin Yusuf, which was unusual. Walking down the pitch, not just settling down. We did see that batters lots of time, they've been walking down the pitch to disturb the line of the bowler. In Sadaqat, it's a second game for him in trophy. He has played 1 game at Multan, got 3 wickets in the first inning. And, nothing in the second, but 3 slips for Saud Shakil. Oh, that's a beauty. And there's a huge shout from the bowler. The umpire is not interested. And I wonder why. Well, he jobbed the impact. It was drifting down the leg side. But he has hurt him by playing that shot, because that ball was angling in somewhere onto the flap, I think so, on the knee roll. Have a look. Sadaka, just look at the ball. It's just height, drifting down the leg side. And he exactly knew that that ball has been drifting down the leg side, but there is some sort of injury for Saud. He's in sort of pain. Saying that he's in pain. Well, we hope that he's okay. We already have 1 captain sitting in the dugout. We don't want another one walking off.
Hassan Ali opened the bowling today with Mohammad Abbas, and he was pretty impressive until he had to walk off. Seems like he wasn't really feeling well on the ground, and we have seen him in the dugout having a cup of tea. Hopefully he'll be back. But Sadakat has been good this game. This is his first game in the Pindi Stadium, so he's probably getting used to the conditions here. And like you mentioned, Ijaz, it's very windy right now, so that has to be a bit of a challenge. Good one towards offside, and Saud Shakil let it go to the wicketkeeper. 3 centuries. 3 centuries for Saud Shakil in the season of Quaid-e-Azam Trophy. 187 against Balochistan here at this very venue. 105 against KP on this very venue. 2 wins for Sindh side with a margin of 10 wickets. Absolutely, they've been mighty impressive up until this point. That's again a whip towards the leg side. The bowl and the fielder are in a race right now. Hassan Ali gathers that one. That adds 2 runs to the total and takes it to 24 with a loss of 2 wickets. Well, there is the batting card. Not a lot of runs there for the openers Khurram Manzoor and Umair bin Yusuf. They have struggled a bit against the swing of Mohammad Abbas. Captain Hassan grabbing the wicket of Khurram Manzoor. Umair bin Yusuf was the victim of Abbas, and with Azam collecting a brilliant catch. Pretty solid, and that's the way how you will be playing against Abbas, because he's pitching in a good lines, good areas. And earlier on in the morning session, like up to lunchtime, as we've been already describing, the cool, the weather conditions, really helpful for the pacers. Absolutely, and that was the reason why Hassan Ali picked bowling first for this game of round 7 of Quaid-e-Azam Trophy. Played it with the straight bat. We have seen the ball come onto the bat very hard. We can hear the voice, the noise of that bat, the cracking sound all the way here to the comm box. Mohammad Abbas have been very successful in this morning session for Southern Punjab. They'll be looking to win this game and gain some momentum here. Well, he's really generating good pace. If we peek back, like against Northern at Ahmedabad, he got 5 wickets. Abbas. Now you see, Saad having a good time. Really a talented cricketer. And you're right, from middle order, you're putting up a batter on the top. You can really score runs. And being a left-hander, you can enjoy like opening up and scoring runs, though that he is spending much time onto the back foot. And I think so, it's good. Abbas is having a close look. It's absolutely crucial that you spend some time on that pitch today and get through this first session, get through the difficulty of this first session. 161 against Central Punjab from Saad here at Rawalpindi. Then the other game was 72 runs against Northern side at Faisalabad. The 2 big scores. Edged away, and look at the beauty. They're all jubilant. They have got the Saad here, the 3rd wicket.
Well, like we mentioned before, Mohammad Abbas is absolutely lethal this morning. Again, Saad was beaten. There was a huge edge on that ball, and the fielder making no mistake whatsoever. So here we go, 3 wickets. The first bowling point for Southern Punjab, and there you see the Saad. Only 4 runs in 21 deliveries, and there you go. These are the pictures. They've just not been able to play towards onside, the leading edge into the gully, and the rest of the things have been done by the fielder. So he departs here, caught by Hassan. Khurram, he's not Khurram, he's Saad, departing on 4. Fawad Alam, 198 games, 14,000 runs, and look at the massive 42 centuries. Almost approached 300 runs for his best, but he's a caliber player. Well, one of the most experienced batsmen for Sindh is out there, Fawad Alam. Ideally, he wouldn't be playing the first session for Sindh, but it is what it is today. All credit to Mohammad Abbas and the way that he has bowled this morning. He's been great. Took 2 very important wickets, including the wicket of Saad Khan, who was the centurion in the previous game against Central Punjab. But look at the body language. He's happy. The way he's getting 2 wickets, surely be, because the wicket column, being a pacer, gives you most of the confidence. There you go, Fawad Alam, one of the experienced pro. He will surely give you the tough time because he has got plenty of experience. 83 runs against Central Punjab here at Rawalpindi in the previous game in the second inning, then 51 against Balochistan at Rawalpindi by Fawad Alam. Surprised him, but he has earned runs. Lucky 4 runs. I'm pretty sure that's not where he intended the ball to go, but he'll take it. He'll take those 4 runs. Fawad is off the mark, and it's 28 for the loss of 3 wickets. Yeah, Fawad, he had just lost one of the hand when he played that shot because of the power of the ball. He was going towards onside. 11 gone, 28 for 3. Versus Balochistan, he was 187 not out. Previous game, right? सबसे previous game top पे है. So Shakil and Sadakat, he is into his first game here at Rawalpindi, and Fawad was in operation to get that single, but Southside now will have to wait here. Well, talking about Fawad Alam, he's been in sublime form recently, scoring 2 back-to-back centuries against Khyber Pakhtunkhwa and then Balochistan in the last game, in which he remained not out. And he loves the stadium, doesn't he? This Rawalpindi Cricket Stadium, Fawad loves that. Yes, exactly. The bounce is good here. The batter can trust onto the bounce of the surface. Would it see that lots of runs have been scored here at this very venue?
as Rawalpindi has been the place where most of the batters, they've been enjoying scoring runs, and most of the wickets as well here. So I think that batters, they really trust onto the surface. Absolutely, but you have to give it to the Southern Punjab bowlers. They have got their lengths right, pretty much on the mark here in this first session, and obviously they're getting help from the pitch as well. There's a bit of a moisture, there's a lot of movement, and it's very, very windy out here today, this morning. So a lot of help for the bowlers, but they have got their lengths pretty right. All three batters that have walked back to the pavilion have struggled to score, have struggled to middle the ball from the very start, we've seen. And although this is Sadaqat's first game in Pindi, he's looked pretty good. And that's Fawad Alam on the screen. There's a lot of debate about Fawad Alam's stance, Ijaz. It's very peculiar. He's played a lot of international cricket as well. And just look at that. Look at how he stands. That's got to confuse the bowler. He opened up his arms, played it. Yes, you're right. Hassan back in playing area, being a captain. He must be happy that his bowlers, they have got 3 wickets in just 29 runs before the lunch. Still the session is on. And there you go. We're talking about Fawad, but when you are getting runs, technique doesn't matter. See that at the very last moment, we're just going through. Straight drive. Enough legs? No, what a fielding. Excellent. That was almost a low full toss towards the offside. Very well timed by Fawad Alam and extremely well fielded at the boundary as well. That's a brilliant, brilliant effort from the fielder, not giving up until the very end, saving some precious runs for his team and getting a huge applause from his teammates as well. That's very well done, Hassan. Yeah, Hassan, really a good athlete. And that's better. We did see that Fawad in the previous games, he was chasing, even though that Saud Shakil was also chasing those kind of offside deliveries. But today, they are doing good, leaving them. And I think they are talking with each other that it's not going away. Umar really a wonderful bowler, accurate enough. And it's good that coaches, they've been giving him tips for more improvement. Well, the game is not over yet anyway. Oh, that's well bowled and well left by Saud Shakil, going straight to the wicketkeeper. And that is the end of the 12th over. The score is 32 for the loss of 3 wickets. Oh, what a gap. Oh, well, that's very anticlimactic. The ball slipped out of the bowler's hand, so we're going to have to reload that one. Well, there is some problem with the side screen, and as spoken earlier, Fawad, he's been very much accurate enough. Nobody should be there standing in front of him or either onto the side screen when he's playing.
Oh, that's brilliantly bowled coming into the batter there. We've seen Fawad Alam moves a lot when he's batting. That has got to confuse the bowler sometimes, doesn't it? It doesn't matter how many times you've bowled to him. He just has a very, very peculiar stand there. Yes, exactly. But I think that we did see that in a couple of previous games, the bowlers, they are attacking onto the pads with a really quick and fiery balls, and he's still not happy with someone who is there at side screen. So, well, bowling mostly in a first-class game will be looking that the ball has been going towards offside, but this time, quick one. And there, that's why I was pointing out that bowlers normally, they are mostly quick into the rib cage and might be onto the pads. Well, Abbas getting a bit of a bounce there from the pitch as well. Seems like Fawad had no time to time that particular ball. He's generating good pace, variations, as well as ball is moving around. That's better. We would normally see that in first-class longer versions. The bowlers, they've been pitching that line, what we did see here, towards off-stump. And normally we used to see that batters, they've been leaving those kind of deliveries. But Hassan must be happy. 3 wickets for his team. Yeah, this is a wonderful start for Southern Punjab here this morning. They were hoping to get quick wickets, and Mohammad Abbas has led them to that plan brilliantly up until this moment. Fawad doesn't seem too happy, probably with the side screen. He's complaining to the umpire. I'm pretty sure that the issue is with side screen at the moment, and the batsman on strike, Fawad Alam, is not really happy with it. He has played 3 balls already. He has got 3 slips and a gully and a short leg as well towards onside, and Fawad is just pointing towards that fielder. Catch! It was officially played, but going down to the fine leg. He seems a bit clueless at the moment, Fawad. Still not happy with the side screen. The umpire is trying to maneuver this somehow. Yes, having a bit of the discussion with the umpire that there should not be anyone when I'm batting, because it's all about cricket, what we've been witnessing here in the centre. And he's not happy. The way he's shaking his head. There you see, that's the target for Fawad. If you want him, that is the area. But he's south. So you need to see properly because of the stance. And there you see Fawad, he's still not happy with the side screen, and the traffic has been hovering over here. And there's the proof that Saud Shakil does mirror Fawad Alam a little bit, doesn't he? We got confused for a moment there as to who's on strike. Wicket-keeper was up. Yes, exactly. Stance almost catching each other. Dot delivery to finish the over. 13 ball, 33 for 3.
पानी के वक्फे के बाद एक दफ़ा फिर आपको रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से खुशामदीद कहते हैं, जहां पर सदर्न पंजाब और सिंध की क्रिकेट टीमों के दरमियान ये 7वें मरहले का मैच जारी है। सऊद शकील जो कि कप्तान हैं सिंध के, अब 7 रन पर नॉट आउट हैं, उनका साथ दे रहे हैं फवाद आलम, 8 रन बनाए हैं। अब्बास ने ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया है, 17 रन देकर 2 विकेट हासिल की हैं। सदाकत फौरन से अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे और मुझे कॉम बॉक्स में ज्वाइन किया है अहमर नजीब सत्ती ने। वेलकम अहमर। बहुत शुक्रिया आपका के आसिफ, और एक खूबसूरत सुबह, एक ऐसी सुबह जो क्रिकेट का मैच हो और फिर हल्की हल्की धूप हो और वो भी सर्दियों की, तो मेरा ख्याल है कि वो जो है वो और मज़े को दोबाला कर देती है। लेकिन एक अच्छा आगाज़ सदर्न पंजाब की जानिब से, 3 अहम विकेटें अब तक वो हासिल करने में कामयाब रहे हैं। और इस वक्त शाउट ज़रूर हुई, लेकिन ऐसा लगता है कि लेग स्टंप से बाहर पिच हुआ। जी बिल्कुल, लेग स्टंप से बाहर पिच हुआ। देखिए कि थोड़ा फवाद आलम बैकफुट पे गए, लेकिन बॉल जो पड़ के थोड़ा अंदर आया, उसकी लाइन को नहीं कवर कर पाए। अब तक काफ़ी मूवमेंट, ये रवायती रावलपिंडी की जो विकेट है, पिच है, इसका ये खासा रहा है कि स्पेशली पहले सेशन में ये फास्ट बॉलर्स को काफ़ी मदद देती है। और बहुत अच्छी गेंद, इस दफ़ा इसको खेल दिया है स्क्वायर लेग की जानिब, पहला रन तेज़ी से हासिल किया और इमरान ने इसको कट ऑफ किया, 2 रन मिले। समीन गुल इस मैच में नहीं खेल रहे अहमर, 3 मैचेस में 14 विकेट्स लिए हैं। सदाकत को चांस दिया है, सेकंड 11 में खेल रहे थे, उनको प्रमोट करके फर्स्ट 11 में लाए हैं सदर्न पंजाब। ये खूबसूरती भी है इस कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी की कि साथ ही एसोसिएशंस का ये टूर्नामेंट भी चल रहा है, ग्रेड 2 जिसको कहते हैं। वहाँ पे जो भी परफॉर्मर है उसको इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता है कि आप फ़ौरन से आपको अपनी फर्स्ट 11 में आपकी प्रमोशन हो जाती है, जिस तरह अभी सदाकत की हुई है। एक दफ़ा फिर इसको जेंटल पुश किया और तेज़ी से 1 रन लिया मिड विकेट की जानिब। खुर्रम मंजूर स्ट्रगल कर रहे थे अर्ली ऑन और अच्छी फॉर्म में थे, लेकिन अब्बास और हसन दोनों ही के अगेंस्ट स्ट्रगल किया और जल्दी पवेलियन लौट गए। जी, दोनों टेस्ट क्रिकेटर हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड भी हैं, इस वजह से इतना मुश्किल होता है कि जब थोड़ी सी कंड्यूसिव अगर आपको कंडीशंस मिल जाएं फास्ट बॉलर्स को, तो उसका वो फ़ायदा उठाना जानते हैं। दोनों एक्सपीरियंस्ड हैं, बड़ी अच्छी जगहों पे गेंद की, इसी वजह ही एक आपको नज़र आता है कि 3 इंपॉर्टेंट विकेटें जो हैं वो अभी हासिल की। एक बोनस पॉइंट जो बॉलिंग पॉइंट है वो बॉलिंग साइड ने हासिल किया। इस दफ़ा इसको दिलकश अंदाज में खेल दिया एक्स्ट्रा कवर की जानिब। सऊद शकील की शानदार बैटिंग, ओवर पिच डिलीवरी थी, इसका भरपूर फायदा उठाया, 4 रन। बहुत अच्छा स्ट्रोक था इस मौके के ऊपर सऊद शकील का, और यही वजह है कि आप एक बड़े बेहतरीन स्ट्रोक मेकर हैं और अपनी इसी क्रिकेट की वजह से जाने। देखिए किस तरह से खड़े खड़े खेले, लेकिन जो है वो करस किया, बॉल की लाइन में आए और खूबसूरत स्क्वायर ड्राइव सऊद शकील की वजह से। हालांकि कदमों का इस्तेमाल इस मरतबा नहीं किया था, लेकिन चूंकि अब शायद उतनी मूवमेंट नहीं रही है जिस तरह इब्तदा के ओवर्स में थी, तो शायद अफोर्ड कर पाए इस तरह से शॉट खेलने को। और अहमद, जैसे ही आपने बात की कि सऊद शकील फॉरवर्ड नहीं आए, कदमों का इस्तेमाल नहीं किया, इस दफ़ा हमें देखने को मिला और इस डॉट डिलीवरी के साथ ओवर का इख्तिताम हुआ। सिंध 40 पर 3।
बॉलिंग में तब्दीली हुई है। हसन अली एक दफ़ा फिर खुद अटैक के लिए आए हैं। अच्छी राइजिंग डिलीवरी, अच्छा हार्ड लेंथ पे पिच किया था हसन अली ने और थोड़ा सा पड़ने के बाद गेंद ऊंचा आया और फवाद आलम को भी आखिरी मोमेंट पे अपनी जो रिस्ट को एडजस्ट करना पड़ा इस गेंद को खेलने के लिए। देखिए बैकफुट पे पहले से थे लेकिन थोड़ा सा ऑकवर्ड हुए इस एक्स्ट्रा बाउंस की वजह से, और यही खासा है। मैं रावलपिंडी की हम पिच की बात करते हैं कि ये कुछ देर के बाद कुछ गैर रवायती एक मूवमेंट हमें दिखाती है। कभी सीम हो जाता है और फिर कभी एक्स्ट्रा बाउंस हो जाता है। ओ बहुत ही अच्छी गेंद स्लिप्स में। सलमान अली आगा और जैन ने जरूर अपील की थी लेकिन यहां पर ये ओवर थ्रो के 4 रन मिल गए। और ये जो गलतियां होती हैं फील्डिंग साइड की जानिब से, बैटर्स को कॉन्फिडेंस मिल जाता है। देखिए बॉलर ने कितना अच्छा गेंद किया था। थोड़ा लेग स्टंप के बाहर पिच हुआ, सीम हुआ थोड़ा सा बॉल, लेकिन थ्रो थोड़ा सा कैजुअल था और बैकअप करने वाले जो फील्डर थे वो उस प्रॉपर बॉल के ऊपर आ नहीं पाए, जिसकी वजह से ये 4 कीमती रन्स, फाजिल रन्स मिल गए हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट, बड़े मैटर करते हैं क्योंकि आपको बड़ा हेल्प आउट करते हैं। एज अ साइड इस मरतबा सऊद शकील लाइन में आए बॉल की और लाइन में आते हुए इसे दिफाई अंदाज से खेला है। बड़ा इंटरेस्टिंग पैसेज ऑफ प्ले है। डेफिनेटली सिंध की टीम इस वक्त चाहेगी कि वो एक पार्टनरशिप बिल्ड करे। 2 बड़े इंपॉर्टेंट, बड़े सीनियर बैट्समैन सऊद शकील और फवाद आलम मिडल में हैं और सदर्न पंजाब की हत्तुल इम्कान कोशिश होगी कि समहाउ खाने के वक्फे से पहले वो एक और कम अज़ कम इनमें से एक दरार डालें इस पार्टनरशिप के अंदर। हसन और अब यहां पर देखा है कि रन्स आसानी से मिलना शुरू हो गए हैं इस ओवर में। अब तक 7 रन्स बने और 5 रन्स जो हैं वो 4 रन्स एक्स्ट्रा के थे और 2 रन्स अब 6 रन्स बने। आई बेग यू पार्डन। जो आप बात कर रहे हैं सऊद शकील जिस तरह से लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट इनका रोल रहा है थ्रू आउट सिंध के लिए, हमने देखा कि बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। अपने पिछले मैच में नहीं थे, रेस्ट किया और उसकी कमी भी महसूस हुई। 2 के साथ खान ने एक ज़बरदस्त सेंचुरी स्कोर कर ली थी। हसन अली की जो लाइन है वो बड़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिल रही है इस ओवर में। ये मिडिल एंड लेग के ऊपर टारगेट कर रहे हैं। शायद ये कोशिश कर रहे हैं कि इनको यहाँ से मूवमेंट अवे मिले और वो बाएं हाथ के जो बैट्समैन हैं इनकी स्लिप लगवाएं, क्योंकि 3 स्लिप्स और एक गली इंतज़ार कर रही है किसी भी बाहरी किनारे का। अब ये देखना पड़ेगा कि कितनी मुस्तकिल मिजाजी से यहाँ पे। अच्छा गेंद था। ये बात थोड़ा इस पर पड़ने के बाद हल्का सा अंदर की तरफ आया और आखिरी मोमेंट पे फवाद आलम ने अपनी जो कलाइयों को क्लोज करते हुए इसको मैनेज किया, लेकिन एक अच्छा गेंद था। 15 ओवर्स का खेल हो चुका है अब तक और सिंध ने 47 रन बनाए हैं 3 विकेट के नुकसान पर। जी इलियास को बॉलिंग के लिए लेकर आए हैं। 26 मैचेस खेल रखे हैं फर्स्ट क्लास में और 5 दफ़ा 4 विकेट्स हासिल किए हैं। और इस क्वाइद-ए-आज़म ट्रॉफी 2022-23 की बात की जाए तो 4 मैचेस में अब तक अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया है और 12 विकेट्स लिए हैं इस सीज़न में अब तक इलियास ने। बड़े अच्छे, बड़ी मेहनती बॉलर है, जिसको हम एक कहते हैं वर्क हॉर्स। इस टाइप के बॉलर हैं, बहुत जान मारते हैं थ्रू आउट, चाहे वो पहला ओवर कर रहे हो अपने स्पेल का या डे एंड के ऊपर वो बात कर रहे हो, बॉल करने के लिए आए। तो ये इनकी खासा है इलियास का कि एफर्ट बहुत पुट इन करते हैं। स्किडी बॉलर हैं, हाइट ज़्यादा नहीं है लेकिन स्किड बहुत अच्छा कराती है। देखिए हम अब स्लिप्स जो है 3 स्लिप हमें नज़र आ रही हैं, काफ़ी क्लोज खड़ी हैं
विकेट कीपर के साथ। और जो मिडिल एंड जो लेग की जो लाइन है वो एक बाहरी किनारे के इंतजार में। डाउन द लेग साइड और इस दो खेल दिया फाइन लेग की जानिब। इस दफा वेवर्ड हुए, लाइन मिस कर गए, उसका भरपूर फायदा उठाया फवाद आलम ने। 4 रन्स। काइंड ऑफ अ लूजनर आप कहेंगे इसको कि शायद अभी इतनी वार्म अप नहीं थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ख़राब गेंद था लेग स्टंप के बाहर। आई थिंक फवाद आलम जैसे बैट्समैन को सेकंड इनविटेशन नहीं चाहिए होती ऐसे शॉट को खेल देने के लिए, बाउंड्री के लिए। सिर्फ अपने जो रोल किया रिस्ट को उस फाइन लेग की तरफ 4 रन हासिल किए। सो देखना पड़ेगा कि इलियास कितनी देर में अपना वो राइट रिदम वो सही जगह फाइंड करते हैं। अभी हमने देखा है कि ज़्यादातर जो गेंदें पिछले 1-2 ओवर में वो मिडल एंड लेग पर टारगेट की जा रही हैं। बहुत जोरदार अपील, लेकिन ऐसा लगता है कि लेग साइड से बाहर पिच हुई थी। देखना होगा, अपील बहुत जोरदार थी। तमाम ही फील्डर्स और बॉलर बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे थे। अच्छी अपील थी, लेकिन अगर इसको हम देखें तो ये जो पिच हुआ बिल्कुल लेग स्टंप के बाहर अपेरेंटली नज़र आ रहा है। और थोड़ा सा मूवमेंट भी अंदर की तरफ आया, फवाद आलम नहीं कवर कर पाए इस मरतबा। लेकिन यह कि वो जानते थे कि ये संजीदा मामला नहीं है, इसलिए फ़ौरन से अपने साथी खिलाड़ी सऊद शकील को कहा कि आप सिंगल के लिए आ जाइए। एक अच्छा मुकाबला में गेंद और बैट के दरमियान देखने को मिल रहा है इस वक्त। ओ बहुत ही शानदार गेंद इस दफा इलियास की। अच्छा कमबैक किया इलियास ने। सऊद स्टेप फॉरवर्ड किया था और आउटसाइड द ऑफ स्टंप डिलीवरी। ये वो लाइन और लेंथ है जो टारगेट करने की ज़रूरत है। देखिए बिल्कुल ऑफ स्टंप, मिडिल एंड ऑफ स्टंप पे पिच हुई है और पड़ के बाद थोड़ी शेप अपनी हेल्ड की, अंदर की तरफ आई, जिसको बहुत अच्छा लीव किया सऊद शकील ने। बॉलर के साथ बैट्समैन की तारीफ ही बनती है कि उन्होंने बहुत अच्छा जज किया इस गेंद को। और ये लाइन है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा हिट, अभी भी मैं समझता हूँ थोड़ा सा पीछे है इनकी लेंथ, लेकिन ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर एक्शन रिप्ले काइंड ऑफ हुआ इस मरतबा, उस लेंथ को हिट किया, लेकिन सऊद शकील ने बिल्कुल करीब से परखा और जाने दिया गेंद को। तो ओवरऑल दोनों अतराफ से अच्छी क्रिकेट देखने को मिल रही है। सऊद जो हैं वो बहुत ही बारीक बीनी से परख रहे हैं लेंथ को, और जो इलियास हैं उन्होंने ये पिछली जो 2 गेंदें की हैं वो बड़े बिजनेस एरिया में की हैं। जहां सऊद शकील का क्रीज पर रहना सिंध के लिए बहुत जरूरी, बहुत ही शानदार फॉर्म में है। और एक और बहुत अच्छी गेंद इस डॉट डिलीवरी के साथ इलियास का एक अच्छा ओवर यहां पर खत्म हुआ। 16 ओवर के इख्तिताम पर 52 पर 3। हसन अली मीडिया सेंटर एंड से अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे। राउंड द स्टैम्प्स फवाद आलम को आने का फैसला किया। फवाद आलम ने इसको शॉर्ट मिड विकेट पर हल्के हाथ से खेला, 1 रन हासिल किया। फवाद आलम अहमद हमने देखा है कि इन स्विंगिंग डिलीवरीज पर काफ़ी स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं। पिछले मैच में जो कि अगेंस्ट सेंट्रल पंजाब था, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की थी फवाद आलम ने और क्विक बैटिंग की। बट आई थिंक इसके ऊपर इनको अब काम करना है क्योंकि काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। जी आपने बिल्कुल अच्छी निशानदेही की है, क्योंकि थोड़ा सा इनको रिस्ट रोल करने में इशू होता है। रिस्ट रोल करने में थोड़ा वक्त लग जाता है इनको, और बहुत इम्पॉर्टेंट ये मार्का होगा। इस बार आगे पड़ा था गेंद और इसे जाने दिया। साउथ का स्टांस बड़ा एक इंटरेस्टिंग है। कई प्लेयर होते हैं वो बॉल पड़ता है तो एक कदम थोड़ा सा फॉरवर्ड आ जाते हैं, अपने तवाज़ुन को आगे की तरफ ले आते हैं, लेकिन सऊद शकील बिल्कुल स्टैटिक रहते हैं, पोज अपना होल्ड करते हैं, और फिर बॉल अगर उनकी दस्तरस में हो उनके तो फिर वो उस पर शॉट को अटेम्प्ट करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टांस है साउथ के खेलने का, और इसमें वो काफ़ी कामयाब भी रहे हैं। सऊद शकील जिस तरह से इनकी बैटिंग फॉर्म चल रही है और राइट बिफोर
इंग्लैंड सीरीज़, इंग्लैंड ने पाकिस्तान का दौरा करना है। ये बैटिंग फॉर्म और ये जो रन्स हैं बहुत काउंट करेंगे और डेफिनेटली सेलेक्टर्स की तरफ की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराई है सऊद शकील ने। एक अहम नुक्ता ये भी है कि सऊद शकील क्योंकि सिंध पिंडी में, रावलपिंडी में सारे अपने मैचेस खेल रही है और पहला मैच रावलपिंडी में होना है, तो शायद हो सकता है कि इनके नसीब में कुर्रा फाल निकल आए इनके टेस्ट डेब्यू का। और इस दफ़ा राउंड द स्टंप्स आए हसन अली, अच्छी गेंद थी, हल्का सा बाउंस हुई, अच्छा गेंद था ये अच्छी लाइन पकड़ी है, राउंड द विकेट आ चुके। इस एंगल से बैट्समैन छोड़ कम सकता है, उसको खेलना पड़ेगा ज़्यादातर गेंदों को, और थोड़ा सा मूवमेंट मिली, थोड़ा बाउंस मिला। सऊद शकील को थोड़ी सी गालबन हल्की सी बॉल लगी भी है। सो ये एक्सपीरियंस है हसन अली का, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी खेले हुए हैं, तजुर्बा रखते हैं, तो अपना वो सारा एक्सपीरियंस जो वो बरूकार लाएंगे। जो पहले घंटे का खेल था हमने देखा उसमें दोनों ही फास्ट बॉलर्स हसन और अब्बास कामयाब रहे, शानदार बॉलिंग की, दोनों ही जानिब स्विंग देखने को मिली। सो अब इन दोनों बैटर्स की कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो गुजारा जाए क्रीज़ पर, और जितनी लंबी बैटिंग करेंगे दोनों बैटर्स के लिए आसानी होती जाएगी और फिर मुश्किलात बढ़ती जाएंगी सेंट्रल पंजाब के लिए। अच्छा गेंद था, जस्ट आउटसाइड ऑफ स्टंप खिलाने की कोशिश की। इंतज़ार कर रहे थे हसन अली के कोई मूवमेंट मिले, और जो 3 स्लिप्स इंतज़ार कर रही हैं बाहरी किनारे का। जो खेल आगे की तरफ बढ़ेगा मज़ीद जो है वो खेल इजी होता जाएगा, लेकिन 53 स्कोर 17 ओवर का खेल मुकम्मल 3 विकेटों के नुकसान पे। इलियास के पहले ओवर में अच्छी हैपनिंग हुई थी, अच्छा ओवर किया था इलियास ने, और एक दफा फिर अंदर आती हुई गेंद और एलबीडब्ल्यू की अपील। इस दफा अंपायर तारिक रशीद बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। ये अंदर आता हुआ गेंद, फवाद आलम अगेन वही के अंदर आते हुए गेंद पे उनकी रिस्ट जो है वो ठीक से रोल नहीं हो पाती, और इस वजह से इनको प्रॉब्लम होती है अंदर आते हुए गेंद पे। अच्छा गेंद था, और अगेन मैं यही नुक्ता रखूंगा कि ये जो एंगल है ज़्यादा प्रोडक्टिव है कि आप राउंड द विकेट आ रहे हैं एज अ राइट हैंड बैट्समैन, तो इस एंगल से बैट्समैन को ज़्यादातर खेलना पड़ता है, वो छोड़ने का ऑप्शन जो है उसके पास कम रह जाता है। अच्छी कॉल, इस दफा हसन अली यहाँ पर मौजूद थे विद इन द सर्कल, रनिंग बिटवीन द विकेट्स सिंध ने बड़ी अच्छी की है और रन्स शार्प सिंगल्स लेते हैं। जो बात आप फवाद आलम की कर रहे हैं, फवाद आलम भी हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी स्ट्रगल किया, रन्स नहीं कर पाए, बट इस क्वाइड-ए-आज़म ट्रॉफी में अब तक एक सेंचुरी स्कोर की है अगेंस्ट सेंट्रल पंजाब। पिछले मैच में अच्छी बैटिंग की थी, तेज़ बैटिंग की थी, 2 के अपनी सेंचुरी मुकम्मल नहीं कर पाए। इनके पास भी अच्छा मौका है, लंबी इनिंग्स खेलें। बड़े सीजन प्लेयर हैं फवाद आलम, आप इस तरह के बैट्समैन को, आपके पास चांस होता है कि अर्ली ऑन जितने जल्दी इनको आउट कर लें तो आपके पास एक चांस रहता है, लेकिन जो ही इस तरह का प्लेयर जब थोड़ा ज़्यादा लंबा वक्त ले लेता है, सेटल डाउन हो जाता है, तो फिर उतना मुश्किल हो जाता है ऐसे विकेट को हासिल करना। आपको फिर विकेट बाय करनी पड़ती है, ये इतनी आसानी से आपको विकेट देंगे नहीं। सो ये एक अभी जितनी भी गलतियाँ करवा सकते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम सदर्न पंजाब को आगे जाके हो सकता है कि इनके पास बहुत कोई एक्सप्रेस बॉलर नहीं है। जब थोड़ा ज़्यादा पिच फ्लैट हो जाएगा आगे जाके, जब दिन चलेंगे आगे की तरफ, और एक दफा फिर लाउड कॉल, नो, हसन अली वहां पर मौजूद थे। वही उसी जोन को हिट कर रहे हैं फवाद आलम के, कि जहां पर उनको अपनी बॉल की लाइन में आके अपने रिस्ट को क्लोज करना पड़ता है, जिसपे वो शायद इतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं दिखाई देते, लेकिन अगेन अपने करियर में इतना तजुर्बा रखते हैं,
कई बार ऐसी सूरत हाल से वो गुजरे होंगे, सो ही नोज़ के कैसे सरवाइव करना इस तरह के सेशन। जफा इसको खेला है फाइन लेग की जानिब और एक रन बना। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं अहमद, और लेकिन अब ये जो पार्टनरशिप है ये क्रूशियल है। पहली विकेट गिरी थी 13 पर और फिर तीसरी विकेट जो गिरी वो 24 रन पर। अब तक दोनों बैटर्स जो हैं सऊद और फवाद संभल रहे हैं और संभल कर खेल रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, अगर फवाद से गलती ना करवाई गई और ये कहीं 40-50 रन बना लिए तो फिर मुश्किल हो जाएगा इनको आउट करना। इलियास के दूसरा ओवर खत्म हुआ। 18 ओवर्स के इख्तिताम पर 54 पर 3। क्या करवाया आपने? अभी आप खुद कह रहे हैं। बहुत लाउडली नो कॉल कर रहे हैं और ये कॉन्फिडेंस बूस्टर भी होता है बैटर के लिए कि जब वो पिच पर जाएं और आप देखें कि बॉलर्स भी अटैक कर रहे हैं, सो बैटर्स ऐसा करते हैं, लाउड कॉल करते हैं यस या नो, इससे इत्मीनान में इजाफा होता है। जी, और उसमें ये भी बताता है कि बैट्समैन जो है वो बिल्कुल हाजिर दिमाग है इस वक्त, उन जागे हुए दिमाग के साथ खेल रहे हैं, उनको पता है वो खोए हुए नहीं है इस सिचुएशन के अंदर, सो इट्स अ गुड साइन। आउटसाइड द ऑफ स्टंप लाइन को मेंटेन रखना है हसन अली को, और जिस तरह से अब तक बॉलिंग की है हसन अली की, अर्ली ऑन जो बॉल में स्विंग देखने को मिल रहा था, ख़ास तौर पे जो खुरम मंजूर की विकेट हासिल की, बहुत ही शानदार बॉलिंग की, डिसीव किया। कुछ देर बाद ये बॉडी पे टारगेट कर रहे हैं फवाद आलम को। अगर आपने इनको बॉडी पे टारगेट करना ही है तो फिर इससे बेहतर है कि आप एक ऑन साइड पे क्लोज इन फील्डर ले लें, ताकि अगर उनसे थोड़ा मिस टाइम हो जाए, अगर ये ले लें तो मिस टाइम हो जाए तो वहां पर उनको एक विकेट का चांस रहेगा। बहुत ही शानदार गेंद, बहुत क्लोज रही स्टंप से, लकी रहे फवाद आलम इस दफा, लाजवाब। देखिए क्या अच्छा गेंद था, पड़ने के बाद लास्ट मोमेंट पे थोड़ा सीधा हुआ, और आई थिंक अनप्लेएबल बॉल, कोई भी बैट्समैन होता इस गेंद के ऊपर वो स्ट्रगल करता। ब्यूटी, बहुत ही खूबसूरत बॉल हसन अली का, और मैं जिस तरह वो उसी नुक्ते पे बात कर रहा था कि इस एंगल से ज़्यादातर गेंदों के ऊपर बैट्समैन को खेलना पड़ेगा, और जो बॉल मिस बिहेव करेगा उसमें चांस रहेगा कहीं ना कहीं बैट्समैन को डिस्टर्ब करने का। बिल्कुल एक दफा फिर तेज रन लिया, फील्डर भागकर जरूर आए थे, और सदाकत आई थिंक फील्डर है वहां पर, और ये रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। देखिए ये यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस काम आता है कि जहाँ पर थोड़ी सी अभी भी मूवमेंट नज़र आ रही है हमें फास्ट बॉलर्स के लिए, तो वहाँ पर आपको पता है कि एक सिंगल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वो रन्स को बाय कर रहे हैं ताकि जितनी देर भी वो पिच पर रुकें, स्कोर बोर्ड जो है वो मूव ऑन करता रहे, ताकि जब आप इवन 4 डे में भी एक जगह स्टक कर जाते हैं, रुक जाते हैं, तो वो फिर आप ना अपना फ़ायदा कर रहे होते हैं ना अपनी टीम का फ़ायदा कर रहे होते हैं। तो यहीं पर एक्सपीरियंस काम आता है फवाद आलम का कि बड़ी खूबसूरती से रोटेट कर रहे हैं। और एक दफा फिर खेलते ही गैप में खेला इसको यहां पर, और बहुत ही शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट, एक दफा फिर 2 रन हासिल किए। ये जो क्लोज सिंगल्स हैं, और इससे यकीनी तौर पर प्रेशर जो है वो फील्डिंग साइड पर आता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, थोड़ा सा ओपन चेस्टेड स्टांस है साउथ शकील का, हल्का सा क्रैश किया था, 2 रन हासिल किए, और ये बहुत अच्छी अवेयरनेस दिखा रहे हैं दोनों सिंध के बैट्समैन। साउथ शकील अब क्रीज से बाहर खड़े हो रहे हैं ताकि किसी भी किस्म की मूवमेंट को किल किया जा सके। डाउन द लेग साइड, और यहाँ पर 1 रन और मिल जाएगा। आजम खान इसको कलेक्ट नहीं कर पाए थे। सिंध के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा ओवर, रन्स मिले इस ओवर में,
और 58 पर 3। इलियास फार एंड से अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे। अब तक 2 ओवर्स के हैं। अच्छी बॉलिंग इलियास ने की थी पिछले ओवर में भी। एक दफा फिर अच्छी गेंद पड़ने के बाद गेंद अंदर आई। इस पर साउथ शकील ने तो एक 2 कदम चल कर लेकिन थोड़ा बॉल बाहर था, इसलिए उन्होंने उसे बिल्कुल जो है खातिर में नहीं लाया। स्लाइड सा आउटसाइड ऑफ स्टंप ये बॉल था। इंटरेस्टिंग जो है वो चले ज़रूर, लेकिन काफ़ी स्टैटिक अपनी जगह पे खड़े खड़े खेलते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग स्टांस है। सो इनके इस स्टांस को कितने देर में चैलेंज करेंगे इलियास, ये भी देखने के लायक होगी बात। और अब तक अभी ड्राइविंग लेंथ पे हमने बॉल कम देखे हैं पिछले कुछ ओवर्स में। जी हाँ, जिस तरह भी आपने की कि ड्राइविंग लेंथ पर बॉल ज़्यादा नहीं देखे। एक दफ़ा फिर हसन अली बहुत एक्टिव फील्ड में। ये गेंद एक दफ़ा फिर हल्का सा लेग साइड पर था, इसको आराम से खेला बैटर ने। जब भी आप बैटर को चेज करवाने के लिए जाएंगे, जो आप बात कर रहे थे पहले कि फोर्थ स्टंप या आप थोड़ा सा आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, वहाँ से फिर एज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मेरा ख्याल है कि जब आपने 3 स्लिप्स लेके रखी हुई हैं तो इसमें यह है कि थोड़ा सा बड़े दिल के साथ बाउंड्री भी लग सकती है, लेकिन यह है कि आप लालच में लेकर आएँ, कोशिश करें फोर्स करें बैट्समैन को कि वो ड्राइव करें थोड़ा सा बैक ऑफ द लेंथ। ज़्यादा अभी हमने रिसेंटली देखी है दोनों बॉलर्स की तरफ से। सो देखते हैं कि कितनी कारगर रहती है ये लेंथ। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं अहवर। और एक चीज़ यहाँ पर कि बॉलर्स इस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं, हसन अली भी इलियास भी, कि फवाद आलम को राउंड द स्टंप्स टारगेट किया जाए और उनकी विकेट हासिल की जाए। क्योंकि पीछे की लेंथ पे हमने देखा है कि प्लेन मिसेस हो रहे हैं, यानी अब थोड़ी लेंथ पीछे होती है तो शायद कुछ कनेक्ट हो जाए। कुछ बैट्समैन लीव कर रहे हैं ज़्यादातर गेंद, उतना खेल नहीं रहे जितना उनको खेलना चाहिए। और रेड बॉल क्रिकेट में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बैट्समैन को आप खिलाएं। और यहां पर देखना होगा इनसाइड एज की, ऐसा लगा था कि इनसाइड एज हुआ है और एक जोरदार अपील। तमाम ही फील्डर्स बहुत कॉन्फिडेंट थे, लेकिन अंपायर तारिक रशीद की तरफ से कोई मूवमेंट नहीं। शानदार गेंद थी ये। आप देखिए कि थोड़ी सी लेंथ को आगे किया, पहले थोड़ी बैक ऑफ द लेंथ थी, थोड़ी सी लेंथ को आगे किया, बॉल पड़ने के बाद अंदर की तरफ आया। देखिए ये सारा कमाल लेंथ का और फिर मूवमेंट का। देखिए आगे बैट्समैन फॉरवर्ड गए लेकिन बिल्कुल बैलेंस आउट हो गया फवाद आलम का। और बहुत अच्छा टेक यहाँ पर आजम खान का, उन्होंने उसको सफाई से लिया। काफ़ी क्लोज कॉल थी लेकिन फवाद आलम अपने आप को लकी कंसीडर इन अ सेंस करेंगे कि इतना अच्छा गेंद सर्वाइव कर गए। जी हाँ, स्टंप्स के भी बहुत क्लोज रहा। और एक दफ़ा फिर इसको हम देखेंगे ज़रूर। बहुत ही शानदार गेंद थी इलियास की, और गिरने के बाद जिस तरह से तेज़ी से अंदर आई फवाद आलम, उस गेंद के ऊपर आप देखें एक दफ़ा फिर जो है वो काफ़ी आगे होकर खेले और लकी रहे। देखिए ये कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी में गेंद गिरा था। फवाद आलम जिसको हम कहते हैं लटक गए, बिल्कुल बैलेंस आउट हो गया था उनका और बिल्कुल इस पोजीशन में नहीं थे कि इस मूवमेंट को वो कवर करते। और उसके बाद देखिए अब अगली गेंद भी उन्होंने आगे लेंथ पर की थी। तो पिचिंग अप स्पेशली पहले सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर फाइनल की जानिब खेला, सदाकत वहां पर मौजूद है और यहाँ पर रन आउट की अपील हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कि फवाद आलम कंफर्टेबली अपना दूसरा रन भी कंप्लीट कर लिया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। 61 पर 3।
Worked it towards onside as Saud and Fawad. They are making their partnership at 37 runs in 56 and now it's 38 in 56 deliveries. So the batting is some sort of on a good route now, because earlier on 3 wickets really let them down, but here Hassan, he has got 1 wicket. Well, this is the first day, first innings for Sindh, and they're batting here in the Rawalpindi Stadium. This is round 7 of Quaid-e-Azam Trophy. Oh, that's a brilliant ball. Hassan Ali has been bowling some pretty fiery balls out here today, and that was just another example. Yeah, beautiful. And look at the bounce height, which has saved him here. Otherwise, top of the stumps will surely bowl hitting that place. But look at how good this surface is. Absolutely. We've seen fast bowlers getting a lot of help from this surface this morning. Hassan has been exceptional. So has been Ilyas, Sadakat and Mohammad Abbas. Gently played towards onside. And at this stage, I think that it's almost 30 more minutes. 20 more minutes lunch. Both of these two batters, they must be looking to get like this with a straight bat in that batter. Because lots of time we did see that batters, they were losing some sort of concentration by overdoing the work and may lose a wicket. Well, it hasn't certainly been easy for them this morning. That's another good ball from Hassan. We have seen a bit of a lack of confidence in the batsmen this morning as well. They haven't really gone after the ball. Never tried to break those shackles that were put on by Southern Punjab early this morning with, quick wickets. It was Khurram Manzoor, Umair bin Yusuf and then Saad Khan, who were sent back to pavilion pretty early this morning. But this partnership looks solid at this point. That is something there, the noise, and Hassan Ali is all looking towards umpire. Some pretty big shouts we have seen up until this point, and that was just another one. There was a huge noise, whether it was bat hitting the pitch hard or was it the ball. I don't think the bat had hit the pitch hard. So what was that noise? That ball hitting the flap. I think that's why he was pretty serious in shouting that. Grabbing a wicket, but well done. Excellent decision by umpire. Clearly hitting onto the top of the flap. Again, good pace. In right good area. Hassan Ali bowled really a superb over. 21 gone, 63 for 3. Well, it certainly hasn't been easy, but we finally get a partnership here for Sindh. It was Khurram Manzoor, Umair bin Yusuf and Saad Khan, who were sent back to the pavilion early this morning. None of those batsmen reached the double digits, but it's the captain, Saud Shakil, and the most experienced batsman, Fawad Alam, standing up for Sindh. Fawad Alam has scored 26 from 32 deliveries. Well, certainly been a very good bowling performance this morning. We have seen all of them pacers. It was Mohammad Ilyas. Well, all of them pacers, and all of them have done a pretty good job of keeping Southern Punjab's hold over this game. It was early on, it was Mohammad Abbas who sent 2 batsmen back to the pavilion. Hassan Ali has bowled brilliantly. He went off the field for a little while, but he's back and he's looking very, very good. Mohammad Sadakat and Mohammad Ilyas, both good additions to the Southern Punjab team, and they have looked mighty well today as well. Yes, it's the call, and rightly do so. I think it was a slight bit of more fuller, as Ilyas is just mixing up his deliveries. Sometimes he's getting back of length,
And now some sort of fuller, and he's keeping the batter busy. That what is the next option which has been about to bowl to him. And it's good when you're not predictable to the batter. Oh, we should definitely talk about the captaincy today from Hassan as well. He has kept on the 3 slips continuously for all the pacers there. And that's a beautiful shot. Opened up his arms, played it toward the square leg. And that's a beautiful, beautiful boundary from Saud Shakil. Breaking the shackles there from the Southern Punjab bowlers. Yeah, it's a good shot. And shown some confidence here, Ilyas. And look at that, upishly played. Ball was up there for quite a bit of time, but you're just managing it into the gap. That's good. 4 runs, deep back foot. Well, that's really a good area. If you have been pitching such kind of delivery to Saud and Shakil, to Fawad, that they need to be in the stumps. Yes, a good comeback after that boundary from Ilyas. He knew exactly where to pitch that one. It really helps when your captain is a fast bowler as well. You get a lot of help. You get a lot of tips from your captain on how to bowl and where to bowl. Wanted to play it towards the offside. Saud, a very stylish shot that was. Didn't bring up any runs though. But slight bit of a way, though, that he's practicing that shot into the cover region, and I think so that in the previous occasion his footwork was not good enough, though that he has middled that ball, wasn't been able to pick up the gap, but he's looking towards covers or playing the ball on merit. That's better, because 3 slip cordons, they are waiting for such kind of activity if the batter is edging that ball. Didn't look very comfortable early on Saud, but he looks in a good touch right now. Obviously the ball is not swinging the way that it was early this morning, but the Southern Punjab bowlers have still pitched the ball very correctly. They're not giving a lot of room. They're not over pitching the delivery. And that's just another example. Well, with this dot delivery, Fawad will be coming up in the next over. 69 for 3. Edgy towards offside. You know, I think so that though that Abbas has made Fawad Alam to come forward, but he's unlucky, hadn't got the edge. Well, Mohammad Abbas is picking up right where he left off with that beautiful delivery. He has bowled 2 maidens. He's gotten 2 very important wickets, and that economy is just brilliant today. Yeah, good channel, because we did see that Fawad might be hitting that ball officially, and there you see in the background the short extra fielder is there. He already got 2 wickets. Well, here we can see those 2 wickets. The first one, there was a brilliant catch by Zain in the slips, and then another one was another catch.
He has swung the ball brilliantly this morning. He's troubled the batsman a lot, and that is exactly what you want as the captain from your frontline bowler. Yeah, he's hitting the ball. Sometimes we did see that he's just hitting the deck and getting some pace bounce. And already this Rawalpindi surface has got the history that the bounce of the surface is good. Sometimes we did see today the ball whipped up, surprised the batters earlier on. But I think that still the conditions are normally good for the pace bowling. The most experienced batsman of Sindh is standing tall for his team, and this is some good captaincy from Hassan. He brought back Mohammad Abbas to take another wicket before the session ends, and we can see Abbas troubling Fawad a little bit. You wouldn't want Fawad to go long and, you know, playing a very he played a very handy innings in the last game, and you wouldn't want a repeat telecast of that, would you, as the captain of the opposing team? Yes, you're right. 83 versus Central Punjab at Rawalpindi in his second inning in the previous game. Still, he's having 127 against Central Punjab here at Rawalpindi. Towards onside. Sadakat having a good time. Southern Punjab have kept their fielding very tight. We've seen some very good saves at the boundary. The catches have been pretty accurate in the slip and at the gully point. So the fielders have given their 100% in the field. And that has got to boost up the confidence of the bowler as well. You know, that has got to build that trust within the bowler to experiment a little bit. And that's another one. And that is a brilliant, brilliant catch. We were just talking about the catching ability of the Southern Punjab, and we have seen a beauty here. And this is a big, big wicket of Fawad Alam. Look at them celebrating. Well, Hijab, your voice has been heard in the centre, and Fawad departing. Now he's practicing. I should be going more straight, but you were just on to the leg stump. Slight bit of forward, and Abbas made him to play that shot. And look at the beauty of just taken a wonderful catch. Another catcher. And Fawad departs here on 27 runs in 40 deliveries and saying 69 for 4. Saim Ayub, normally we did see him at the top of the batting card, but he's today in the centre with 250s in his credit, 7 games, young but talented. Well, a very exciting young talent, Saim Ayub. He has produced some good results for Sindh in the shorter format of the game. We have seen already. And usually he comes out as an opener, but today, because Sindh brought back Khurram Manzoor, the slot was already filled, and we are seeing Saim come in at number 6 today. Let's see how fruitful this batting order change in this position fulfills to be for Sindh. Played it hard, and a good fielding effort right there again from Southern Punjab. Sindh has struggled to rotate the strike a bit as well. They haven't been doing it as regularly as they should, because the boundaries are not coming that regularly. So you want to get those runs by running between the wicket. That has got to be the key. And that should be the message between the captain, Saud Shakil, and the young talent Saim, who is as athletic as they come.
Good delivery. Excellent ball, Ilyas. Well, his battery is really charged up here. And you're right, because that's why they are unable to rotate the strike, because the fielders, they are really on their toes. And look at the bowler. I spoken earlier that when bowlers, they've been supported by the fielders. Well, look at that beauty. He couldn't read that at all, could he? And that came in a lot. He's lucky that that didn't go on to the stumps. Saim has gotten a lifeline here. That was beautiful by Mohammad Ilyas. Well, he's asking the question, but bat involved. To me, we'll better have a look in a replay. Ilyas was really confident the way he has appealed there. Looking there. Good enough. Pitched. Some sort of height was there. I think so that saved him. Well, that's got to be the height. That's got to be the biggest factor here. But you're right, Ajaz, they're all charged up. Whether it's the wicketkeeper or the bowler or the captain, they're all looking mighty well today in the field. Yeah, that's better. Watchful, really watchful, because already you have lost for Quaid-e-Azam. So it's a good time, like Saim Ayub, who is among the runs. 250s in his credit in this Quaid-e-Azam Trophy season. And he's pretty solid. Really looks for more runs. And I think that's a good time for him. That to pay back about his selection, because 4 wickets down. And let's see that how he will be sustaining the pressure. We talk a lot about positions, Ijaz, in in the shorter format of the game. How do you think that affects the longer format as well? Because we usually see Saim opening the innings, but right now he's coming in at 6. Do you think that's going to create some kind of pressure? Well, you might be looking like it's 24 overs old ball. So when our opener is going there, he's just timing the ball. So at this stage, he needs to cater with experience of the bowlers like Abbas, Ilyas, Sadakat. I think so that there is not much movement, but still he's there in the center, and I think so should be more comfortable. I guess it's the pressure of the wickets, fallen wickets as well. You've lost your most experienced batsman right early on, courtesy of some brilliant bowling by Southern Punjab bowlers. And that's another one. The lengths have been pretty good from the Southern Punjab bowlers right now. It's the end of the 24th over, 70 for the loss of 4 wickets. Well left. And Abbas, who is really fiery here, tail up with 3 wickets. And look at the runs, only 17. This shows all of the experience. Shows you the class and the accuracy with which he has bowled today. Mohammad Abbas has been the front line bowler for Southern Punjab, and they look in a very good position. We had a small partnership between Saud Shakil and Quaid-e-Azam, but Mohammad Abbas was brought on in his previous over by the skipper, primarily to break that partnership, and they were successful in doing that. That's another one. Pitched up, and that there was a bit of a rise at the end as well. And we're seeing a lot of bounce on this pitch. Is that very regular for the Pindi pitch? Yes, this pitch has been known for this, having good bounce. We did see that couple of chances have been gone in favor of the batters because of the surface bounce. That batters, they have left it and a ball went up from the stumps. So this Pindi pitch showing a good bounce. The curator Sarfaraz done a good job. So that's why you can easily trust
onto the surface, bounce off the surface in fact, because normally we used to see that in first class game the batters, they've been going with a straight bat, but sometimes the cross, so they can trust on the surface that a bounce will be even. And so far in these 25 overs, 24.3 to be precise, we hadn't seen any sort of miscue. Absolutely. And what would the Sindh batsmen be looking right now is to build a partnership to salvage, you know, the flow of runs needs to just be there. And this session has been a difficult one for them, courtesy of Mohammad Abbas, who's taken 3 wickets for only 18 runs. Mighty impressive bowling performance here from Southern Punjab, led very well by Abbas. And also the skipper, Hassan Ali, his decision making, the energy in the field is quite high. Especially for a 4-day game, it's a very good sight to see here. Yeah, Rawalpindi, like before lunch session, it normally be enjoyed by the pacers, but after lunch, when like 3 p.m. might be 3:30, the tea session, that has been normally going in favor of the batters. They will surely enjoy batting here, but so far it's some sort of tough time, like from 10 to 12. And after that lunch break, we will surely be looking that ball will be more easier to bat here. Absolutely, and props to the Southern Punjab team and the skipper and their bowlers that they've taken full advantage of this first session today. They have gotten rid of 4 top order batsmen already. But the skipper is still standing there. He's still standing tall. He was rested in the previous game. He came back. Oh, that's a brilliant ball. That's a wonderful ball. And the finger goes up. Mohammad Abbas can do no wrong today, can he? Saim Ayub was beaten. And he goes for a duck. Well, what a bowler. And superbly bowled. The last ball before lunch. And we had seen a wicket here, falling at the very last ball of the over. There you go. So just in front, trying to stop it, and Azam Khan took a good catch. Saim Ayub was there. So Shakil, the captain, must not be happy here. What we've been looking on to the monitors. 71 for 5 in 25 overs. So is unbeaten there. He will surely some sort of worried captain. But his teammates on the other end, they were not been able to keep their wickets in hand, and they kept falling since 10 in the morning. But what a session for the bowlers. They really enjoyed bowling here. The conditions were really supportive for them, and they enjoyed. They really used that new ball properly, pitched into the right areas, and they exactly knew that what are the weaknesses of the batters of the Sindh. Well, we'll surely be looking on to the sides, what has happened here. Bowler session, in fact, Punjab. Absolutely, with half their side gone, Sindh looking a little bit in trouble here. It's all been about the Southern Punjab bowlers, Hassan Ali, Mohammad Abbas. As you can see, they've struggled a bit. There was a lot of swing early on, hitting the right lengths, and look at that. That is some amazing catches that's been taken by the Southern Punjab field, especially wicketkeeper and the slip position. They've been beaten brutally by the Southern Punjab bowlers. Yes, most of the time we did see that batters, they were not having a good time. The fielders, they supported their bowlers, either in catching, in ground field. That has been splendid efforts. But Fawad and South, they did resist some time in the centre, but not being able to keep the ball down. And the session closes on catching, and bowlers really enjoyed here. Batters were struggling. Only 2 big scores in 2 double figures. 23, Saud Shakil, who's not out, and 27 for Fawad Alam, the senior pro. 25 overs been bowled, 71 for 5. Well,
As you can see there, it's Mohammad Abbas who's been all over the Sindh batsmen this morning with the economy of just 2. He's able to grab 4 wickets, 4 important wickets that might just lead South Punjab to a victory. It's too soon to say, obviously. It's day 1 of the first session. But this has been a brilliant bowling performance. Hassan Ali grabbed 1 wicket early on. Mohammad Sadaqat and Ilyas are wicketless, but they're bowled pretty well as well. They have supported their skipper and Mohammad Abbas. Not a lot of flow of runs. They didn't allow that many runs to flow for the Sindh batsmen. And this looks like a very impressive bowling card right now. Well, players, they are taking lunch, and we will be seeing you in the next 40 minutes. Till then, it's a break time.
अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, एक दफ़ा फिर रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से खाने के वक्फे के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। सदर पंजाब और सिंध की टीमों के माबैन ये सातवां राउंड है और बैटिंग की बात की जाए सिंध की टीम कि कोई भी बैटर जो है वो खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखा सका। सऊद शकील इस वक्त 23 रन पर हैं और फवाद आलम ने थोड़ी सी मज़ाहमत ज़रूर की, 27 रन बनाए। इसके अलावा ये एक ऐसा बैटिंग कार्ड है जो सिंध की बेबसी की दास्तान बयां कर रहा है। जी बिल्कुल, और साथ में बॉलिंग कार्ड की तरफ अगर हम निगाह डालें तो मोहम्मद अब्बास सबसे ज़्यादा जो अगर हम देखें कि कारगर जो बॉलर रहे मोहम्मद अब्बास रहे। बड़ी अच्छी नपी तोली 4 विकेटें उन्होंने हासिल की, नपी तोली बॉलिंग का मुजाहरा किया। हसन अली को देखिए 7 ओवर में 17 रन के एवज 1 विकेट, जबकि अब तक सदाकत और इलियास कोई विकेट हासिल नहीं कर सके। लेकिन ओवरऑल बहुत प्रोडक्टिव पहला सेशन रहा जहां पर 5 विकेटें हासिल कर ली। आई थिंक इससे बेहतर आगाज़ की तवक्के जो है वो नहीं हो सकती थी। और लंच से पहले आखिरी गेंद पर जिस तरह साइम अयूब को की विकेट हासिल की अब्बास ने, अब बैटिंग के लिए सरफराज आ रहे थे, हमने देखा। दूसरी जानिब कप्तान सऊद शकील पर एक दफ़ा फिर भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि एक लंबी इनिंग्स खेलें, इस वक्त सिंध को मुश्किलात से निकालें। अहमद जी, एक सिंध के साबिक कप्तान सरफराज, बहुत कप्तानी की इन्होंने सिंध की, कराची की टीम की। और फिर दूसरी तरफ मौजूदा कप्तान सऊद शकील, काफ़ी वक्त से अब ये साथ में खेलते हैं, सऊद शकील और सरफराज अहमद। तो ये बहुत अहम जिम्मेदारी है कि इस मुश्किल वक्त में समहाउ इस वक्त को गुजारे। अच्छा आगाज़, बिल्कुल ऑफ स्टंप के पास से इस गेंद को कराया और जाने दिया आउटसाइड ऑफ स्टंप इस गेंद को सऊद शकील ने अपने रवायती अंदाज में, यानी बिल्कुल काफ़ी स्टैटिक स्टांस रहता है सऊद का, उसको जाने दिया। हसन अली एक विकेट हासिल की, अब तक अपना 8वां ओवर कर रहे हैं और जिस तरह से विकेट की दोनों जानिब गेंद को स्विंग किया, वो अभी भी हम देख सकते हैं कि सऊद शकील अभी भी इनको फॉरवर्ड आकर खेल रहे हैं और जो स्विंग है उससे काफ़ी डिस्टर्ब किया दोनों जानिब। अब्बास और इलियास ने फिर ज़बरदस्त बॉलिंग की और अब हसन अली। ये देखिए जो लास्ट डिसमिसल हुआ था इसमें थोड़ा सा ये मैं समझता हूँ कि बैट्समैन अपनी जगह पे खड़े रहे, लेकिन बॉल ने कमाल किया कि पढ़ने के बाद लास्ट मोमेंट में बाहर निकला। और ये रिवार्ड होता है कि कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी को बार बार हिट करना, जिसके अब्बास जो हैं वो मास्टर हैं। अहमद, लंच से पहले आप भी डिस्कस कर रहे थे कि बॉलर्स जितना बॉल को आगे डिलीवर करेंगे, बैटर की रीच में लाएंगे, बैटर को अप्रोच करेंगे कि वो इसको ड्राइव करने के लिए जाए, कामयाबी के चांसेस ज़्यादा होंगे बॉलर्स के लिए। जी बिल्कुल, आप ये देखिए कि जब हम ये बात कर रहे थे उसके थोड़ी देर बाद जिस तरह से फवाद आलम आउट हुए अब्बास की गेंद के ऊपर, वो एक आगे पड़ा हुआ गेंद था। फिर जो साइम अयूब के विकेट मिला उसमें भी वो उन्होंने एक प्ले करवाया, यानी कि उन्होंने उनको मजबूर किया कि वो खेलें। एक तो 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली पहले 2 सेशंस के अंदर, कि आप एक तो आगे थोड़ा पिच करें और दूसरा ये कि मेक श्योर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना बैट्समैन खेल सके, क्योंकि जब बैट्समैन खेलने जाएगा और वहीं से अगर बॉल थोड़ा सा मिसबिहेव करेगा तो कॉट बिहाइंड के, लेग बिफोर के जो डिसमिसल के जो हैं वो चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। और अब तक हमने देखा है कि जो विकेट टेकिंग बॉल्स हैं समहाउ वो थोड़ी उनकी लेंथ भी थोड़ी आगे थी और वो बैट्समैन को ये मिडल में पिच हुई ताकि बैट्समैन ने उनको खेला और फिर अपनी गलती जो है वो फिर बैट्समैन से करवाएगी। बहुत अच्छी लाइन और लेंथ हसन अली की राइट आफ्टर द लंच, पहला ओवर। और जिस तरह से आप ये बात कर रहे थे कि बैटर्स के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं, और आसिफ महमूद जो बिल्कुल तैयार बैठे हैं बैटिंग के लिए, उनके साथ उमैर बिन यूसुफ एक दफ़ा फिर निशाना बन गए अब्बास का। अब्बास ने 4 विकेट्स हासिल की। ओवर द विकेट हसन बॉल कर रहे हैं, इनको बड़ी आसानी से इनकी इस ओवर को अब तक लीव किया है सऊद ने। इस तरह से
26 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ है, 71 स्कोर सिंध का, 5 विकेटों के नुकसान पर। सऊद 23 पर हैं और सरफराज ने अब तक किसी गेंद का सामना नहीं किया। Selection, please. अब्बास ने अब तक तूफानी बॉलिंग की है और 4 विकेट्स हासिल किए हैं, सिर्फ 18 रन्स दिए हैं। जिस तरह से राइट बिफोर द लंच से बिल्कुल पहले आखिरी गेंद के ऊपर साइम अयूब की विकेट हासिल की। साइम अयूब सेट नहीं हुए थे और उसका फ़ायदा उठाया। सरफराज अब उनका सामना करने के लिए आए हैं। आसान हदफ नहीं होंगे अब्बास सरफराज के लिए भी। अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि सरफराज अहमद को हम जानते हैं कि ये ज़्यादा देर तक खामोश नहीं रहते, बिजी प्लेयर हैं सरफराज अहमद भी, और कट स्क्वायर ड्राइव अच्छा करते हैं। और दूसरी तरफ अब्बास को जो है वो मूवमेंट अंदर की तरफ मिलता है दाएं हाथ के बैट्समैन को। तो ये काफ़ी अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब्बास एक ऐसे बॉलर हैं जो कि एक सिक्के को एक जगह पर रखकर उस पर बॉल कर रिपीटेडली गिराने की सलाहियत रखते हैं। और बहुत ही शानदार गेंद, बहुत ही क्लोज रही, आउटसाइड एज हो सकता था, लकी रहे। हम अंदर आने की मूवमेंट की बात कर रहे थे, इस पर अब्बास के पास एक दूसरा प्लान था कि एंगल अंदर की तरफ किया। ये देखिए बहुत अच्छी जगह पे गिरा और फिर पड़ने के बाद हल्का सा बाहर निकला। बहुत ही बेहतरीन सीम मूवमेंट का मुजाहरा, सीम बॉलिंग। और वैसे जेनेरिकली ये सीम बॉलर हैं, सिलाई की मदद से गेंद को मूव कराते हैं ज़्यादातर, लेकिन बहुत अच्छा गेंद। और इस दफ़ा इसको खेल दिया है स्क्वायर लेग की जानिब। यहाँ पर रन्स मिलेंगे। गेंद तेजी से फेंस के बाहर चली गई 4 रन्स के लिए। सरफराज ऑफ द मार्क इस बाउंड्री के साथ। ग्लोरी बॉल की तरफ गए थे अब्बास के, शायद कि फुल बॉल कराउंड ज़्यादा फुल हो गया कि बहुत शायद मूवमेंट उनको हासिल कर ले, लेकिन बिल्कुल मुंह में जिसको हम कहते हैं गेंद कर दिया। और सिर्फ कलाइयों के सहारे मदद की बॉल को स्क्वायर लेग की तरफ खेलने में सरफराज अहमद ने तैयार थे इस गेंद के लिए। इस बॉल को खेलते उनको बिल्कुल भी दिक्कत पेश ना आए। तो वो जो ग्लोरी बॉल होती है ना, वो ढूंढने के लिए गए, लेकिन इस मरतबा कामयाब नहीं हो सके। और खेलते ही यस की कॉल। फील्डर थोड़ा सा पीछे से आ रहे थे, अच्छा सिंगल लिया। और अगर अब्बास की विकेट्स की बात की जाए तो अब्बास ने जिस तरह से बॉलिंग की है अब तक, अहमद सभी बैटर्स को डिस्टर्ब किया। उमर बिन यूसुफ, आज़म ने कोई गलती नहीं की, हल्का सा गेंद बाहर निकला था। फिर यहाँ पर ये 7 की बात की जाए, एक शानदार कैच लिया। ये देखिए फवाद आलम को फॉरवर्ड करवाया, फोर्सफुली शॉट खिलवाया उन्होंने, स्ट्रेच करना पड़ा। और फिर साइम अयूब हालांकि थोड़ा आगे आके खेले थे, लेकिन फिर भी वो ठीक से उस बॉल की मूवमेंट को किल नहीं कर सके। और वो जो सीम मूवमेंट मिला अब्बास को। और अच्छी बात यह है अब्बास की जो करियर में बीच में मिसिंग नज़र आ रही थी, बॉल में वो जिप नहीं था। लेकिन जो मुझे आज इनके स्पेल में देखिए लास्ट विकेट को देखिए, बॉल पड़ के सीम के साथ बाउंस पे मिला उन्हें, जिसकी वजह से उस मूवमेंट को और उस बाउंस को कैटर नहीं कर सके, साइम अयूब नहीं कर सके। तो अब्बास की जो बॉलिंग में बहुत अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए भी, कि अब्बास को अब वो जिप मिल रहा है उनकी बॉल में, और वो मूवमेंट तो उनको हमेशा से मिलती थी। तो एक अच्छा साइन अब्बास के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि पाकिस्तान को बॉलर्स की, फास्ट बॉलर्स की ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि हसन अली टीम से बाहर हैं, शाहीन अफरीदी क्या इतने फिट होंगे कि अभी इंग्लैंड के खिलाफ आगे जो सीरीज़ है कि उनको डाला जाएगा। खैर इस बीच में 27 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है, 76 स्कोर 5 विकेटों के नुकसान पे। Selection देखिएगा प्लीज। थैंक यू।
अहमर हसन अली इस लाइन के ऊपर आउटसाइड द ऑफ स्टंप बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, यहीं से कामयाबी मिलेगी। और अब दो के इनके बाद अबरार, उमर, आसिफ महमूद है, बट ये आखिरी एक रिकग्नाइज्ड पेयर है जो कि सिंध के लिए कुछ रन्स कर सकता है। जी बहुत इंपॉर्टेंट पेयर है सिंध के लिए। उनकी इस नैया को पार लगाने के लिए इस पेयर को लंबा खेलना पड़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ सदर्न पंजाब को भी पता है कि अगर इस में दरार डाल दी तो उसके बाद से फिर ये इनके लिए बाकी विकेट हासिल करना शायद उस आसान हो जाएगा बिलमुकाबिल के एक लास्ट रिकग्नाइज पेयर जिस तरह आपने बात की। और सरफराज अहमद को भी इसको बहुत अच्छे से अंदाज़ा है, बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। देखना होगा क्योंकि जैसे मैंने जिक्र किया था कि सरफराज भी स्ट्रोक प्लेयर हैं, ये ज़्यादातर खामोश रहते नहीं हैं। और जो लाइन जिस पे टीज़ करने की कोशिश करे हसन अली थोड़ा सा आउटसाइड ऑफ स्टंप, कितनी देर तक सरफराज अहमद गेंदों को जाने देंगे, या फिर मुझे लगता है कि कुछ ही देर में कहीं ना कहीं हल्ला ज़रूर बोलेंगे। इस दफ़ा इसको खेल दिया स्क्वायर लेग की जानिब। यही बात कर रहे थे अमर अभी कि जहां उनको लूज डिलीवरी मिलेगी उसका वो भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। 4 रन हासिल किए। इस मरतबा देखिए कि पाले में गेंद थी सरफराज अहमद के, थोड़ा स्टंप्स को टारगेट करने की कोशिश की थी हसन अली ने, और बिल्कुल पैड्स पे बहुत स्ट्रांग है सरफराज अहमद। देखिए इस पिछले ओवर में भी एक चौका हासिल किया था, यहाँ पे भी थोड़ा चलते एक अंदाज में उन्होंने खेला स्क्वायर लेग की तरफ। और ये होता है कि अपॉर्चुनिटी कुछ जाने नहीं देते, जहां उनको मौका मिलता है वहां रन्स करते हैं, और यही एक अच्छे प्लेयर की निशानी है। एक दफा फिर लेग्स को टारगेट किया था हसन ने, और लेग बाय का एक रन यहाँ पर मिला। अहमर जिस तरह से अवे टीम है वो ये डिसाइड करती है अगर वो पहले बॉलिंग करना चाहते हैं तो टॉस नहीं होता और अनकंटेस्टेड जो है वो। सो अब तक ये फैसला सदर्न पंजाब के हक में जा रहा है, और जो उनकी प्लानिंग है उस प्लानिंग के को बखूबी अच्छे तरीके से वो अंजाम भी दे रहे हैं। जी बहुत अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि इनके पास बहुत एक्सप्रेस फास्ट बॉलर नहीं है। उनके पास बेस्ट चांस है कि वो स्टार्टिंग में पहले 2 सेशन में जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर का फ़ायदा उठाएं और जितनी विकेट्स वो हासिल कर सकते हैं वो हासिल करें, और अपने प्लान को बहुत अच्छे से अब तक एग्जीक्यूट किया। और गलतियां करवाई हैं सिंध के बैटर से उन्होंने, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग, स्पेशली मोहम्मद अब्बास की स्टैंड आउट बॉलर अब तक रहे हैं। बहुत कंसिस्टेंट लाइन एंड लेंथ को उन्होंने हिट किया है, सही जगहों को, बिजनेस एरिया को जो है वो उन्होंने हिट किया है, ताकि जिसकी वजह यही है कि वो अब तक सबसे कामयाब बॉलर रहे हैं। दूसरी जानिब सऊद शकील एक बेहतरीन फॉर्म में हैं, बेहतरीन करियर की अपनी बेहतरीन इनिंग्स खेली, और सिंध को बचाने के लिए उसी फॉर्म को कैरी करना होगा। और दूसरी जानिब ये लंच जारी है अब तक ड्रेसिंग रूम में। नेल जॉनसन उनके साथ खुरम मंजूर। 28 ओवर्स अब तक हो चुके हैं, सिंध 81 पर 5। इस दफ़ा इसको सरफराज ने खेला है कवर्स की जानिब, और गेंद तेजी से फेंस की जानिब बढ़ रही है। फील्डर ज़रूर पीछे आए थे लेकिन रोक नहीं पाए। सो ओवर पिच डिलीवरी अब्बास की, और उसका अंजाम एक बाउंड्री। जी हाँ बिल्कुल, जो फुल बॉल हो रही है उस पर कोई दिक्कत पेश नहीं आ रही बैट्समैन को। स्पेशली सरफराज अहमद ने पनिश किया है इस तरह की गेंदों को, और बाउंड्रीज भी हासिल की हैं। पिछले 3 ओवर में हमने देखा है कि तीसरी बाउंड्री उन्होंने हासिल की है। करीब करीब जो ज़्यादा फुल बॉल हो गए उसका भरपूर फ़ायदा उठाया सरफराज अहमद। अच्छी बात है, एक बड़े पॉजिटिव इंटेंट के साथ सरफराज अहमद खेल रहे हैं। एक दफ़ा फिर खेलकर सॉफ्ट हैंड से खेला था, 1 रन लेना चाहते थे सऊद शकील, इसमें बिल्कुल भी उन्होंने अपना कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया। बहुत अहम शराकतदारी है ये सिंध के नुक्ता निगाह से। एक बड़ी पार्टनरशिप यहाँ पे दरकार है अगर इस मैच में वो अपनी गिरफ्त को
मजबूत करना चाहते हैं या अपनी टीम को एक बेहतर जगह पर ला खड़ा करना चाहते हैं। और शायद ये एक ऐसी जोड़ी है स्पेशली सरफराज के होते हुए कि जितनी देर वो रुकेंगे स्कोर चलता रहेगा। और इस दफा गेंद अंदर आई गिरने के बाद। बहुत ही अच्छी गेंद, अब्बास, टिपिकल अब्बास का इन स्विंग। देखिए ये लेंथ है जो सरफराज अहमद को परेशान कर सकती है, क्योंकि सरफराज थोड़ा सा आधा बल्ला खोल कर खेलते हैं, थोड़ा आध खुले बल्ले के साथ खेलने का इनका एक हैबिट है। और ये लेंथ बहुत अच्छी है। देखिए जस्ट आउटसाइड ऑफ स्टंप, कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी, वहीं से बॉल पड़ के सिलाई के साथ अंदर की तरफ आया। और चूंकि मैंने देखा कि आधे खुले बल्ले के साथ सरफराज खेलते हैं, तो ये इनसाइड एज के भी बहुत बड़े कैंडिडेट हैं, तो इस लेंथ को रिपीटेडली हिट करना पड़ेगा अब्बास को। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब्बास की बॉलिंग प्लान में समझना चाह रहा हूं कि जैसे एक गेंद उन्होंने पिछला जो था वो बहुत आउटस्टैंडिंग किया, उसके बाद फिर से वही फुल बॉल कर दिया। आई थिंक जो बिल्कुल फुल बॉल हो रहा है वो बैट्समैन को खेलने में ज़रा आसानी हो रही है, उसको दिक्कत पेश नहीं आ रही। लेकिन जो कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी में गेंद जस्ट स्लाइट आउटसाइड ऑफ स्टंप जो बॉल पड़ रहा है और हल्की सी भी मूवमेंट मिल रही है, वो परेशान कर रहा है। अहमद, प्लान ये हो सकता है कि 2-3 गेंदें आगे खिलाई जाएं, फिर वहीं से डिसीव किया जाए, एक गेंद बाहर निकाली जाए और बैटर का जो है ना वो एज निकलवाया जाए। सो मेरा ख्याल है कि जो अब्बास हैं वो इस प्लान के साथ आ रहे हैं। 3 स्लिप्स उन्होंने राइट हैंडेड बैटर सरफराज और लेफ्ट हैंडेड बैटर सऊद के लिए भी 3 स्लिप्स रखी हैं, एक गली। और इस दफ़ा फिर गेंद गिरने के बाद अंदर आई तेजी के साथ, अच्छा छोड़ा इस दफ़ा इसको सऊद ने। अच्छा, सऊद शकील का जो स्टांस है ये देखिए, ये बिल्कुल स्टिल होते हैं यहाँ पे। अब आप ये देखिए कि जहाँ पर ये स्टिल होते हैं, अगर इस लेंथ से आउटसाइड ऑप्शन से इनको बॉल अगर अंदर लेकर आया जाए तो सऊद शकील जो है वो मुझे लगता है कि इतने रेडी नहीं होंगे, क्योंकि उनका बल्ला बिल्कुल ऊपर होता है और वो उनमें कोई उनकी फीट मूवमेंट नहीं होती, स्पेशली स्टांस के साथ। तो अगर राउंड द विकेट इनको राइट हैंड बैट्समैन थोड़ा सा अंदर की तरफ एंगल बॉल करें या अंदर बॉल मूवमेंट हो जाए इनको, तो सऊद शकील शायद प्रॉब्लम में आ सकते हैं। अब्बास के 11 ओवर खत्म हुए, सिंध 86 पर 5। इस दफ़ा इसको बैकफुट पर पंच किया सरफराज ने। हसन अली की ये गेंद, हम बात कर रहे थे कि दोनों ही बैटर्स के लिए अभी भी 3 स्लिप और एक गली के साथ दोनों बॉलर्स अटैक कर रहे हैं दोनों जानिब से। हसन अली अपनी दूसरी कामयाबी के शिकार में है। और आप ये देखिए कि गली नज़र आ रही है, 3 स्लिप हैं, मिड ऑन थोड़ा सा वाइड है। ये अच्छी लेंथ है, क्योंकि इस लेंथ के ऊपर दोनों के लिए कामयाबी के चांसेस। सरफराज अहमद भी पसंद करते हैं स्क्वायर ड्राइव खेलना, कट करना, और जो हसन अली हैं इस लेंथ से अगर उनको थोड़ी सी मूवमेंट मिलती है या एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है या बैट्समैन को बीट करते हैं तो यहाँ पे विकेट का चांस भी है। सो ये मेरे ख्याल में काफ़ी प्रोडक्टिव लेंथ हो सकती है सरफराज अहमद के अगेंस्ट। स्लाइटली आउटसाइड ऑफ स्टंप गुड लेंथ को जो टारगेट अगर करें तो ये काफ़ी प्रोडक्टिव हो सकती है। और इस दफ़ा इसको गैप में खेलने में कामयाब हुए हैं सरफराज, एक्स्ट्रा कवर की जानिब। और हसन वहाँ पर मौजूद थे। बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट स्ट्रोक था, जो कि इसको प्रॉपर मिडल नहीं कर पाए, लेकिन इस शॉट से इनको इत्माद मिला होगा। ये थोड़ा सा मूवमेंट ढूंढने के लिए गए थे यहाँ पे बॉलर, और सरफराज अहमद जो हैं वो पूरा बॉल के ऊपर आए और इसे इन्होंने ड्राइव किया। और देखिए कि 16 रन्स बनाए सिर्फ 15 गेंदों पे, यही खासा है सरफराज अहमद का जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि बिजी प्लेयर हैं, खामोश नहीं रहते, अपने स्ट्रोक्स खेलते हैं। वैल्यू फॉर मनी आपको नज़र आती है इनके स्ट्रोक्स में, और जितनी देर तक ये रुकेंगे स्कोर
बोर्ड जो है वो चलता रहेगा। देखते हैं कि सरफराज काफ़ी आगे आकर खेल रहे हैं जिस तरह आपने बात की, और गेंद हल्का सा अंदर ज़रूर आया था हसन अली का, बट कोई मुश्किलात नहीं सरफराज के लिए। पिच में मूवमेंट ज़रूर है, बहुत ज़्यादा पेस नहीं है शायद। एक तो सदर्न पंजाब के बॉलर बहुत एक्सप्रेस भी नहीं है और इतनी मूवमेंट नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छा स्ट्रोक था। आगे खिला अगेन मूवमेंट तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं हसन अली, लेकिन यह कि सरफराज अहमद इस चैलेंज के लिए भरपूर तैयार थे। फुल फेस ऑफ द बैट, खूबसूरत स्ट्रोक था सरफराज अहमद का। और अहमद उतनी अच्छी फील्डिंग की हसन ने, अपने लेफ्ट साइड पर डाइव करके इस गेंद को रोका, यकीनी तौर पर रन्स बचाए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं अब तक जो इंटेंट नज़र आया सरफराज का कि वो एक तरफ से स्कोर बोर्ड चलाना जा रहे हैं और कि रन्स बनते रहें, रन्स मिलते रहें। और एक दफ़ा फिर इसी तरह जेंटल पुश और एक्स्ट्रा कवर में एक रन लिया। 30 ओवर्स के अख्ताम पर सिंध 89 पर 5। अब्बास मीडिया सेंटर एंड से अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे और सऊद शकील जो कि हमने देखा है कि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हैं, काफ़ी स्ट्रगल किया था अगेंस्ट अब्बास। मज़ीद क्या ऑप्शन हो सकते हैं इस वक्त ब्रेक थ्रू के लिए? अभी तो अब्बास ने शानदार बॉलिंग की है, हसन अली भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, सऊद शकील स्पिनर को अच्छा खेलते हैं, लेकिन सलमान अली आगा को अगर यहाँ पर लाया जाए तो आपका क्या ख्याल है अहमद, ब्रेक थ्रू मिल सकता है? मेरा ख्याल है इस वक्त कप्तान जो है वो चाह रहे हैं कि जो भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर है या जूस है उसका फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। शायद इस स्पेल के बाद हम सलमान अली आगा को एक्शन में देखें हसन अली या अब्बास की जगह। ये देखिए कितना अच्छा स्ट्रोक था और इसे स्लाइस किया, गाइड किया पॉइंट और थर्ड मैन के बीच में से 4 रन्स के लिए। ये फेवरेट जोन है सरफराज अहमद का, यहाँ से ये कट करना, कट करते हैं उसको, बहुत अच्छा स्लाइस करते हैं। देखिए थोड़ा सा लेंथ पीछे हो गई थी, थोड़ी विड्थ मिली सरफराज अहमद को, ऑन टॉप ऑफ द बाउंस गए और इसे गली के और स्लिप्स के बीच में से प्लेस कर दिया। यही सरफराज अहमद का स्टाइल है कि ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव प्लेयर हैं, आप इनको खामोश नहीं करा सकते पिच के ऊपर। और रेयर मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा लूज बॉल अब्बास की तरफ से। ये ऑब्जर्व किया हमने कि सिंध के बैटर्स स्ट्रोक खेलते ही उनकी जो लाउड कॉल है वो हम सुन सकते हैं, सरफराज भी इस दफ़ा। और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि सरफराज इस वक्त 100 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं, जहां उनको लूज डिलीवरी मिली उस पर उन्होंने रन्स लिए। और देखना ये कि अब फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली हुई है और 3 स्लिप्स की बजाय 2 स्लिप्स रखी हैं और एक्स्ट्रा कवर में एक फील्डर प्लेस किया है। एक स्लिप जो है इसको निकाल लिया है और एक्स्ट्रा कवर में एक फील्डर जो है वो प्लेस कर दिया है। इसका मतलब ये है कि सरफराज को ड्राइव खिलाने के लिए लेकर जाएंगे। जी बिल्कुल, एक स्लिप कम की क्योंकि अब मूवमेंट थोड़ी कम हो गई है और उतनी हेल्प मिल नहीं रही है, तो इस वजह से उन्होंने एक स्लिप कम की है।
और एक्स्ट्रा कवर पे फील्डर को तैनात किया ताकि अगर ड्राइव लग भी जाए आगे बॉल पिच करने की कोशिश में तो वो बाउंड्री के लिए ना जाए, वहीं पर शायद दायरे के अंदर उसको रोक लिया जाए। जी हाँ, इस दफ़ा उसी फील्डर के पास जिसकी हम बात कर रहे थे, हसन खान, एक्स्ट्रा कवर में मिडल ज़रूर किया सरफराज ने। और जिस तरह आप बात करें कि शायद एक एक्सप्रेस फास्ट बॉलर उनके पास तो नहीं है सदर्न पंजाब के पास, लेकिन जिस तरह से अर्ली ऑन स्विंग देखने में मिली है दोनों ही फास्ट बॉलर्स की जानिब से, वो लाजवाब थी। और इसी वजह से सिंध के बैटर्स उस पर मुकम्मल तौर पर हावी नहीं हो पाए और उसका भरपूर फ़ायदा उठाया अब्बास ने भी और हसन ने भी। और इस दफ़ा अंदर आई गेंद, लेकिन हाइट थी, अच्छी अपील, मेरा ख्याल अंपायर के लिए एक आसान फैसला। जी हाँ बिल्कुल, 31 ओवर का खेल ख़त्म, 93 स्कोर सिर्फ का, और सरफराज 21 जबकि 23 पे सऊद शकील खेल रहे हैं। और सिंध के बैटर्स बिल्कुल भी अब्बास की तूफ़ानी बॉलिंग का सामना नहीं कर पाए और हसन ने भी एक विकेट हासिल की। सो अभी इनके बाद आसिफ महमूद और मोहम्मद उमर टेल एंडर्स में ऐसे बैटर्स हैं जो कुछ देर विकेट पर ठहर सकते हैं। 93 पर 5, सिंध मुश्किलात का शिकार। जी बिल्कुल, और आपको बिल्कुल इसमें साथ में फैसल मस्जिद के खूबसूरत नज़ारे भी नज़र आ रहे हैं। ओ आप ये देखिए कि इस मरतबा खड़े खड़े खेलने के, वो मैं स्टांस बता रहा था कि बिल्कुल खड़े खड़े खेल रहे हैं, बड़ा एक इंटरेस्टिंग स्टांस है। और कुछ अल्फाज का तबादला भी हुआ हसन अली और सऊद शकील के दरमियान, काफ़ी करीब था, ये बॉडी के काफ़ी करीब क्लोज खेलने के लिए गए थे सऊद शकील जो 23 पर मौजूद है। ये देखिए वाइडर ऑफ द क्रीज गए थे, टेम्प्ट किया था और बिल्कुल खड़े खड़े खेलने गए सऊद शकील। ये बड़ा इस मैच में अब तक इन्होंने देखा बड़ा अनयूजुअल सा स्टांस के साथ खेल रहे हैं सऊद शकील। अहमद, आप बहुत क्लोज ऑब्जर्व कर रहे हैं सऊद शकील के स्टांस को, अभी भी थोड़ा सा दूर खेले बॉडी के, और जिस लाइन और लेंथ के ऊपर हसन अली ने बॉल किया है, एक गेंद हल्का सा भी बाहर निकला तो मुश्किलात हो जाएंगी सऊद शकील के लिए। ये बॉडी के करीब से, ये जो हम चौथा पांचवा स्टंप कहते हैं, आगे से बॉल अंदर बाहर दोनों अगर हुए तो सऊद को प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो बिल्कुल ओपन चेस्टेड होकर खड़े हैं और मूवमेंट उनकी बिल्कुल नहीं है, खड़े खड़े खेल रहे हैं, गो के ये क्रीज से बाहर खड़े होके खेल रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प स्टांस है ये सऊद का। तो देखते हैं कि इसको बॉलर किस तरह से इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, देखना होगा। लेकिन अमूमन होता क्या है कि देखने में हमें कभी कभी ऐसा लग रहा होता है कि बड़ा डिफरेंट है, अजीब है, लेकिन प्लेयर जो होता है वो उस अंदाज में अपना जो मेथड उसने डेवलप किया होता है वो उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। जी हाँ, मैं अर्ली ऑन यासिर हमीद से बात हो रही थी, तो यासिर हमीद यही कह रहे थे कि अगर तो आप ये सारी ड्रिल्स करके आए हैं और ट्रेनिंग में आपने चीज़ की है तो फिर तो आप एडजस्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर आप मैच में आके ये करना चाह रहे हैं तो फिर आपके लिए मुश्किलात होंगी। अभी जो ये लास्ट बॉल खेला है इसमें बिल्कुल डिफरेंट खेले। पहले ये था कि बिल्कुल स्टैटिक थे और लास्ट टाइम तक मूवमेंट बिल्कुल हाथों की नहीं थी और हाथ स्टिल थे, लेकिन जो अभी लास्ट बॉल खेला है इसमें प्रॉपर बॉल के ऊपर आते हुए सऊद शकील ने इसको डिफेंस किया है। तो हमने इन स्पैन ऑफ फ्यू डिलीवरीज हमने कुछ गेंदों के बीच में इनके दो डिफरेंट स्टांस देखे, एक में जिसमें बिल्कुल स्टिल रहते हैं, कुछ हाथों की या पैर की मूवमेंट नहीं है, और एक में प्रॉपर बॉल की तरफ गए हैं, जैसे लास्ट टाइम लास्ट बॉल उन्होंने डिफेंस किया। इस दफ़ा एक रन तेज़ी से हासिल किया, और सऊद शकील के स्टांस की बात हुई तो फवाद आलम अपने एक अनऑर्थोडॉक्स बैटिंग स्टांस की वजह से काफ़ी उनके ऊपर बातचीत होती है, आज भी कुछ रन्स नहीं कर पाए और सरफराज के लिए 2 स्लिप्स, एक गली। एक दफ़ा फिर इसको
सीधे बल्ले के साथ खेला। ओवर का इख्तिताम हुआ सिंध 94 पर 5। ठीक है गेट की ठीक है। ठीक है वो। Mohammad Ilyas have been brought back into the attack from Southern Punjab. Played it with a straight bat, open-faced, and a very Fawad Alam-like stance, as we have mentioned before. Not getting the same kind of movement and the same kind of swing that they were this morning, but the lengths have been pretty spot on from all the Southern Punjab bowlers. Pace has been consistent. And again, the ball coming towards the batsman, not allowing him to open his bat or his arms, not allowing him to go for the runs or score freely here. The plan is clearly working from the Southern Punjab skipper, Hassan Ali, and with me in the comm box is Ijaz Ahmed. Thank you very much. As players, after lunch, they are trying to make a recession time, though it's flying high, this vulture, but Sindh just creeping here. And I think that both of these two batters, Saud and Sarfaraz, experienced guys, experienced batters, they are doing a good job, just spending their time. In a first-class games, in first-class cricket, you need to put on more time, and surely, slowly, you will be getting your rewards. And this is all they have to do at the moment. It's just stick to the basics. Just spend some time out there. You have half your side back in the pavilion. You have the most experienced batter out there with the skipper. Oh, that's a beautiful ball and a appeal from the bowler, and that's been given out. Well, the wicketkeeper wasn't very keen on appealing, but that's been given out, and that's a bowled out. Wow, what a surprising turn of events here we're seeing, and it's the skipper that has to walk back after this unfortunate fall of wicket. I think that ball clipped, just touching on to the gloves, and look at the take where Azam has just took that ball high, you know, just clipping the stumps, and there you go. They've just landed, and journey ended here on 23 runs in 74 deliveries of Saud Shakil. Sindh 6 down at 94. The new batsman walking in for Sindh. It's Asif Mahmood. It hasn't been easy for the Sindh batters today. The fall of wickets have been very frequent. There's yet to touch that 100
runs mark, but the wickets just keep falling. And this is some very good and consistent bowling from the Southern Punjab bowlers. They have kept their lengths right on spot, and they have showed up big time today. Asif is on strike here, just getting off the mark quickly. Luck is there for Sindh side now on this throw, because if direct hit, would have been another wicket down. Bit of a risky run there by Asif Mahmood. Wanted to get off the mark straight away. There's a bit of hesitation between Sarfraz and Asif as well, and if this was a direct hit, Sarfraz was nowhere near that stump. Would have been gone, and that would have been a big, big blow, because he's the only man, last man standing for his team as far as the batters are concerned. Yes, exactly. The Southern Punjab fielders, they are alive. Hassan could pick up, but was not that accurate enough. Well, Sarfraz has got the habit. We had seen in the previous game a run out where Sarfraz was out of his crease. On the non-striking end, the batter was thinking that he's coming up, and they have got a run out, but this time he has just gone. And look at the clipping. Look at that delivery. Just kissing the top of the stumps. The wicketkeeper was a bit confused. And rightly so. I don't think he was expecting that. But at the end of the 33rd over, Sindh is 95 for the loss of 6 wickets. Sadakat making a comeback in the second innings, bowling his first over of this innings, of this session, pardon me. Starting very well. Asam must be under a lot of pressure right now, wouldn't he? He knows that most of his side is back into the pavilion. He has to stand tall for his team, spend some time out there, stick to the basics, and I think Sarfraz's experience would prove very handy here. As long as they can have a good communication between them, running between the wickets is good, is fluent, and keep that scoreboard ticking. Yeah, he can bat, Asif. Well, point table. That's how these things are going here. That's how, what is the criteria? Outrun win, 16 points. Then draw game will be giving you 5 points, 8 points each, pulls out. Bonus points earn, which will be a tie game, and abundant, you will be getting 5. Good delivery. Asif are just leaving there. So, how the teams will be earning points. There you go. Winning bonus points, like 2 points on a winning the match after follow on. Then win with an inning margin is 1 point. 1 point for saving the match after follow on. Result will be drawn. That will be the case. Then 200 runs, 1 point. Then if you got like 50 plus, add 1 point each in those 50 runs. Again, some sort of hanging the bat there. Kite session. And what about bowling point? 3 wickets. You will be getting 1 bowling point. And 6 wickets, 2. Then each time you will be stepping up 3 wickets. You will be getting 1 point plus. They should be under 100 overs in first inning. That's very easy to remember. Full over pitch delivery, played it with a straight bat. Right into the hands of the fielder. No run there for Asif. He looks a bit restless today, Asif on the crease. He just needs to stay there, spend a little bit more time, get used to the conditions. It's not very easy for the batsman. Courtesy of some good and consistent bowling by the Southern Punjab bowlers.
leaving him up. Azam went up, and there you go, another wicket, and Sadakat make a successful comeback in this session. And there you go, Asif Mahmood departs. He never looked comfortable. He never looked comfortable. And look at that. That's a beauty. That came in, deceived the batsman. Very well collected by Azam Khan, who's been brilliant behind the stumps today. And Sadakat opens his account today with his first wicket. And the 7th wicket falls for Sindh. Asif Mahmood walks back for just 1. It's 95 for 7 at the end of the 34th over. The next batsman walking in is Mohammad Umar. 12 matches, 139 runs. He scored 150. The average is just 11.58, but his team would be hoping that he can stay out there with Sarfaraz. Tried to build this innings up. We haven't seen a lot of partnerships. So it's going to be Sarfaraz facing Muhammad Ilyas now. He's on 21 from 26. There's something about Sarfaraz. You know, he keeps the scoreboard ticking all the time. He has the ability to absorb the pressure, and if somebody can get Sindh out of trouble, it has to be that man on strike. This is going down to the deep backward point. Yes, you're right. Being a senior player, Sarfaraz should be looking here to save one end, but the matter of concern or thinking point is here that the other end, the batters, they are not keeping themselves intact with him. The wickets are kept falling, and there you go. Asif Mahmood just going forward, hanging his bat. Just very thin edge, and behind the stumps, Azam Khan took the catch. Sindh would hope for a partnership here between Mohammad Umar and Sarfaraz. Mohammad will be facing his first ball. Oh, that's brilliantly done. Brilliantly done. And sorry, Hijab, you were talking about the 50. That was 59 this season, what Umar has scored here. And, that was at this very venue in Rawalpindi versus Southern Punjab. So let's hope that he will be giving a good hand to Sarfaraz. Absolutely, that should be their plan. That's what Umar would be looking to do. But he has to spend some time. Like we saw with Asif, he looked very restless. He didn't look comfortable even for a moment. Didn't spend much time there. That's a good leave. He needs to understand how the pitch and the ball is behaving if he wants to stand there with Sarfaraz. Azam Khan standing behind the legendary Moin Khan's son, and he's doing a good job because the way he kept that ball blowing down towards right side, then another one, second one of the day, and so easily, so comfortable for him. Good pair of hands Azam Khan has got behind. And that's better because Southern Punjab, they're bowling in a superb line, and so far so good. He's doing a good job. And there you go, third catch, so easy, so comfortable. Looks like he's up for the task today, Azam Khan. His presence makes a lot of difference in this Southern Punjab team. He has played international for Pakistan, and he has made a name for himself all around the world. But this is a 4-day game. The temperament and the stamina in a 4-day game is very different from the shorter format of the game. Oh, that's a brilliant ball. It's been played well as well. And that has run all the way towards the boundary. Yes, Umar has managed well on that ball because Ilyas was really on pace. He was hitting onto the pads.
And at the very last moment, we're just bringing his bat in front of the ball. Look at that. And keeping the ball down. Just making it down to the third man. Get it. Fine leg, in fact. Sarfaraz is a senior batter, senior player. He will be taking the responsibility with his dot delivery. 35 gone, 97 for 7. Well, Hijab 4 bowlers have been utilised by the Southern Punjab. Abbas, Sadaqat, Ilyas, and they were really on the top. Sadaqat got a wicket in this session when the captain has brought him back, and he has replied. Well left, that one. The ball is still moving a bit, and that has confused the new batsman who's walked onto the ground, Muhammad Umar. Although he has scored 150 in this very edition of Quaid-e-Azam Trophy, he'd still be wary of losing his wicket at the moment. Well, the slips have been going down to 2. We had seen since morning that 2 slips have been taken for the batters here. But as you've spoken here, that ball is still moving a bit. I think that Sindh team must not be a relaxed team here at this stage. Well, I don't think Southern Punjab is relaxed. They brought the energy in the first session, as we saw the fielders, the bowlers, everybody has been on their toes. And we're seeing similar sights in the second session here as well. Sadaqat will have to reload that one. The batsman was probably not ready to face him. Well, Umar has spoken earlier. Versus Southern Punjab, he has got his best runs, 59. Here at this very venue, and still, he's looking good. He has managed those kind of quick deliveries well. Though that he's having a bit of the chat with Sarfaraz. And I think he was not happy. Might be that Sarfaraz wanting to go on to the strike. That's why he was just showing a bit of the concern. Well, the ball's not coming onto the bat, and that is probably the biggest concern for Sindh right now. Everybody has struggled so far in this innings, but still holding out. They have lost 7 of their batsmen. Ooh, that's a big bouncy. Oh, we saw some moves from Azam there. Well, he's certainly enjoying himself. I mean, good reason. He's been brilliant behind the stumps today. Made it look very easy when we all know that it's not. Yeah, he's just bending his back here. Bounce, and there you go. Bit of the dancing. But he has done a good job. 3 catches today. Well, it's good all the time when you're enjoying your cricket with your skills, with lots of different tactics, because it's a 4-day game. You need to keep yourself alive along with your teammates. You need to keep talking with each other. You need to keep doing certain kind of things that the players need to be active. And I think Azam Khan doing a good job. Well, he's keeping his fellow mates and the fielders on the slip very entertained at the moment. That's a good sight to see, always. Play with a straight bat, and that's a good run. There's a bit of a misfield there in the ground, and that has allowed an extra run for Sindh there. Not very tidy from Southern Punjab, but at the end of the 36th over, the score is 99 for the loss of 7 wickets.
Not been a very good morning for Sindh here, but Southern Punjab is right on top. It's Mohammad Ilyas streaming in, and that's a good shot. Open the face of the bat, on back foot. The ball racing towards the boundary, but it's well fielded. You've seen some good fielding effort from Southern Punjab today, and that has definitely brought up the energy of this game. Well, 100 up here for Sindh side. 101 for 7. In the previous game against Central Punjab, Sindh didn't start it well. They were not been off to a good start here. On to the back foot. Sarfaraz caught bit of the gap. Long chase for the fielder. Yes, is the call. But it took a bit of the time here for the fielder to pick up the ball and throw. And it's a no ball. Risky run there from Sindh, and I think that's the first no ball we've seen since this morning came from Mohammad Ilyas. He won't be happy with that. But we have seen that the pressure is on the Sindh batters and trying to take runs that are not really there. And an odd run out at this point could be disastrous for them. Yes, Sarfaraz being a leading player here, or might be a leader, he should be keeping this thing that there shouldn't be any sort of risky run here at this stage, because 7 wicket down, the wicket column, that has been a disturbing case for Sindh side. And I was talking about the previous game versus Central Punjab. 188 in the first inning Sindh scored, and they didn't start well at that stage here at Rawalpindi, but they came back strongly with the third day, fourth day. Batting was getting much easier. So I think that first inning, squared him up. And these are the deliveries that I think that Sarfaraz should be facing the major part. Like 90% of the bowling he must be facing here. Well, we'll take a look at that. Angle ball in, properly deceived right there. Very well collected by the wicketkeeper. See, that's the issue here, Ijazat. They have the liberty of time, the Sindh, but what they don't have is a lot of wickets to waste. So we're seeing that the batters are very wary to play shots right now. That one towards the leg side. Well, in a longer format of cricket, in the session to session, that has been the key. That how you will be spending this session here before tea. You shouldn't be losing a wicket here, being a Sindh batter or Sindh skipper. What has been advised to these two batters, Umar and Sarfaraz, keep your heads cool and calm together, go for the partnership. It's only 8 in 16 deliveries between these two. So what Sindh has lacked here, you're right, the partnership. You're talking about the partnership, and in such kind of red ball cricket, though that in T20, in one day, you need partnerships, but here, session to session partnership, that has been most important thing. Absolutely. Absolutely. That should be the plan. That should have been a plan from the very start, but unfortunately, or fortunately for Southern Punjab, they've been all over the Sindh batters. They're bowled brilliantly. They have fielded excellently today. We haven't seen many misfields or drop catches today, so that's a pretty good side for the bowling unit. Standing tall there. Playing with soft hands. So at the end of the 37th over, the score is 103 for the loss of 7 wickets. One leg. Well, Sarfaraz are just leaning forward, showing his leg stump there. And I think that Sadakat read him well, but he couldn't go through.
Sadakat came in for some mean goal into the side, and he's been rested for this game. Oh, that's the leg stump is properly exposed over there. And he's proved to be a very good addition to this Southern Punjab side. Yes, exactly. Second game of the season. And he's doing good. And Umar has played that shot well. Right into or onto the pads. And I'm seeing him like third time. He's middling the ball well. Or just not exposing his knee roll there in front of Sadakat, because he's trying to make a leg before here. But well played by Umar. That's something that the batsman should be able to read whenever the bowler is trying to attack the pad area for the particular batsman. That's what he's trying to save. And there we see it again. Same length, but towards the off stump this time. Keeping it pretty tidy here, Sadakat and Southern Punjab. I myself have been very impressed with the captaincy here with Hassan Ali, especially in the first session of the day. He's brought on the attack. He has kept the slips on. He hasn't let out the pressure, not even once. He's smiling, and he should be. His team seems to be in a better position. No is the call. Chance was there. A non-striking in. But Sadakat hadn't had enough time to make himself to throw it directly with some pace. So he did try his level best what he could do there. Well, that was a big chance there for Southern Punjab. Sarfaraz was almost halfway through that pitch, and he just needed to position himself to get that throw. He wasn't able to do that. Should have taken just a little bit of time to position himself to make that throw. There was nobody else there to collect it, so it had to be a direct hit, but not to be. Yeah, he could take 1 or 2 seconds, but I think mostly the batter would have won that race. Good pace, good energy, but height, that has been the case here on this surface. That has been saving the batters many of the times today. Sarfaraz has been out here for a while now, but even he is struggling a bit to middle the ball, trying to read the ball. The ball is coming in towards him, but all he's doing is just trying to save his pads, you know, trying not to get out and leave his team in more trouble. A bit lack of confidence in the Sindh batters today. Softly played, he wanted to get onto the strike in the next over, Sarfaraz. But pretty lucky. Risky, too risky. There you go, softly played, he was off. But he saw that the back foot point fielder is there. And a drama would have happened here. Dot ball to finish the over. 105 for 7 after 38. Pick up the bowler, Muhammad Abbas. 4 wickets in 12 overs for 32 runs. So the bowlers, they're chipped in. Absolutely. Led by Muhammad Abbas, Hassan Ali, Muhammad Sadakat and Muhammad Ilyas. All of them have gained 1 wicket each. And look at the economy. That's the key here, isn't it? It's just the runs haven't really come for Sindh, and that has given a lot of confidence to the bowlers. Dusting here, but Umar has replied well. And Sarfaraz, I think so, he's saying leave those deliveries, and Umar was just shaking his head. Yes, I will surely leave all such kind of deliveries. Enough time for him. Time is definitely there for them. All they have to do is make the most of it. Ilyas has been pretty accurate, pretty impressive today, and that's a huge relief for the captain as well. And again, not being able to open up his arms, the ball coming in. That's the area that most of the bowlers have targeted today.
and that's have proven very successful for them. Somehow, the Sindh batters have to break these shackles. They have to go for the over-pitch deliveries. They have to time the ball, start some good running between the wickets, a boundary here and there, trying to break the shackles here a little bit. They've been under pressure from the very, very start, and this session is not seeming to be any different. Yeah, that's better. No, really better. Well, I think so here that most of the time in this, it might be like in this session, they should be taking their time. To me, like, don't go for the boundaries. I think what we have seen here on the previous delivery, just leave those, spend your time, go for the tee, then make some plans. It might be that with the passage of time and the ball will be getting older, like it's in 39th over, it will be more easy for the batters by the session like after tee. As you can clearly see that there is no movement into the ball now. It's been going straight, and the batter like Umar, who has got 59 runs in the previous game, and both of these two teams are fighting here. Absolutely, and as the skipper of Southern Punjab, Hassan, would be wanting his bowlers to take these remaining wickets before the session ends. That would be the ideal result for Southern Punjab. They have put the pressure on. They have sent 7 batsmen back to the pavilion, and this is probably the last legitimate batting pair we have on strike here. And left again. Not a lot of movement there for Ilyas, but he's pitching it on, and that's another no ball. We had a no ball in the previous over, and that's another one. Ilyas overstepping there. So we're going to have to reload that one. Well, pacers like Ghulam Mudassar, we did see in the Sindh side, bowling lots of no balls, being a pacer, and here Ilyas just overstepping it. I think he was just putting in lots of force, lots of effort, and making a bit of mistake here, overstepping. Good delivery, well played. They're just keeping wicket to wicket, because we had seen that Umar has been leaving all of those kind of deliveries which are being towards offside. So that's why just keeping that line nearby to the off stump and wicket to wicket, which has been a good thinking from Ilyas. Well, he's being careful. He has seen what happened with the batsmen up the order today. They were all forced to play some shots and then not getting the result that they really wanted. They've been caught behind the wicketkeeper and in the slip. So he's just trying to be cautious, and that's very close again. Excellent ball from Ilyas to end the over, and it's 106 for the loss of 7 wickets.
पानी के वक्फे के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। पहला गेंद थोड़ा सा पड़ने के बाद अंदर की तरफ आया और विकेट कीपर भी इसे नहीं रोक पाए। इन द मीनवाइल हम टेस्ट क्रिकेटर यासिर हमीद साहब को एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं कमेंट्री बॉक्स में। शुक्रिया अमर। पहला बॉल डाउन द लेग और आजम ने ट्राई की थी लेकिन बॉल नीचे से निकल गई। 4 रन। सदाकत अच्छी बॉलिंग की इन्होंने। 8वां ओवर कर रहे हैं, 18 रन देके 1 आउट किया। थोड़ा सा पीछे गिरा इस मरतबा, सरफराज अहमद से खेलते ही दौड़ पड़े। थैंक यू। सरफराज अहमद जॉइंट हाईएस्ट स्कोरर बन चुके हैं इस वक्त। 27 रन इन्होंने बनाए। फवाद आलम ने भी 27 रन बनाकर वो आउट हुए थे। ये अच्छी इनिंग्स सरफराज की अभी तक। पिछले सारे मैचेस में हमने देखा इन्होंने अच्छा स्टार्ट लिया लेकिन उसको कन्वर्ट नहीं कर सके। आज इनके पास मौका है, कंडीशंस भी अच्छी हो गई बैटिंग के लिए। अच्छा बॉल पीछे आके बैक फुट पे खेले उमर। अच्छा एडवांटेज हासिल कर चुके हैं साउदर्न पंजाब। 111 पे 7 विकेटें ले ली और अभी पहले दिन का खेल जारी है। अभी टी तक मज़ीद 50 मिनट का खेल है, 55 मिनट का। अच्छा चांस है इनके पास इनिंग्स को रैप अप करने का। हमने देखा है कि बीच में लगता है कुछ गेंदें देखे कि शायद पिच अब आहिस्ता आहिस्ता सीधा हो रहा है, लेकिन कोई एक अदद बॉल ऐसा होता है जो थोड़ा सा मिसबिहेव करता है। जैसे लास्ट बॉल था, देखिए पढ़ने के बाद थोड़ा सा अपनी शेप को हेल्ड किया उसने, तो इसका मतलब ये है कि इतना आसान नहीं है, आपको ऑन द टोज रहना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आप फ्री फ्लोइंगली नहीं खेल सकते इस पिच पे, आपको फाइट करना पड़ेगा। जिस तरह हम देख रहे हैं सरफराज और शॉर्ट इनिंग जो फवाद ने खेली, बड़ी फाइटिंग इनिंग्स थी, क्योंकि कुछ एरियाज़ हैं वहाँ पे आपने शॉट्स नहीं खेलने। सिलेक्शन ऑफ शॉट बहुत ज़रूरी है इस पिच पे। जो आपके स्लॉट में हो या बैट बॉल हो, वो डेफिनेटली आप उसको हिट करें, और जब शॉट बनाने जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि सिंध ने सारे मैचेस ही रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम इस सीज़न में खेले हैं, तो हमने कुछ ओकेजन्स भी देखे कि जब सिंध को लगा है कि अब उनकी विकेट्स कम रहेगी, तो उनके जो बाद में आने वाले टेल एंडर्स उन्होंने अटैक भी किया है। उमर ने भी इस तरह की कुछ इनिंग्स खेली हैं, तो अब देखना पड़ेगा कि कितनी देर ये होल्ड करेंगे। बहुत अच्छी बॉलिंग एक बार फिर। सदाकत की अगर बात करें तो बड़े राइट एरियाज़ में बॉलिंग की है। ये अच्छा ओवर उनका वाटर के बाद। 111 पे 7। बैटिंग कार्ड अगर हम देखें तो 4 रन बनाकर खुर्रम मंजूर आउट हुए, 5 रन उमैर बिन यूसुफ ने बनाए, सऊद शकील ने 23 बनाए, 27 फवाद ने किए और 27 पे ही सरफराज अहमद नॉट आउट हैं, जॉइंट हाईएस्ट स्कोरर हैं इस वक्त 4 रन के साथ उबर, और सरफराज 27 पर मौजूद हैं। सरफराज अहमद रॉक सॉलिड हमें दिखाई दे रहे हैं। इसी नुक्ते को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मैं चाहूँगा कि यासिर भी इस पे अपनी राय का इजहार करें कि ये कैसा टैक्टिक होता है कि जब आपको लगे कि आपकी टेल स्टार्ट होने वाली है, और खैर ये विकेट्स पैकेज आ गया। जी हाँ, ये पहली विकेट गई और उसके बाद ये खुर्रम मंजूर इन्होंने एक कदम आगे लिया था, स्लिप में आउट हुए। ये बहुत अच्छी डिलीवरी, इसको ऑन खेलना चाह रहे थे साथ। फवाद आलम भी बॉडी से दूर खेले, पुश किया बॉल को। बहुत अच्छा बॉल एक बार फिर साइम को, लेकिन ऑफ स्टंप का उनको आइडिया नहीं था इस बॉल पे। सरफराज ने अच्छा एक रन लिया। ये देखें, बिल्कुल ये छठी स्टंप की बॉल थी जिसको उन्होंने खेला और आउट हुआ। ये
जो बोल्ड हुए थे लास्ट, कॉट बिहाइंड, सारे ऑलमोस्ट पीछे ही आउट हुए, स्लिप और कॉट बिहाइंड विकेट कीपर के पास। इलियास इन्होंने भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है, 1 विकेट अब तक हासिल की है, आगे बढ़ा हुआ ये गेंद था। तो जिस तरह हम बात कर रहे थे कि इसी ट्रॉफी में हमने देखा कि सिंध के जो बैटर्स हैं वो आखिर में आकर उन्होंने जब देखा कि विकेट ज़्यादा गिर गए, अटैक करना स्टार्ट कर दिया। स्पेशली एक उमर की हमें सेंचुरी भी याद है जिसमें काफ़ी अटैकिंग क्रिकेट खेली थी। सो क्या ये आज अगर इस तरह के मोड में ये चले जाएँ सिंध के बैटर्स, ये स्पेशली उमर, तो क्या कितना बेनिफिशरी हो सकता है इनकी टीम के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। वो जो इनिंग्स इनकी थी, बड़ी अच्छी इनिंग थी और उसमें इन्होंने काउंटर अटैक किया था, बहुत ही अच्छा बॉल। एक बार फिर इस वक्त बॉल बहुत स्विंग हो रहा है और मेरे ख्याल से उनके पास वो लग्जरी नहीं है कि कोई शॉट खेलें, कोई लिवरेज नहीं है। ये बॉल जिस तरह स्विंग हुआ और पीछे से भी जब टेक किया आज़म ने, उस वक्त तक स्विंग हो रहा था। तो राइट एरियाज में बॉल कर रहे हैं। यहाँ से अगर ये बड़ी शॉट्स खेलते हैं तो बहुत बड़ा दिल चाहिए उसके लिए। बहुत खुशकिस्मत रहे यहाँ पर बैट्समैन के बच गए, क्योंकि जब फील्डर के हाथ में गेंद था तो फ्रेम में भी नहीं थे इस वक्त रनिंग जो एंड पे जिन बैट्समैन को पहुंचना था। जी हाँ, लकी स्केप उमर के लिए। बहुत क्लोज था फ्रंट फुट, लेकिन मैटर नहीं करता। अगर रन आउट हो जाते तो आउट हो जाते। बहुत टाइम था फील्डर के पास। उस तरह की जो गलतियां हैं वो नहीं करनी पड़ेंगी। बहुत अच्छा शॉट, लेकिन कोई रन नहीं, सीधा फील्डर के हाथ में। अब तक ये दूसरे सेशन का खेल जारी है और कुछ देर के बाद गेंद में या तो ऑफ द सीम या ऑफ द एयर हमें कोई मूवमेंट देखने को मिली है, जिससे ये एक बार एक मैसेज, एक सिग्नल जाता है कि आप एज अ बैट्समैन रिलैक्स नहीं हो सकते इस पिच पे। आपको बहुत ही नपीतुले अंदाज में मोहतात होकर खेलना पड़ेगा। और सदर्न पंजाब के बॉलर्स ने लाइन और लेंथ भी बड़ी भरपूर पकड़ के रखी है। एक बार फिर स्पॉट ऑन मोहम्मद इलियास। अच्छा ओवर, अच्छी फील्डिंग गली में फील्डर की। 114 पे 7। सरफराज अहमद इस वक्त सबसे अहम कड़ी होंगे सिंध की बैटिंग की। 28 रन पर खेल रहे हैं और जिस तरह अभी यासिर हमीद साहब बात कर रहे थे कि इनको स्टार्ट तो मिले लेकिन कोई बड़ा कन्वर्ट नहीं कर पाए, तो आज एक ऐसी इनिंग्स रिक्वायर्ड होगी, कुछ बड़ा करें। जी, सरफराज ने जितनी भी इनिंग्स खेली है यहाँ पे स्टार्ट उन्होंने लिया है और उन पे ड्यू है इस वक्त उनकी एक बड़ी इनिंग्स सिंध के लिए। द मोस्ट सीनियर प्रो हैं, पाकिस्तान के साबिक कप्तान भी रह चुके हैं और डेफिनेटली वो अपने पार्टनर को भी साथ खिलाना चाहेंगे। और इनमें एबिलिटी है उम्र में कि ये एक इनिंग्स खेल सकते हैं, साथ दे सकते हैं सरफराज को। और इस टाइम मेरे ख्याल से सिंध की टीम को ज़रूरत है इस तरह की इनिंग्स खेलने की। जो डैमेज कंट्रोल है उसमें है इस वक्त, और उससे निकलने के लिए थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाना पड़ेगा एक आध बैट्समैन को। एक बार फिर अच्छी बॉल। सदाकत के पास रफ्तार इतनी नहीं, लेकिन लाइन और लेंथ बहुत अच्छी है। एक ही जगह पे बार बार वो उसको हिट कर रहे हैं और यही वजह है कि बहुत ही इकोनॉमिकल अब तक स्पेल किया, 1 विकेट भी ली और कहते हैं कि हासिल ही किया, कुछ दिया नहीं ज़्यादा। तो खटक रहे होंगे इस वक्त सिंध की टीम को ये बॉलर सदाकत के जगह नहीं छोड़ रहे अपनी। इस बार अटेम्प्ट किया था आउटसाइड ऑफ स्टंप, लेकिन
उमर ने जाने दिया। ये और स्विंग भी अच्छा कर रहे हैं, आप की बात सही कह रहे हैं आप, और जो छोड़ के बॉल करते हैं वो स्विंग हो रहा है, और जो पटक के करते हैं वो थोड़ा सा सीधा रह रहा है। वो बॉल भी है इनके पास जो ये आके बैक बेंड करते हैं, जिसपे जो बॉल हार्ड लेंथ पे करते हैं। अच्छी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। एक बार फिर अच्छी बॉल सदाकत की, अच्छा छोड़ा उमर ने। यासिर, कितना इम्पोर्टेंट है एज अ बॉलर आपके लिए, स्पेशली जब एक टेल आ जाए और एक उम्र जैसे खेल रहे हैं, ठीक है कुछ हद तक बैटिंग की सलाहियत रखते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खेलें, ना कि वो गेंद को छोड़ें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप बैट्समैन को खिलाएं, बल्ले पे बॉल लगे। लेकिन इस वक्त अगर हम सदाकत की बॉलिंग देखें तो बहुत अच्छी लाइन पे कर रहे हैं, और उमर जो है वो बीट हो रहे हैं, और साथ में खूबसूरत बॉल और ड्रॉप कर दिया। नीचे था, एज हुआ, उसी एरिया में बॉल की। जी हाँ, इसी की हम बात कर रहे थे कि खिलाएं, और अगले गेंद उन्होंने खिलाया, थोड़ा उसको फॉरवर्ड पुश करने पे मजबूर किया। देखिए कितना अच्छा लेंथ था, और हैंग करके अपने बैट को बाहरी किनारा, और जो फर्स्ट स्लिप पर आगा सलमान थे, आई थिंक इन स्टैंडर्ड पे कैच होना चाहिए था, थोड़े लेजी लगे। जी हाँ, बॉल जो है उनके आगे डिप कर रहा था, और डाई नहीं हुआ। बॉल की जो हाइट थी वो इवन थी, शायद उनके हाथ आगे चले गए। 114 पे 7। बहरहाल ये एक ऐसी विकेट जो कि कुछ देर तक खटकती रहेगी। अगर उमर ने वो ही जहराना अंदाज अपना लिया और रन्स कर गए तो फिर ज़्यादा खटकने लगेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता क्या है कि जो टेल जिसको आप समझ रहे होते हैं वो मुश्किलात खड़ी कर देती है। इलियास अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे। सरफराज अहमद ने इसे चलते हुए अंदाज में खेला स्क्वायर लेग की तरफ, लेकिन अब की बार एक ही रन हाथ आएगा। या फिर मोहम्मद उमर इम्तिहान के आगे पिछला पूरा ओवर मोहम्मद उमर ने खेला। स्ट्राइक रोटेशन बहुत ज़रूरी है, और सरफराज को थोड़ा सा अब रियलाइज़ करना पड़ेगा कि इनके साथ 7 आउट हो गए, तो इनको चाहिए कि स्ट्राइक अपने पास रखें, क्योंकि अगर एक विकेट और गिरती तो फिर ओपन हो जाएगी बिल्कुल जो टेल है। उमर का तो हमें पता है थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद इब्रार है और गुलाम मुदस्सिर, जो बिल्कुल ही उनकी बैटिंग इतनी ज़्यादा सूदमंद नहीं है। तो सरफराज को चाहिए जो स्ट्राइक है अपने पास रखें ज़्यादा। अच्छा, काफ़ी मदद मौजूद थी फास्ट बॉलर्स के लिए, तो इस वजह से हमने को बाउंसर नहीं देखा है, शायद रिक्वायरमेंट नहीं थी। क्या बाउंसर यहाँ पर सरप्राइज कर सकता है, स्पेशली उमर जैसे बैट्समैन को? अच्छी रनिंग इस बार, और ये ओवर थ्रो के 4 रन और हो जाएंगे तो ये 5 रन। बिल्कुल अब्बास जो थे वो बैकअप में नहीं थे, और एक वाइल्ड थ्रो जो कि थोड़ी सी विकेटों से दूर थी। एरर्स हो रहे हैं इनसे फील्ड में, एक रन आउट भी मिस किया, और इस बार 5 रन। ये आज के दिन का दूसरा ऐसा चौका हुआ है। फाजिल रन्स हुए यहाँ पे, और बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि आप स्टांस अपना फर्म रखें, और इस सिचुएशन में भी जो है वो
अपने आप अपनी तवज्जो को मरकूज रखें। सरफराज अहमद एक अहम इनिंग्स खेलते हुए सिंध के लिए, और खतरनाक अंदाज में खेलने गए थे, इसको हम कहते हैं छेड़खानी करने गए थे, लकी रहे कि सरवाइव कर गए। बाहर का बॉल था और इतना अच्छा शॉट नहीं था ये वाला। लकी रहे, एज नहीं हुआ। सरफराज जो हार्ड वर्क है, अर्ली हार्ड वर्क इन्होंने कर लिया। अब यहाँ से अपनी इनिंग को किस तरह ट्रांसफॉर्म करते हैं। खूबसूरत शॉट इस बार सरफराज का, बैकफुट पे विट मिली और बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन। बहुत ही दिलफरेब स्ट्रोक था, थोड़ी सी विड्थ मिली और बिल्कुल आंखें चमक उठी सरफराज अहमद की। इसे स्क्वायर ड्राइव किया उन्होंने, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक सरफराज अहमद का। थोड़ा सा लालच देना चाह रहे थे इलियास अहमद, लेकिन इस जो मौके को हाथों हाथ लिया सरफराज अहमद ने। और थोड़ी सी गलतफहमी का शिकार हुए, रन आउट की कोशिश की, लेकिन बैट्समैन बआसानी वापस पहुंच गए। सरफराज अहमद का ये है कि थोड़ा चल के खेलते हैं, इस बार फिर इस तरह से खेले। ये लास्ट बॉल थी ओवर की और शायद वो सिंगल लेना चाहते थे। रियलाइज कर लिया उन्होंने कि अब स्ट्राइक अपने पास रखनी चाहिए, लेकिन रन मौजूद नहीं था। 124 पे 7। हसन अली अटैक में वापस आए हैं, आउटसाइड ऑफ स्टंप। थोड़ी लालच देने की कोशिश की उमर को, लेकिन अब की मर्तबा उमर ने कोई ज्यादा उस बहकावे में आए नहीं हसन अली के। यहाँ हसन अली वापस आए, 24 रन देके एक खिलाड़ी आउट किया, एक विकेट उन्होंने हासिल की है। एक बार फिर आउटसाइड द ऑफ स्टंप, कट खिलाना चाह रहे हैं उमर को, लेकिन उमर जाने दे रहे हैं बॉल को। ये हसन की जो एक विकेट उन्होंने ली, खुर्रम मंजूर को आउट किया। बैकअप लेंथ डिलीवरी थी, खुर्रम मंजूर ओपन हुए। ये अच्छा गेंद था, थोड़ा वाइडर ऑफ द क्रीज, एंगल किया अंदर की तरफ, और उमर को फोर्स किया कि वो इस शॉट को खेलने, हल्के से छोटे ड्राइव के लिए गए, लेकिन पूरी तरह बीट हुआ। ये देखिए बहुत खूबसूरत बॉल हसन अली का। जी हाँ बिल्कुल, राइट एरियाज, इसी पे प्रिसिस्टेंटली हिट किया है साउदर्न पंजाब के बॉलर्स ने, और ये इनकी इस इनिंग्स में इनकी बॉलिंग की जो है वो खासा रहा है कि इस एरिया में हिट किया, और 7 आउट किए इसी वजह से। और ये बेस्ट लाइन है इस पिच पे, पहले दिन की पिच है, विकेट पे घास मौजूद है, फ्रेश पिच है। जो पिच की फ्रेशनेस है उसका भरपूर फ़ायदा उठाते हुए सेंट्रल पंजाब, साउदर्न पंजाब सॉरी। और हैरत अंगेज बात यह कि बॉल गुजरने के बाद बैट हैंग किया मोहम्मद उमर ने, शायद इस वजह से थोड़े बच भी गए कि कोई बाहरी किनारे का एहतमाल नहीं रहा। शॉर्ट बॉल हुई, लेकिन थोड़ी सी ड्रैग हो गई लेग स्टंप की तरफ। सरप्राइज करना चाहते थे शायद हसन अली इस शॉर्ट बॉल के साथ। जी, और अगर इनको बिल्कुल स्टंप्स के बीच में खिलाएं तो नॉट बैड आइडिया। उनको अगर
बल्ले से खिलाएं, थोड़ा सा बल्ले से खिलाएं, उनको फील आए कि बल्ले पे बॉल लगे, फिर उसके बाद वो बॉल ढूंढने जाएंगे। एक ही लाइन पे अगर आप बॉल करते हैं वो प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं टाइम्स आप। तो बॉल हसन अली की ये क्वालिटी है कि वो मिक्स करते हैं अपनी चीज़ों को। इस बार फिर आउटसाइड द ऑफ स्टंप एक और ओवर जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ 124 पे 7। फवाद आलम, सऊद शकील, खुरम मंजूर तीनों पवेलियन में बैठे हैं आउट होके। मोहम्मद अब्बास आए हैं मीडिया सेंटर एंड से, बॉलिंग में तब्दीली। ये आपको इस्लामाबाद और के खूबसूरत नज़ारे, नवाही इलाकों के नज़ारे आपको देखने को मिल रहे हैं साथ साथ। मोहम्मद अब्बास एक बार फिर से अपने एक नए स्पेल का आगाज़ करेंगे। सरफराज अहमद ने इस बार पिछले कदम पर रहते हुए इसको खेला, एक सिंगल बासानी हासिल किया। अब देखना पड़ेगा कि अब्बास और उमर का जो ये आमना सामना है, ये टाकरा, ये किस तरह का रहेगा। बड़ी नपीतुली बॉलिंग के साथ अब तक मुश्किल इम्तिहान में डाल के रखा है सिंध के बल्लेबाजों को मोहम्मद अब्बास ने। आगे किया बॉल और कंफर्टेबली खेले उमर अगले कदम पे आके। नहीं, जिस तरह आप बात कर रहे थे उमर की, उमर बिल्कुल खेल सकते हैं एक बड़ी इनिंग जिसमें उनकी नेचुरल जो गेम है वो यही है कि वो बॉलर्स को आड़े हाथों लेते हैं, बड़ी शॉट्स खेलते हैं। यहाँ पे एक मौका कि वो अब्बास पे शॉट्स खेल के अपना कॉन्फिडेंस हासिल कर ले, लेकिन शायद इतना वाइज ना हो, क्योंकि अगर वो शॉट मिस टाइम होती है, विकेट जाती है, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा सिंध को। तो इस तरह वो खेल रहे हैं, तो आई थिंक इट्स अ बेटर वे टू प्ले। क्योंकि सीनियर बैट्समैन उनके साथ हैं सरफराज अहमद, तो शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि सरफराज ने अभी उनको मना किया हो कि अभी आप जो है मुझे सपोर्ट करें, ना कि आपको बड़ा शॉट खेलें, क्योंकि मैं अभी मौजूद हूँ क्रीज के ऊपर। ये भी शायद एक वजह हो सकती है कि अब तक उन्होंने खामोश रखा हुआ है। इस बार हल्का सा फ्रंट फुट पर आकर इस गेंद को दिफाई अंदाज से रोका है। तो ये जो खेलने का अंदाज है उमर का, ये बता रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रोइंग इन कॉन्फिडेंस, कि उनको एतमाद आ रहा है, उनका जो फ्रंट फुट है वो निकल रहा है आगे की तरफ। पहले वो बिल्कुल क्रीज पर खड़े खड़े खेल रहे थे, और वो जो एक बड़ी मशहूर बात है कि वो कहते हैं कि क्रीज पर आप जितना वक्त गुजारेंगे उतने आप अच्छे होते चले जाते हैं। तो वो हमें उमर की बैटिंग में भी आहिस्ता आहिस्ता देखने को मिल रहा है। इस बार आउटसाइड ऑफ स्टंप, बिल्कुल भी खातर में ना लाए इस गेंद को। हालांकि स्लिप में खड़े जो फील्डर हैं उन्होंने क्लैप किया, बैकअप करने की कोशिश की अपने फास्ट बॉलर को कि आप इसी लाइन और लेंथ पर बॉल करते रहिए, कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाएगा बैट्समैन। अब्बास अभी तक 4 विकेट्स हासिल कर चुके हैं। उनके मेन स्ट्राइक बॉलर जिसके लिए ये जाने जाते हैं, उस रोल को पूरी अच्छी तरह निभाते हुए। और इख्तिताम पजीर हुआ 125 पे 7। सर
तेज़ी से एक रन लिया, एक बार फिर थोड़ा रिस्की था, देखना होगा कितना क्लोज था ये, अगर हिट हो जाता तो। हसन खान इस बार हल्का सा पुश किया है कवर्स की तरफ, यकीनन एक रन तो हाथ आएगा ही, वो बड़ी नज़ाकत से गिरे फील्डर इस मरतबा, हो जाता है खेल में कभी कभी। बहरहाल सिंध का स्कोर रमके रमके 127 पर जा पहुंचा है 7 विकेटों के नुकसान पे। सरफराज 35 पे, उमर 11 पे। ये पार्टनरशिप आहिस्ता सरकने लगी है अब, बल्कि खटकने भी लगी है सदरन पंजाब को, क्योंकि जितने ज़्यादा ये रन्स आगे बढ़ेंगे उतना ज़्यादा ये मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। बॉल किया, खूबसूरत, बहुत ही जबरदस्त, लेंथ पीछे देखी तो आंखें भर आई और बल्कि चमक उठी और खूबसूरत स्ट्रोक लगाया यहां पर मिड विकेट की तरफ सरफराज अहमद ने। शायद इस गेंद का बहुत मुद्दतों से इंतजार था सरफराज को। खूबसूरत शॉट, बहुत जल्दी पोजीशन में आए, काफ़ी टाइम मिला उन्हें ये शॉट खेलने के लिए। सरफराज अहमद जो कि कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हुए अपनी इनिंग्स में 39 पे पहुंच चुके हैं और अच्छी इनिंग खेल रहे हैं। एक बार फिर पैड्स पे आया सरफराज ने, इसे खूबसूरती से खेल दिया है ऑन साइड पे। एक रन मुकम्मल, क्या दूसरा भी लेंगे? नहीं, एक रन पे ही इत्तफाक किया क्योंकि फील्डर जल्दी पहुंचे थे बॉल के ऊपर और बाज रखा दूसरे रन लेने से। 132 हो चुका है स्कोर, उमर 11 पे और सरफराज अब 40 पर जा पहुंचे हैं। और हसन अली ने तो एग्रेसिव लेंथ पे बॉल करने की कोशिश की इस ओवर में अब तक, लेकिन सरफराज उस चैलेंज के लिए तैयार थे। अच्छा गेंद, थोड़ा सा टेल इन हुआ लेकिन उमर ने इसे जाने दिया विकेट कीपर की जानिब। जी ये पार्टनरशिप अच्छी चल रही है, 37 रन हो चुके हैं 71 बॉलों पे और जिस पोजीशन में इनके 7 आउट हो गए थे तो काफ़ी क्रूशियल है ये, थोड़ा सा रिस्पेक्टेबल टोटल की तरफ जा रहे हैं। सरफराज की इनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है जिनके पॉइंट ऑफ व्यू से, उमर उनका अच्छा साथ दे रहे हैं, बहुत अच्छा खेले इस बार। इस तरह से 46 ओवर का खेल खत्म हुआ, 132 स्कोर 7 विकेटों के नुकसान पे, उमर 11 पे, जबकि सरफराज अहमद 40 रन पर मौजूद है। Sarfraz Ahmed standing tall for his team right here. And that's hooked that one. It's going very well for Sarfraz at the moment. Good running. A bit of a deflection from the bat. Bass has been brought back into the attack. He's been very successful in the morning session and then again brought back into the second session just before the tea. Hassan, the skipper of Southern Punjab, would be hoping to get a breakthrough here. Very well played by Sarfraz towards the leg side. The ball is racing towards the boundary. Very well fielded. They were able to take 3 runs, so that's very intelligent batting there from Sarfraz. Yeah, that's good thinking. Just to keep rotating your strike if the boundaries are hard to come.
And I think that by taking runs, they are making a bit more sensible batting. Lesser chances of giving chance to the opponent side of throwing your wicket away, rather than going after the bowler for a high-fi and might be some fiery strokes. This is really good going. Good thinking by Sarfaraz here. Hanging his bat, look at the bounce and carry. Excellent. That ball really kicked off. And good take. Muhammad Abbas, 4 wickets. Really an impressive one. Recently back from the county cricket, having immense sort of experience at national, international level. And he's applying here. A lot of experience and a very smart cricketer. Mohammad Abbas has been very successful here today for Southern Punjab and has been brought back into the attack to do just that, create problems for the batsmen. Umar has played about 54 deliveries now, and he's standing there. He knows what his role is. He's anchoring this pretty well, standing there with Sarfaraz, who's been scoring runs pretty easily now. We have seen him coming down the pitch, taking the charge towards the bowlers, and I think that's the reason why Hassan has brought Abbas in, because he's been almost unplayable today. Yes, you're right. Abbas is really pitching that ball in the right areas. The climate has helped him. And I think that fielders, they replied well. They took every opportunity which has came into their side. And as spoken earlier, 59 runs against Southern Punjab. Umar has his best score here. So I think so that he's facing the bowlers well here from Southern Punjab in this game, in the previous game. Absolutely, and we're not seeing a lot of movement from the ball now. Well left that one. And that swung very late towards the wicketkeeper. Very well collected at the end of the 47th over. It's 137 for 7. Well, good gentle breeze. These are the signs that winter is knocking. Pakistani flag. That can tell you a lot about the wind that the bowlers and the batsmen are facing today. That's a good measure of it. The skipper is into the attack, Hassan Ali. Very well played by Sarfaraz. I think there was a bit of a thick edge on that ball. Very well fielded at the boundary. Fielding has been really good, up to the mark from the Southern Punjab today. They've showed energy, they've showed dedication. And that has really troubled the batsmen as well, because they haven't been able to rotate the strike however they liked today. And the result is in front of you. They've lost 7 batsmen in no time. But this partnership could be very, very important, very crucial for the Sindh batsmen today. Sarfaraz is standing tall for his team. He's on 47 from just 52 deliveries, so that's a good strike rate. Very healthy strike rate for him. Played with soft hands and a quick run there. Easy as it comes from Sarfaraz. And he is the key batsman. He's the key wicket that Hassan would be looking for. That's why his mainstream bowlers are into the attack. He himself has brought him, himself into the attack here. I think he's twisted his ankle there. That does not look good. Hassan Ali is limping. I think they've asked for the physio. He's running on to the field now. It looks like Hassan Ali is in pain and he's limping. He can't walk properly. I think he must have twisted his ankle. From what we can tell, he's holding on to it. Yes, exactly. But his face is showing that it's not that much threatening, because we normally used to see that face is giving you the better picture when you're in pain. I hope so that it's not that threatening
for him, for his side. Being a captain, you have to lead, you have the plans. But that's been fair enough, I think so, that only a magic spray will surely work for him. Clearly see that when physio is just touching those areas, ankle side, he's not feeling any sort of pain. So that means he's okay. We certainly hope so. It's been a pleasure watching Hassan bowl today. He's been accurate, he's been very good. He's brought a lot of energy to the field, and he's captaining the side today, so that makes a lot of difference as well. He's not flinching very hard, so hopefully this is something that can be dealt with within the game. We wouldn't want him walking off the field for the second time now. Yeah, 13.2 overs, 4 maidens for him, 1 wicket, 34 runs. What Hassan has served his side today. First day, second session. I think that's been pretty fair enough. He's okay, just taking his time. But this has been wonderful day for bowlers. That they enjoyed bowling here. They certainly have. The conditions have helped them. It's been cool, it's been windy, a lot of swing, a lot of movement. They have enjoyed the conditions very well. On the other hand, the batsmen were not so lucky today. Some brilliant fielding efforts as well. We are facing a bit of a delay here. The skipper of Southern Punjab has twisted his ankle and is being treated on the field right now. He's been surrounded by his teammates. He did walk off once before. He wasn't feeling very well. Took a bit of time, then came back charging. The Sindh batsmen have not been able to build frequent partnerships to get to that big total that they were probably hoping to get in this day 1 of round 7. But they have a chance to rebuild here, courtesy of this very well played and very well built innings by Sarfraz Ahmed. His experience has come in handy. He did struggle a bit at the start, but he was lucky and he played very well. He dealt with the swing, with the movement, and he made sure that he held his stance. He's on 48 now for 53 deliveries, and with him on the non-strikers end was Umar, who has faced 56 deliveries and has only scored 11 runs, but I think he would be okay with that. The plan would be just for him to anchor that one end so Sarfraz can keep the scoreboard ticking. Muhammad Umar has come in at a time when Sindh looked in trouble. They've just lost their skipper at the very start of the second session. And we can see Hassan is up and running. As it just predicted, that didn't look a lot serious. So he's back in action. Yes, it's the call, but hadn't collected properly. And he's looking on to his boot. There is some slippery. Did I miss something? Why are they all slipping all of a sudden? Well, I hope he's okay there. The youngster. Yeah, exactly. Sadakat has bowled 9 overs. Yes, there you go. He was stuck on the ground there in the grass. Though that he's just changing the field position, and Hassan was not happy with the effort that what Sadakat has made at back foot point. And now he's been sent deep just to protect that boundary. Long leg. That's a good move by the skipper. Don't want to keep the pressure on to him. That's been played towards the leg side by Sarfraz. They're looking for 2, but they're only going to settle for 1 here. That's a good throw, well collected by the wicket-keeper. Sarfraz now on 49, just 1 run away from his 50. Yes, exactly. Let's see that how he will be coping up at his own non-striking end. Umar on 12 runs in 57 deliveries, making
A good move here for himself, for his side. Look at that, how eagerly he's just looking on to the fielders. Long leg position. Hassan would just send back one at defined leg, pretty wide-ish. He attempted there, but towards offside, off target. Well, importantly, the last wicket fell at 95, and they are putting it all together. 47 runs in 83 deliveries, so strike rate is not that bad. Not at all. Majority of the runs have come from Sarfaraz bats, but Umar is standing there for his team, making sure they don't lose another wicket, and that was pretty close by Hassan. Very well bowled. And an excellent ball to finish the over. At the end of the 48th, it's 142 for 7. Muhammad Abbas will be continuing from the media end. He's been very successful today. They'd be looking to get that wicket of Sarfaraz because he's been standing there for a while now. He's batting on 49. And again, quick run there, and that brings up the 50 for Sarfaraz Ahmed. That's a brilliantly played innings. Very well built, with a healthy strike rate, with 6 fours and only 55 balls. A lot of appreciation from the dugout for Sarfaraz Ahmed here. Yes, exactly. Same class as Abbas being a bowler and Sarfaraz being a batter. They are facing against each other. Both they have done a good job for their sides today. Not only individual, but the team effort. This is third time Sarfaraz has scored 50 in this season, 2022. The previous one was 78 versus Central Punjab at Rawalpindi. Then 70 not out against Northern at Faisalabad. And this is third time he is crossing 50 runs mark. Second time here at Rawalpindi, and third for the Quaid-e-Azam trophy. He has been the pillar for Sindh batting lineup today. They've looked out of depth today, but not Sarfaraz. Well bowled and well defended by Umar. He's not looking to score a lot of runs there, Umar. He knows that the score is coming from Sarfaraz's bat, so he's been very defensive. His defense has been strong. He hasn't took a lot of risks. We've seen him leave a lot of balls as well. So that's smart cricket from Umar. This 4-day game really tests your temperament to stay out there, and he's done exactly what he was asked to do. Yes, I agreed with your point, because normally as this longer format is being played like session to session, one for the over. Here for Abbas. And this was the need of time. Like I've spoken earlier, 7 down at 95. Your team requires you to stay at the crease along with your senior partner Sarfaraz, who has been good among the runs in the past. ICC Champions Trophy under his belt, being a captain. So he has got experience. So he needs someone from the other end to keep heads together, go for like it's 49 runs partnership. If they can add up like 110, 120 today, by the end of the day, I think the job would be done for the day. That should be the target for Sindh today. You know, they don't want to go all out on the very first day. Obviously, they would want this partnership to go on longer. Sarfaraz would want Umar to stay out there with him until the end of the day and add as many runs as they can. Oh, that was edged towards the slip fielder. Fell short
and that is raced towards the boundary. A bit of a risky shot there from Umar. We have seen him play a few shots and leave a few as well. Took a bit of a risk there, and it has paid off. Played it late, short bit of down. He was defensively, he wanted to play defensively, but took the edge. And though I think so that he was with a soft hand, that's why didn't carry. Did a slip corner, slight bit away from the fielder. Again, going on the defensive. Good solid defense technique from Umar. That's a good ball to end the over, and at the end of the 49th, it's 148 for 7. Played that towards the leg side. Sarfraz has been really good, and most of his runs has come towards the leg side, we have seen. And that's a brilliant shot. Very stylish and very in control. He can see the bounce, he can see the ball rising, and that's been pulled. And that brought up the 50 for Sarfraz. And that was 59th first class 50 for Sarfraz overall his career. And I think that that ball hurt him onto the finger. He's having a bit of the magic spray. Well, being a tall bowler, I think you need to face such kind of activities, because when you are bowling, you've been fiery to the batters, so it replies sometimes really painful. Only hoping that magic spray does its magic for Muhammad Umar here, who is supporting Sarfraz very well on the other end. Not a lot of runs, but he's fulfilling his role. Well, Sarfraz needs to stay there, because looking on to the bowling, like last 30 to might be 40 minutes, the ball and the pitch has been so easy for batting. Like that, Umar has spent 64 deliveries, which means almost 10 overs. So this shows that last 10 to 15 overs, this pitch is behaving in a proper good way for the batters, and they can really enjoy batting here now, but watchfully. A bit of a foot movement there from Sarfraz. Wanted to play it towards the extra cover area, and Hassan Khan cutting the ball off. And like you said, Ijaz, it's been easier to bat in this second session as compared to the first. The ball is coming very nicely onto the bat. And that's why Sarfraz has been able to keep that healthy strike rate, not play a lot of dot balls. Well, we're just wanting to go towards onside. Pretty lucky that the ball hadn't went up, because he tried to go towards onside, but result has been different. Wanted to hook that one, wasn't able to do that. An early shot from Sarfraz. Haven't seen a lot of those from him. He's been timing it very well, at least for the last 20 to 30 balls. Oh, played that one beautifully towards the leg side, flicked it. It's gone straight to the fielder. He's gonna cut it off. That adds 2 runs to the total. And that takes Sindh to 150 at during the 50th over of the game. But the lowest total here in this season is 185. Balochistan against Central Punjab. It was in round 2, though that Sindh is really like 25 runs, 35 runs behind. So they need to carry that momentum here for themselves, if they want to go there. Southern Punjab has scored 278, which has been the lowest for them
in the third round against Sindh. Well, that's played beautifully from Sarfraz. Judged that pretty well. Excellent timing, and the ball will rightfully race towards the boundary. And that's some sweet shot from Sarfraz. You bet you want to see that again. At the end of the 50th over, it's 154. Yeah, width was offered, and Sarfraz availed it properly. Look at that beauty. He just kept that ball down. Hadn't played up into the sky. Just sweet timing into the point boundary. 50 overs gone. 154 for 7. Good luck, shabash. Well, that's a sight we haven't seen today. It's the spinner coming into the attack. Hassan Khan has been brought in by the skipper Hassan Ali. We have seen Ball coming onto the bat pretty nicely. 23 years of age. He's played 13 matches with 26 wickets with an average of 34. He has been very active in the field until now. We have seen Hassan Khan, and now it's time for him to contribute with the ball. Not a lot of spin in this field from what we can see right now. Let's see what he can produce. Yes, let's see. And it's a good time to touch or check the spinner here. He has got one slip, forward short leg. Then Silly's coming up. Mid on. Short mid wicket. He has got point, cover, mid off. Quicker delivery. And well played. Well, mind you, Umar is playing good. Well, he took his time. He's read the conditions well. And he's built up a confidence as well to go after a bowler. Although Hassan is keeping the field very tight around the batsman. The square leg fielder. Absolutely no room for Umar to make a mistake here. 3 catchers waiting for any sort of thing from the bat. But good over, good start from Hassan. It's 51 gone, 154 for 7. सर सर Oh, that's a brilliant ball. Salman Ali Agha on his very first ball. And he's got the success, and he's got the big man. He's got the key wicket of Sarfraz Ahmed. The plan has worked brilliantly from the southern Punjab here. Sarfraz is not happy. He has to walk back. And another brilliant catch from southern Punjab. And another success. Yes, he was offered a drive here. Uncomfortable in driving. Couldn't hold. It just nicked away. 56, well played. But still needed him to go further. Sarfraz departs and umpires are going for the tee. As Sarfraz just making a bit of the gesture that something was there. He was about to drive, but edged away and lost his wicket. So that is 8th wicket down for Sindh side at 154. And session has been closed for the tee. And I think again this session belonged to the bowling.
Absolutely. We saw one healthy partnership between Sarfraz and Muhammad Umar. A lot of runs scored on the leg side. And Sarfraz was brilliant in this session. He's ran brilliantly. He's played some beautiful shots. Some beautiful balls there as well. A very healthy competitive session all over, but Southern Punjab got what they wanted. They got the wicket of the big man, Sarfraz Ahmed. This was a ball very well caught on the slip. Southern Punjab would be happy walking off with 8 wickets in their pocket. Looking at the batting card, it hasn't been very impressive from Sindh this morning. Only 3 batsmen, 4, have been able to reach double digits, and one of them is still standing. It's Muhammad Umar. It's 16 not out. Sarfraz had to walk back after a brilliant innings of 56 from only 62 balls. And we've got only 2 more batters left. Muhammad Abbas, the pick after bowler, 4 wickets in 15 overs. Then Hassan Ali, Muhammad Sadaqat, Muhammad Ilyas and Salman Ali Agha sharing 1 wicket each. There you go, 26.1 overs been bowled, 4 wickets in 83 runs. Over it, good enough. And this is where we are standing before tea. And we have got the tea break, 15 minutes. And we will be coming live again for you.
अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। चाय के वक्फे के बाद एक दफ़ा फिर रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से आपको खुशामदीद कहते हैं, जहां पर सदरन पंजाब और सिंध की टीमों के माबैन क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी 2022-2023 के पहले दिन का ये खेल जारी है। 7वां मरहला है और सिंध की बैटिंग जो है आज वो मुकम्मल तौर पर अब्बास की बॉलिंग के ज़ेर अताब रही। मोहम्मद अब्बास ने ज़बरदस्त बॉलिंग की और सिर्फ सरफराज अहमद एक ऐसे बैटर थे जिन्होंने कुछ यहाँ पर मज़ाहमत की, 50 स्कोर की और ऐन चाय के वक्फे से कुछ देर पहले आउट हो गए। 154 पर 8 खिलाड़ी आउट हैं। मेरे साथ कॉम बॉक्स में हैं अहमद नजीब सत्ती। जी, बहुत कारगर पहले 2 सेशन रहे सदर्न पंजाब के टीम के लिए। उनके बॉलर्स ने बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया। दोनों सेशंस में सिर हासिल उन्होंने बॉलिंग भी की और विकेट्स भी हासिल की। अबरार और उमर दोनों बैट्समैन जो इस वक्त मौजूद हैं, ख़ासतौर पर उमर ने और अबरार ने हमने पहले भी देखा है कि कुछ कीमती रन्स नीचे लोअर ऑर्डर में आके बनाए हैं क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में। क्या अब वो जारहाना खेल उस तरह का पेश करेंगे कि उनको पता है कि अब कोई सीनियर बैट्समैन नहीं है, या फिर वो थोड़ा वेट एंड वॉच वाली गेम करेंगे? मेरा ये ख्याल है कि ये पिच इस तरह का है कि कुछ ना कुछ देर बाद आपको एक अच्छा गेंद पड़ जाता है, तो बेहतर ये है कि जो भी आपके पाले में, आपके हसार में गेंद आ जाए, उसको डिस्पैच करने में कोई कबाहत नहीं है, क्योंकि समहाउ आपका सिर्फ विकेट पे खड़े रहने का कोई मकसद नहीं रहेगा कि अनलेस कि आप कोई रन्स भी बीच में ऐड करें, क्योंकि सिंध को बहुत ज़रूरत है। समहाउ मुश्किल टास्क ज़रूर है, लेकिन अगर ये 200 तक पहुंच जाए किसी तरह से, तो कम से कम उस मैच के अंदर रहेंगे। और आगा सलमान के हाथ में गेंद है, प्रोसीडिंग को स्टार्ट करेंगे। पहला विकेट टू विकेट। आगा सलमान बॉल को टर्न ज़्यादा नहीं करते, इनका बॉल स्ट्रेट रहता है। इनका हथियार भी वो है जो स्ट्रेटर बन रहता है ऑफ स्पिन में। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। लंच तक 71 पर 5 आउट थे, फिर लंच के बाद 83 रन्स का इजाफा हुआ, 154 पर 8 हो गए और चाय के वक्फे से पहले 3 गेंदों का खेल बाकी था। आगा सलमान एक अहम विकेट हासिल की, सरफराज की स्लिप में जैन ने उनका कैच लिया और बहुत अच्छी कोशिश इस दफ़ा हसन की, लेकिन वो इसको रोकने में कामयाब नहीं हुए और इस तरह ऊपर बुला लो, ऊपर बुला लो, ऊपर बुला लो। आगा सलमान जो है, ये चूंकि स्लाइडर इनका बॉल ज़्यादा, इनके सीधा ज़्यादा रह जाता है, तो इस तरह के बॉलर और जो ऑफ स्पिनर होता है उसको सूट करता है कि वो कुछ देर बाद कुछ आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद करे और यहाँ पर विकेट गिरने का चांस हो सकता है। अपील की जा रही है, लेकिन शायद बर वक्त बैट्समैन वापस पहुंच गए। इस तरह से 52 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ है। 155 स्कोर सिंध का, 8 विकेटों के नुकसान पे उमर 16, जबकि अबरार 1 रन पर मौजूद हैं। हम बात कर रहे थे कि मोहम्मद अब्बास मीडिया एंड से बॉलिंग का आगाज़ करेंगे। काफ़ी ज़्यादा नपी-तुली बॉलिंग की है, सिर्फ 15 ओवर्स में ही इन्होंने 4 विकेट हासिल कर ली हैं। अब्बास ने अपनी 5वीं विकेट की तलाश में यकीनन होंगे। देखना पड़ेगा कि अब्बास अब क्योंकि 3 स्लिप्स के साथ बॉल करेंगे, एक गली 3 स्लिप्स, पॉइंट, कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, क्या वो लाइन होगी जिससे आगाज करेंगे। स्टंप्स को स्ट्रेट अवे टारगेट किया मोहम्मद अब्बास ने और फॉरवर्ड पुश किया अबरार ने। तो अबरार भी बड़ी दिलचस्प अंदाज से शॉट्स खेलते हैं, हमने इनको पहले भी देखा, जिसमें पॉइंट के पास से स्लिप्स के ऊपर से गाइड कर देना और स्लॉक करना, इस तरह के शॉट्स हमने देखे हैं अबरार के। क्या इस सूरत हाल में अबरार ऐसा खतरा मोल लेंगे या ये थोड़ा
उमर को चांस ज़्यादा देंगे क्योंकि वो काफ़ी देर से मौजूद हैं, ये देखना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब्बास इससे पहले 40 दफ़ा एक इनिंग्स में 5 विकेट्स हासिल कर चुके हैं। अगर ये एक विकेट और हासिल करते हैं तो फिर यहाँ पर 41वीं दफ़ा होगा कि वो ये मार्का सर अंजाम देंगे। सिंध का कोई भी बैटर इनके आगे जो है वो मज़ामत नहीं कर पाया। लाइन और लेंथ की आप बात कर रहे थे, बहुत ही शानदार बॉलिंग की। और आपने जिस तरह बात की अबरार और उमर, अगर यहाँ पर 20-30 रन्स का इजाफा करते हैं, खुलकर खेलें, क्योंकि हमने जब भी देखा है कि टेल एंडर्स जब भी डिफेंड करने जाते हैं तो विकेट खो देते हैं। जी हाँ, और अब्बास जो है उन्होंने अभी इनकी जो गेंदें देखी हैं 3, तो उन्होंने स्टंप्स को टारगेट किया है, यानी वो विकेट टू विकेट बॉल करना है, जो कि उनका खासा भी है, जो उनका एक रवायत है बॉल करने की। तो इस जिस लेंथ पे वो बॉल कर रहे हैं, इस पे ख़तरा लेना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। बाउंसर किया था और बहुत अच्छा कलेक्ट किया इसको आजम ने। हेलमेट से बॉल टच होकर गया ऐसा लगता है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह कि बॉल जब बैट्समैन के पास से गुजरने के बाद स्विंग हुआ, लेट स्विंग हुआ, वो देखिए, और अच्छा मैनेज किया आजम खान ने, क्योंकि उनका जो वो दूसरी तरफ जा रहे थे बॉल के, लास्ट मोमेंट पे अपने बैलेंस को एडजस्ट करते हुए उन्होंने अपने राइट साइड पे आके टेक लिया ये। अबरार ने बैटिंग में तो कोई जौहर नहीं दिखाए, लेकिन अपनी बॉलिंग से बहुत इम्प्रेस किया अब तक, हाईएस्ट विकेट टेकर। सो बॉलिंग में काफ़ी ख़तरनाक साबित हुए हैं, तमाम ही टीम्स के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त बॉलिंग की है। इस वक्त ज़रूरत है कि कोई बल्ले से कुछ कर दिखाएं अपनी टीम के लिए। जी हाँ, बल्ले से भी ज़रूरत है, और वो कहते हैं कि लोहा जब गर्म हो तब हथौड़ा ज़रब लगानी चाहिए। तो अब अभी पाकिस्तान स्पिन डिपार्टमेंट में स्ट्रगल कर रहा है टेस्ट क्रिकेट में रिसेंट पास्ट में। इस बार अच्छा गाइड किया थर्ड मैन की जानिब, जिसके हम जिक्र कर रहे थे, जैसा आपने कहा कि बल्ले से भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और वही थर्ड मैन का रीजन जहाँ पे काफ़ी पसंद करते हैं खेलना, और वहीं पर 4 रन हासिल किए। तो मैं बात कर रहा था कि वो जो कि सही मौके पे इन्होंने परफॉर्म किया अबरार ने, क्योंकि पाकिस्तान को स्पिन डिपार्टमेंट थोड़ा स्ट्रगल भी कर रहा था। इन्होंने आउटस्टैंडिंग इनका अब तक सीज़न जा रहा है, हाईएस्ट विकेट टेकर भी हैं, और अब ये बड़े कैंडिडेट हो गए हैं। इस पर मज़ीद भी हम बात करेंगे। 159 स्कोर है 53 ओवर के बाद, 8 विकेटों के नुकसान पे सिंध का। इलियास ने अब तक 11 ओवर्स किए हैं और 36 रन देकर 1 विकेट हासिल किया है। उमर इंटरेस्टेड नहीं है सिंगल लेने में और ज़्यादातर स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं। लंबी बैटिंग करने की सलाहियत रखते हैं उमर। जी हाँ, और दूसरा ये काफ़ी वक्त गुजार चुके हैं। अब देखिए कि 71 बल्कि अब तो 72 गेंदें खेल ली हैं उन्होंने, तो उनको बेहतर अंदाज़ा है पिच किस तरह से बिहेव कर रहा है या कौन सा बॉलर किस तरह से बॉल कर रहा है। तो जब आप वक्त गुजार लेते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो आप ज़्यादा बेटर पोजीशन में आ जाते हैं। शायद यही वजह है कि वो अपने आप पे ज़्यादा एतमाद कर रहे हैं। आगे बढ़ा, बहुत अच्छा ड्राइव है यहाँ पर उमर की तरफ से, लेकिन मिड ऑफ को क्लियर नहीं कर सके जहाँ पे हसन अली मौजूद थे। आगे पिच किया था, शायद ड्राइव करवाना चाहते थे, और वो जो स्लिप्स 3 जिसका हम जिक्र कर रहे हैं उनको एक्शन में लाना चाहते थे, लेकिन थोड़ा ज़्यादा गेंद फुल हो गया, इसलिए कोई दिक्कत उमर को पेश नहीं आई। और जैसे हम स्लिप्स की बात कर रहे थे,
के 3 स्लिप्स यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए कि आज़म खान और उनके साथ 2 स्लिप्स हैं और एक गली के साथ बॉल कर रहे हैं। यहाँ पर 2 रन्स की कॉल हुई है और फंबल हुआ जिसका फ़ायदा उठाया शरून फील्डर थे वहाँ पर, थोड़ा सा सुस्त हुए और इसका भरपूर फ़ायदा उठा लिया। और जो चीज़ यहाँ पर उमर रखना चाहते हैं कि स्ट्राइक उनके पास रहे ताकि वो काफ़ी देर से विकेट पर मौजूद हैं तो कुछ रन्स बना लें। जी काफ़ी थिक आउटसाइड एज लगा था और शारून आई थी, थोड़ा फंबल ज़रूर हुआ था उनसे। हसन खान थे फील्डर और ये अच्छे फील्डर्स में से एक हैं, लेकिन बहरहाल खैर पार्ट ऑफ द गेम है, हो जाता है आपसे कभी कभी। इंटरेस्टिंग वे में खेल रहे हैं, लास्ट मोमेंट पे बैट के फेस को ओपन करते हैं, लेकिन ये है कि वो सिंगल नहीं ले रहे, वो स्ट्राइक अपने पास रखना चाह रहे हैं। शायद अभी उनको अबरार की सलाहियत पे इतना एतबाद नहीं है, लेकिन गो कि इस मरतबा उन्होंने ज़रूर स्ट्राइक रोटेट किया, लेकिन 2 गेंदें अभी बाकी हैं। और उसके साथ ही अमर फील्डिंग में भी तब्दीली हुई है और जो फील्डर डीप पॉइंट पे थे उनको अब क्लोज कर लिया है। ये आप देखिए गली में, फिर पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ और एज हुआ, लेकिन यहाँ पर जैन ने ये कैच गिरा दिया, थाम नहीं पाए। यहाँ पर वेलकम बाउंड्री फॉर अबरार और सिंध। जी बिल्कुल, इस बड़ा एक अच्छा लेंथ था, वही जिसकी हम बात कर रहे थे कि वो फुल बॉल करा रहे हैं ताकि स्लिप्स को प्ले में लेकर आया जाए, और एग्जैक्टली वही हुआ कि थोड़ा आउटसाइड ऑफ स्टंप आगे बढ़ा हुआ गेंद तक और खड़े खड़े जस्ट पुश किया अपने बैट से, लेकिन थोड़ा सा दूर था सेकंड स्लिप के और बीच में से गेंद निकल गया। आई थिंक एक ऐसा चांस था जिसको ज़रूर चाहते होंगे बॉलर भी और स्लिप के फील्डर भी कि उनके कहीं हाथ में आ जाता। बहुत अच्छी गेंद और एक हल्की सी अपील ज़रूर हुई थी, लेकिन इस डॉट डिलीवरी के साथ ओवर का इख्तिताम हुआ है। 54 ओवर्स के इख्तिताम पर सिंध 166 पर 8। अहमद, मार्गला हिल्स, ट्रेल 5, ट्रेल 3, आप भी ट्रेल 5 पर जाते हैं कभी कभी हाइकिंग के लिए या? जी कभी कभी जाने का इत्तेफाक रहता है, और कुदरती हुस्न से माला माल पाकिस्तान का ये कैपिटल, बहुत खूबसूरत। आप इस्लामाबाद कभी आएँ तो रावलपिंडी आएँ, क्योंकि जुड़वा शहरों में तो ज़रूर विज़िट कीजिए। इस बार पिछले कदम पे रहते हुए इसे पुश किया उमर ने कवर्स की तरफ, फील्डर वहाँ पर मौजूद थे। अब्बास स्ट्रगल कर रहे हैं कि अब तगोदो में हैं कि अपनी 5 विकेट हासिल करें। अब तक बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया है अब्बास ने। उमर को दाद देनी होगी, बहुत तहम्मुल से बैटिंग कर रहे हैं और बहुत ही क्लोज कॉल। अब्बास यकीन नहीं कर पा रहे। मुझे ऐसा लगा था कि कमेंटेटर्स कर्स और शायद आउट ही ना हो जाए। जी देखते हैं फिर से अब्बास का एक आगे पड़ा हुआ गेंद, इससे ड्राइव के देखना पड़ेगा आइदा क्या प्लेड ऑन हुआ है या नहीं। बिल्कुल ये सीधा खा गए। सो काफ़ी क्लोज था, बहुत क्लोज था, और मैं ये कहूँगा कि लकी रहे हैं उमर के वो सरवाइव कर गए इस शॉट को, और अब्बास काफ़ी अनलकी खुद को कंसिडर करेंगे कि उनके हाथ ये विकेट नहीं आया और उनका जो पंजा है ना वो नहीं लगा। अब इसमें देखना होगा अहमद के क्या वजह थी कि अंपायर इस कॉल से कन्विंस नज़र नहीं आए। बहुत ही क्लोज कॉल, गेंद पड़ने के बाद तेजी से अंदर आई, और अगर हम देखें तो ऐसा महसूस होता है कि ये गेंद पिच इन लाइन, इम्पैक्ट इन लाइन, और फिर आखिर में हिटिंग द स्टंप्स। ये मेरा नज़रिया है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, आपसे राय लेना चाहूँगा।
वो देखिए इस पे भी बात करेंगे, और वो जो खूबसूरत नज़ारे इस्लामाबाद के साथ मारला की पहाड़ियों के, और यहाँ पर ना सिर्फ आपको खूबसूरत नज़ारे मिलते हैं बल्कि कुदरती जो वो कहते हैं ना वाइल्ड लाइफ भी मिलती है आपको। खैर इस मरतबा खेलते ही सिंगल ले लिया उमर ने, और आफियत इसी में जाने की स्ट्राइक को रोटेट करके दूसरी तरफ चले जाया जाए, क्योंकि अब्बास बड़ी खतरनाक बॉलिंग कर रहे हैं। जिस आप डिसमिसल की बात कर रहे थे आसिफ, वो बहुत क्लोज था ये, उनके बैट्समैन खाई भी ज़रा पीछे जाके थे, उन्होंने हाइट का भी इतना फैक्टर नहीं लग रहा था, और काफ़ी क्लोज है। ये देखिए ये यहाँ पर ये ऑलमोस्ट ऑफ स्टंप के ऊपर पिच हुआ, और ये मिडल एंड लेग को लगेगा। बहुत क्लोज, बहुत ज़्यादा क्लोज था ये शाउट, और मैं इस तरह के शाउट अगर आप सरवाइव कर जाएं तो सिर्फ किस्मत आपको बचा सकती है। यानी ही इज आई थिंक उमर काफ़ी लकी रहे हैं। अबरार का इम्तहान ज़रूर है, अभी एक गेंद और खेलनी है अबरार ने, और अगर ये सरवाइव करते हैं तो फिर एक दफ़ा फिर उमर स्ट्राइक पर होंगे, जो उनके हौसले को दाद देनी होगी, जिस हौसले से वो बैटिंग कर रहे हैं, वक्त गुजार रहे हैं। पहले सरफराज का साथ दिया और अभी नॉट आउट हैं 20 पर। अबरार जिस तरह बल्लेबाजों को मुश्किल में डालते रहे हैं, उनकी उंगलियों से रुत बदलती गेंदें, कभी इस तरफ को कभी उस तरफ को, अब उनको उसी चैलेंज का सामना खुद करना पड़ रहा है। गुड वन है अमर। इस डॉट डिलीवरी के बाद ओवर का इख्तिताम हुआ है, और सिंध 167 पर 8। और रावलपिंडी इस्लामाबाद में ख़ास तौर पर जब आप ट्रेल 3, ट्रेल 5 और ट्रेल 4 का रुख करते हैं तो फिर आपकी मुलाकात भी हो सकती है वहाँ पर वाइल्ड लाइफ से। आज तक वैसे मेरा तो कभी सामना नहीं हुआ, और मैं यहाँ के पैंथर्स को फ्रेंडली पैंथर्स कहता हूँ। जी पैंथर्स भी हैं, मंकीज़ भी हैं, और यहाँ पे एक बहुत मारूफ रेस्टोरेंट भी है जिसको लोग बहुत शौक से जाते हैं, इस्लामाबाद आएँ तो उसका भी रुख करते हैं। तो ओवरऑल इस्लामाबाद दुनिया का खूबसूरत तरीन जो कैपिटल्स में से एक माना जाता है। अच्छा, ये बड़ी एक आपने दिलचस्प एक जुमला आसिफ कहा कि फ्रेंडली पैंथर्स, तो ये इसके पीछे क्या कहानी, आपका क्या तज्जिया या तजुर्बा है ज़िंदगी का? ये जो ट्रेल 5 और ट्रेल 4 के जो पैंथर्स हैं, ये जो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ है, आज तक कभी भी हिस्ट्री है कि किसी भी इंसान को इन्होंने नुकसान नहीं पहुँचाया, सो इसलिए मैंने उनको फ्रेंडली का नाम दे दिया। राइट, पैंथर्स का आपने जिक्र किया तो वो बचपन में पिंक पैंथर वाली बात जहन में आ जाती है। खैर बहरहाल इस बार खड़े खड़े पहले डबल माइंडेड हुए, पहले स्लॉ करने का सोचा और आखिरी मोमेंट पे अपने शॉट को चेक किया उमर ने, और नफ़ी में सर हिलाया। शायद वो अपने इस इंतखाब से खुश नहीं थे उमर, और सरवाइव कर गए। इलियास जो है वो बड़े नपी तुले एक ही जगह पे गेंद को आउटसाइड ऑफ स्टंप या ऑफ स्टंप के पास से वो गेंद को अच्छी लेंथ पर फेंक रहे हैं, और इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद बैट्समैन को गलती करे, और जो स्लिप्स जो इंतज़ार में हैं वो इसका फ़ायदा उठाएं। बहुत ही पुरएतमाद तरीके से इस गेंद को खेला है अबरार ने, उमर ने, आई बेग यू पार्डन। उमर की बैटिंग की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जब भी इनको टेल में मौका मिलता है कि वो अपने पार्टनर का साथ दें, अपनी टीम के लिए कुछ 30-40 रन जोड़ें, तो उसमें कामयाब नज़र आते हैं। देखिए ये जो 4 रोज़ा क्रिकेट होती है ये आपको बहुत कुछ सिखाती है। हमने जिस तरह पहले भी जिक्र किया था कि हमने उमर को तेज़ जारहाना खेल भी खेलते देखा इस कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में, और यहाँ पर जिम्मेदारी, और जब हम बात की कि जिम्मेदारी के साथ भी खेलते देखा, जिस तरह आज उन्होंने बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कांधों पे ली है, एक एंड को होल्ड करके रखा है, स्पेशली उस वक्त के जब इनकी टीम, सिंध की टीम बहुत मुश्किल में थी और ऊपर तले विकेटें इनकी गिर रही थी। तो एक तो पहले उन्होंने सरफराज अहमद के साथ एक काफ़ी अच्छी शराकतदारी बनाई, और अब अबरार के साथ एक की पार्टनरशिप बनाकर आगे की तरफ सिंध को लेके जा रहे हैं, जो सिंध के लिए ये रन्स बहुत काउंट करेंगे। अपने फर्स्ट क्लास करियर में एक 50 पहले भी बना रखा है, जो इस बात की गमाजी करता है कि अगर ये वक्त गुजारें पिच के ऊपर तो रन्स कर सकते हैं, लेकिन दूसरी जानिब भी इनको सपोर्ट मिलनी चाहिए। अब तक अबरार उसमें कामयाब हुए हैं।
और अबरार इसको चार्ज करने गए थे, ड्राइव करने गए थे, लकी रहे। काफ़ी ललचाती हुई गेंद थी, आउटसाइड ऑफ स्टंप आगे पड़ी और से उस लालच में आ गए थे बैट्समैन, ड्राइव करने चले गए खड़े खड़े और गेंद बल्ले से कुछ फासले पे आगे निकल गई। हमने देखा है कि इस पिच में डुअल बाउंस हमने देखा है कि कुछ जगहों पे बॉल पड़ के थोड़ा डाई कर जाता है और कुछ जगहों से बीच में कुछ कुछ गेंदें पड़कर थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस पे उनमें होते हुए देखा है। लेकिन जो जो खेल आगे बढ़ेगा, दिन आगे गुजरेंगे, तो ये जो एक्स्ट्रा बाउंस है शायद ये हमें थोड़ा सा इसमें कमी देखने को मिले। एक बार फिर वही गेंद, वही कोशिश इलियास जो करवाना चाह रहे हैं वो होते होते लेकिन हो नहीं पा रहा है। लेकिन इस तरह से ये जो 56 ओवर का खेल मुकम्मल, 167 स्कोर, 8 विकेटों के नुकसान पे। अबरार को ने अब तक जो बैटिंग की है, अब तक जो 15 गेंदें खेली हैं, उसमें एक चीज़ तो ऐसा महसूस होता है कि वो ये नियत करके आए हैं कि उम्र का साथ देना है। जितने वो तसल्ली से खेलने लगता है उम्र का साथ उम्र भर देना है। जी हाँ, अगर इस मैच में भी साथ दिया और इस इनिंग्स में भी साथ दिया तो वो ये तसव्वुर किया जाएगा कि उम्र भर भी साथ गुजारी है। बहुत ही पुरएतमाद अंदाज में इसको ड्राइव किया, हसन अली फील्डर थे। ये बेहतर लाइन थी, थोड़ा ज़्यादा करीब गए अबरार के तो उनको, ताकि वो उसको खेला है, उन्होंने ड्राइव किया, क्योंकि इस लेंथ से और इस लाइन से होगा ये कि बैट्स जो टेल है वो अपने आप को कमिट करेंगे शॉट के ऊपर। थोड़ा आउटसाइड ऑफ स्टंप ये होता है कि एक ऑप्शन आ जाता है कि आप उसको छोड़ सकते हैं, तो उसमें मेरा ख्याल है कि मॉरल विक्ट्री जो है वो एक टेल एंडर की हो जाती है कि अगर वो बॉल को लीव कर रहा है। इस दफ़ा अबरार ख़तरनाक तरीके से इसको स्लाइस करने गए थे, स्लाइड करना चाहते थे, थर्ड मैन की जानिब कट करना चाहते थे। अच्छा आइडिया नहीं था। जी बिल्कुल, और जब अब्बास ऐसा बॉलर हो और बॉल आपके करीब हो और बल्ले का रुख खोलना स्टंप्स के पास, ये काफ़ी ख़तरनाक हो जाता है। इसी वजह से बॉल की मूवमेंट को बिल्कुल भी नहीं वो कवर कर सके। ये देखिए बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप था, पर टेल इन हुआ, लास्ट मोमेंट पे अंदर आया, इसको स्लाइस करना चाहते थे लेकिन बहुत ख़तरनाक अंदाज में, एक रवायती तौर पे एक टेल एंडर के अंदाज में खेले। यॉर्कर लेंथ डिलीवरी, इसको खेल दिया कवर में और तेजी से एक रन ले लेंगे। एक और रन मिल गया अबरार को। सो इस तरह अब 168 रन हो चुके हैं। यहाँ से 20-30 रन बहुत मुफीद साबित हो सकते हैं सिंध के लिए। बीच बीच में अब्बास की ये सर उठाती गेंदें, एक दो गेंदों का सर कुचला अपने बल्ले से बैट्समैन ने, लेकिन काफ़ी दिलचस्प है। और ये एक जो हम बात करते हैं कि रावलपिंडी की पिच की ये खासियत है, आपको लगता है कि ये पिच सीधा हो गया है, बिल्कुल फ्लैट हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में एक अदद ऐसा गेंद हो जाता है जो कि मिसबिहेव करता है और बैट्समैन के जहन में एक डाउट क्रिएट कर देता है कि नहीं अभी भी इस पिच में कुछ ना कुछ ऐसा मौजूद है, कुछ मूवमेंट मौजूद है, इसलिए वो आपको सोचने पे मजबूर किए रखती है ये रावलपिंडी की पिच। 168 स्कोर सिंध ने बना लिया है। यकीनन ताकुब जो है वो इनका, या नज़रें जो हैं वो 200 के हदफ पे होंगी। उमर एक दफ़ा इसको खेलना चाहते थे, लकी रहे, और इस तरह अब्बास के 18 ओवर्स मुकम्मल हुए। सिंध 168 पर 8।
इलियास का सामना करेंगे अबरार। 10 रन बना रखे हैं अबरार ने। अच्छा आइडिया नहीं है कि फास्ट बॉलर को जब आप टेल एंडर होते हैं तो कोशिश यही की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें, बॉलर को फ्रस्ट्रेट करें, और दूसरी जानिब उमर के पास ये सलाहियत है कि वो कुछ बड़े शॉट्स लगा सकते हैं। देखिए रवायत से हट के अगर ना खेले तो उनको टेल एंडर कौन कहे, और कभी भी आप टेल एंडर का जो खेलने का अंदाज़ है वो प्रोडिक्ट नहीं कर सकते, वो किसी बॉल पे कुछ भी कर सकते हैं, और इसलिए इनकी बैटिंग काफ़ी इंटरटेनिंग होती है। इस बार पहले जिस तरह से बल्ला लेकर आए थे अबरार, शायद इरादा था कि कोई बड़ा शॉट खेलेंगे, लेकिन आखिरी लम्हे पे अपने इरादे को तर्क किया। इलियास वही लाइन आउटसाइड ऑफ स्टंप, थोड़ा सा आगे चाह रहे हैं कि ड्राइव खेलें अबरार, और इनकी स्लिप लगे। देखते हैं कि कितनी देर तक अबरार जो है सरवाइव करेंगे अपनी स्ट्रेटजी के साथ, जिस तरह से ये बैटिंग कर रहे हैं। जिस तरह से सिंध की टीम ने आज बैटिंग का आगाज़ किया, कोई भी बल्लेबाज, खुर्रम मंजूर अपना कमबैक कर रहे थे, और सऊद शकील जो कप्तान हैं पिछले मैच में नहीं थे, सो कोई भी बल्लेबाज जो है वो टिक्कर नहीं खेल पाया, और कर्टसी अब्बास ने जैसे बॉलिंग की और दोनों जानिब स्विंग किया। सऊद शकील स्ट्रगल करते हुए नज़र आए, फवाद आलम स्ट्रगल कर रहे थे, सो दाद देनी होगी सिंध की प्लानिंग को, उनकी एग्जीक्यूशन को। ये अच्छा गेंद था, क्योंकि आउटसाइड ऑफ स्टंप कुछ गेंदें करने के बाद अब स्टंप्स के पास गेंद किया, अबरार को थोड़ा सा फॉरवर्ड आकर खेलना पड़ा। अब ये जो लेंथ है, यहाँ से जब बॉल थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है या कोई मूवमेंट मिलती है, तो उस पर विकेट गिरने का एहतमाल जो है बढ़ जाएगा, या शायद इस लेंथ से अब अमूमन क्या होता है कि बैट्समैन अपिश खेल लेता है तो वो सामने मिड ऑन या मिड ऑफ को भी कैच थमा देता है अक्सर। इस दफा इसको पुल किया है, देखना होगा फील्डर बॉल के नीचे है लेकिन दूर थे सदाकत, और वो बॉल तक पहुंच नहीं पाए। वो जुमला जहन में आता है कि फील्डर बॉल से दूर रहने पर मजबूर, यानी बिल्कुल गैप में, दो फील्डर्स के बिल्कुल एंड गैप में जो है वो जाकर उस गिरी है। और ये बॉल अच्छा था क्योंकि उन्होंने गलती करवाई, बॉडी पे उन्होंने शॉर्ट बॉल किया, और अबरार ने इसे एक वो हम कहते हैं ना लपेटने के अंदाज में से पुल किया। एक गलती करवा दी थी, लेकिन ये कि लकी रहे अबरार के बच गए इस गेंद पे। और एक दफ़ा फिर ऊंचा ज़रूर था लेकिन सेफ एरिया में लैंड किया, फील्डर वहाँ पर कोई नहीं थे। 1 रन यहाँ पर ले लिया उमर ने, और इस तरह 58 ओवर्स के अख्ताम पर सिंध 170 पर 8। बॉलिंग में तब्दीली हुई है और हसन को मीडिया एंड से लेकर आए हैं कप्तान हसन अली। हसन बिन साबित,
हसान खान ये बहुत बड़े टर्नर ऑफ द बॉल नहीं है, इनका बॉल आर्म बहुत अच्छा आता है, आर्म के साथ अंदर बहुत अच्छा आता है। और जोरदार तरीके से इसको खेलना चाहा था, इनसाइड जुआ यहाँ पर और एक रन लिया। लंच से पहले एक ओवर किया था हसान ने और अच्छी चेंज है। अब दोनों एंड से हमने देखा कि अब्बास ने भी बॉलिंग की, फिर इलियास से बॉल करवाई। सो अब ये अच्छा होता है, आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, और जब टेल एंडर्स होते हैं, ये जो एक्स्ट्रा बॉलर्स होते हैं, ये विकेट्स ले सकते हैं। जी हसान खान की जो लाइन है, यानी इनका चूंकि पिच में अभी इतना टर्न नहीं होगा और डेफिनेटली ये आर्म बॉल ज़्यादा अच्छा करते हैं, उनका बॉल एंगल के साथ अंदर ही आएगा, तो देखना पड़ेगा कि किस तरह इस स्पिन के एंगल को मैनेज करेंगे। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अभी ओवर तमाम हुआ है, इस पे हम मजीद भी गुफ्तगू जारी रखेंगे आगे। 59 ओवर मुकम्मल, 171 स्कोर, 8 विकेटों के नुकसान पे, अबरार 11 पे, जबकि उमर 22 रन के साथ विकेट पर मौजूद है। Pretty defensive as Umar is on 22 in 92 deliveries. Abrad is giving good hand. So we had seen in the past that this man on screen has got the ability, he has got the temperament of staying on wicket, and what an inning he's been playing. Well, a bit of the spectators been watching this game closely. Face open bat. Well, Muhammad Umar has proven to be quite a resilient fighter for Sindh today. He's been standing there for a while now, played 93 deliveries. He has the ability to absorb pressure, and he has showed that today brilliantly. Not a lot of runs have come in for Sindh since the wicket of Sarfraz Ahmed, who was playing very well. But this partnership, not producing a lot of runs, but they're still standing there, giving their team a chance. A bit of bounce there at the very end. Played it with soft hands. Easy single for Sindh. Well, they are talking with each other. And that's really a good thing, that our team needs us to stay there. And we have to keep either small or big, but have to give a partnership. Well, so Shakil having a good time in dressing room, but his team really requires to whip up here. Ghulam Mudassir, a good bowler. He's having a good tournament, and this pacer, Ilyas, though he's quick, but only 1 wicket so far in his credit for the day. Hooked that one to it, fine leg, and that produces a single. He probably wanted to play a big shot there,
to release a bit of pressure, since not a lot of runs are coming in. This is the third session of the day, and it's been Southern Punjab's day. Today they have got a grip of this game. Other than Sarfraz Ahmed, no other batsman was able to score big. Not a lot of partnerships there. And that is the key, isn't it, for a 4-day game, partnerships. Well, look at that. He has just gone after the ball. The ball is flying high. And it's gone for 4. Good hit. Fuller length. Picked up earlier. And he has just dispatched it. And that's how you release the pressure. "96 deliveries for Muhammad Umar. And after 96 delivery, we finally see a shot from him went out the park for the maximum. Well, he's gone again towards onside. Edge was there, but not been able to go up into the sky, though a bit of elevation was there. Having a bit of the chat with Ilyas. End of the 60th over. The score is 179 for the loss of 8 wickets. Hassan Khan, slightly bit more quicker. Though that I did see him quite a time flighting the ball, but he's more dangerous. And he's just having a good pace, not flighting the ball, going through the air quickly. He might be getting some wickets, because in the first game, what he has played here at Faisalabad, Hassan got 3 wickets in the first inning against Northern Punjab. We haven't seen any outrageous amount of spin here in the Pindi wicket, and that's usually the case with the Pindi Stadium here and the pitch here. But still, Hassan has been keeping it pretty tight as far as the runs are concerned. He hasn't been able to grab a wicket for himself. But the Southern Punjab skipper would be pretty happy with this effort that the players have put in the field today, from the bowlers and the fielders equally. And that was in the air, and that's been taken. There's a big appeal. Was there a bat on that? That is the big question. Don't believe so, because the umpire is unbothered. Yeah, clearly the sound was off the pads. You can hear from a long way, hitting onto the pad and whipped up. Though that pretty enthusiastic, he was all happy that I've got the main, but well bowled. Hassan, another over gone. It's 61 overs been bowled, 179 for 8. Azam Khan there has been pretty good today behind the stumps. There's a lot of talk about Azam's fitness and his stamina, and I think that can be tested very well in a 4-day game. He's been very much active today, on his toes,
performing his duties as a wicket keeper very well. Good ball there from Hassan, perfect length. Muhammad Umar thought this one can be let go. Umar has been good with his shot selection, and that's the reason why he's standing there playing 99 balls. He's able to score only 29, but that wouldn't bother Sindh a lot at the moment. All they want him to stay out there until the day is over. Pretty solid, pretty defensive. And we can clearly see the impact of this surface, that how easy this is going to be, though that he's been pretty watchful. I think he's been making all of the efforts. And the man on screen, Abbas, did the damage earlier on today, but Hassan only 1 wicket. Well, we have seen this before. It gets easier to bat when the pitch gets old here in the Pindi Stadium. The ball starts coming onto the bat pretty easily. Again, played it with the soft hands towards the leg side. A pretty easy single for Umar. I think the message from the skipper, from the Sindh skipper, would be to just stay out there until the end of the day so they can start fresh tomorrow. Be energized. Obviously, it's almost the end. We're reaching towards the climax of the day, the end of the day. The energy level starts coming down, doesn't it? So they would want these two to stay out there because they have played considerable amount of deliveries now. Yes, exactly. Abrar, the leading wicket taker of the Quaid-e-Azam Trophy, doing a good job in 32 deliveries for his 12 runs. He's just gone over and just making it over at mid-off. Ilyas had a bit of the jump up in the sky, but it was not quite enough. Mohammad Ilyas, the fielder there, the mid-off was up. The chance was there, but just went over his head. Couldn't grab that one, although he tried. A couple runs there for Sindh, and another lifeline. Yeah, sometimes bravery is just giving you another opportunity when fortune favors you. But here I think that more sensible. These two should bat long like another 30 or 40 runs, because remember 187 in the previous match against Central Punjab in the first innings in, and now 62 bowled, 181 for 8. We are well into the third session, the final session of day 1 of this game between good ball. Hassan has been excellent today. He's been on the mark, on the target, and Abrar has no answer for that. He has been out there for a while now, Abrar, trying to stay out there until the end of the day, but will that be successful? We'll just have to wait and watch. Yes, sometimes we did see that Abrar is not good against spin. The way that a delivery before, we did see that Hassan bowling slight bit more quicker in the air, but see that when he's just flighting the ball, Abrar is playing easily. I think he should be giving some pace through the air and deceive the batter in front of wickets. I think that would be an excellent ploy if they want to break up this partnership. The variations that a spinner can bring into this equation, because there's not a lot of spin there, so it's just the variations that can deceive the batsman. Played it straight. Defensive shot. Abrar's defense has been pretty good, although he's not known to play spin very well.
but he might be proving some people wrong today. Well, that's really a good over. He's going through his overs quickly. Over ball 63 over spin ball, 181 for 8. Four wickets. And that has been the call for the day. Muhammad Abbas in 18 overs. Then 1 wicket for Hassan Ali, Muhammad Sadaqat, Muhammad Ilyas and Salman Ali Agha. They have shared it equally. It's been pretty comprehensive bowling performance today by the Southern Punjab. They did choose to bowl first at the toss today, which was uncontested. And it was Muhammad Abbas that challenged them the most. Close call towards offside. It did hit to Azam Khan as well. That ball really whipped up with a good pace, good height. That's a fast bowler's dream, isn't it? That delivery, look at that. Good length delivery, pitched perfectly and deceived perfectly. Mohammad Umar had no answer for that one. He's lucky to survive. Well, he's attempting with the same kind of delivery, but this time Umar has played well. Hassan Ali just generating good pace. He's making the batter to play towards offside. Well, Hassan Ali playing his first game here. The previous game, being a captain, he hadn't played because of some injuries. But this is the second game of Southern Punjab, and Hassan Ali leading the side today. Played it with soft hands there, just for a single. That's not easy for a fast bowler to come out of an injury and start performing right away, but we have seen some very impressive bowling from Hassan today. His pace has been up, he's been very accurate, and he's also, let's never forget that he's also captaining the side, so his bowling changes and the field setup has worked perfectly for Southern Punjab, so he'll be pretty happy about that. But what can he do here? Can he break this partnership here before the end of the day? That's the question. Well, he was thinking that might have been bounced much, but at the very last moment he has adjusted well. Abrar capped the ball down through to the gully and slip, and getting 4 runs. This is wonderful batting. Well, that is some placement by Abrar. Very smart, very well done. He knew exactly where he had to place that ball for it to run to the boundary, and very well deserved 4 runs for the youngster there. Smart cricket by Abrar. Well, Hassan is taking his time. He has played 2 first-class games at Abbottabad. Again, this is through, and again getting the far gap there into the third man boundary for 4. Similar ball from Hassan there, and a similar shot from Abrar. Well, again, the ball bounced a bit, but he was right on the money. Made sure he wasn't going to give a catch to the slip fielder and placed it perfectly for a boundary. So that brings up the score for Sindh to 190. They have crossed the lowest score barrier now, so that should be a sigh of relief. Outside the off stump, that delivery, and well left by Abrar. Didn't feel like taking a chance. At the end of the 64th over, the score is 190 for 8.
Hassan is going to resume bowling, keeping it pretty tight. 185 has been the lowest score this season by Balochistan for this season of Quaid-e-Azam Trophy, and Sindh has successfully crossed that barrier. They have reached 190 with a loss of 8 wickets. Again, ball coming onto the bat very nicely. Umar is keeping to his basics, defending the ball. Not really keen on scoring a lot of runs here, although the strike rate has been a bit up. And again, with the straight bat. Well, this pitch will surely help spinners as the game will be progressing, because the green grass is not that covered. We got some open spaces. There you go, an open space here for Umar. Or just hammering it all the way for a mighty hit. Beautifully played. Well, he has picked up that length earlier, and he was just ready for that kind of shot, long handle. At deep mid-wicket, that has finished the sailing. Well, took a chance there. He did see where the ball was pitching for the first 2 balls, and then he went after this one for the maximum. Played it with a straight bat towards mid-off. Just for a single there, a quick single. Well, I think that was the first boundary that Hassan has conceded, and that's his 5th over. He's kept it pretty tidy up until now, but it seems like that this partnership is giving a boost of confidence to the Sindh batters to go after Hassan. Well, Abrar has been pretty focused here with his dot delivery. Another quick over by Hassan. 65 gone, 197 for 8. Well, we have seen Hassan Ali coming back into the attack, starting with a dot ball. He has been pretty good today, Hassan, although the last over, the last 2 deliveries, he was hit for consecutive boundaries. Some excellent placing by Abrar there. But this time it's Mohammad Umar facing him, who has faced 111 deliveries today. Not a small feat. Oh, that one came right into his face. A lot of bounce there from Hassan. A lot of bounce there. You can see Umar is surprised and a bit shocked at that. Hopefully he wasn't hit in the head. Really surprised. And he was slightly bit of on the toes while playing that shot. Look at that. Good high, unplayable. He was not in a position to leave that. So that is really a good ball in terms of 4-day cricket from Hassan Ali. And that normally puts some sorts of question marks in the batter's mind when the ball has been pitching like this. Comes up quickly onto you as a batter. So there is some sort of 2 minds, what we would normally be watching in a batter. And I think that he will be careful for the next 3 deliveries. Absolutely, that's what a good bouncer can do to you. Oh, going for a yorker there. Well defended in the end by Omar for a single. Looking at the game from Sindh's point of view, they are pretty close to reaching that 200 mark
on day one. Do you believe that that's some kind of recovery from them? Because we saw them struggling early on, losing a lot of quick wickets. So this has got to give them a little bit of confidence that they can go for a big total here. Not too big, just big. Well, again, but this time, bit more bounce, bit more effort. And Abrar showing a bit of the practice here. The uppercut would have gone over the wicketkeeper. It might be from first slip's head, but this was really a good one. We're just making it a bit of the question mark here. Will you play for that? And Hassan Ali, he has given away 54 runs by getting 1 wicket. Oh, very well bowled. That is excellent from Hassan Ali. Abrar had no answer to that delivery, and this brings up the end of the 66th over, and the score is 198 for the loss of 8 wickets. Pitch towards offside, and it just held its line. He was just backing up. Lucky hadn't touched it, but there you go, the kite. Well, just lost its place. But Sindh is on the recovery mode, not like this. 66 gone, 198 for 8. Well played. And as Hijab was giving you the bit of the verdict here that it's a recession time for the Sindh, and they are doing a good job. Is the lowest total of the season, 187 by Balochistan. They have crossed that barrier, but still a long way to go. Like they need to go for the whole day. Absolutely. We all know that it gets easier to bat as the days go on, you know, so Sindh would be looking to score some more runs, as many as they can with this partnership especially. Mohammad Umar has been very impressive. He has been the wall for Sindh today. Although a flurry of runs came from Sarfraz Ahmed's bat, but it's Mohammad Umar who has spent the most time. And that's a call for a catch, and that's a brilliant catch taken. Oh, that is mighty impressive. Mighty impressive. Mohammad Umar cannot believe this. He cannot believe this. He's not moving. He's not moving. He's not sure what just happened. Well, I think that he's been pretty surprised. He would have thought to drive it all along the carpet, but just held a bit in the surface, and he was unable to keep it down. Lost his way, lost the momentum, the way that they were showing a bit of the temperament. Or was that commentator's curse? Could be. I'm not sure. But this has been a valiant innings from Mohammad Umar. And we're on for a drinks break.
coming in at number 11 for Sindh. Southern Punjab is just 1 wicket away from closing this day. This has been a mighty impressive bowling performance from them. Sindh would be looking to touch that 200 mark for those bonus points to be added to their points table there. Oh, swing and a miss. Abrar Ahmed looking to go after Hassan Ali. Well, I think he's a confident lad. Oh. I don't think Mohammad Umar was expecting that ball to go that high up in the air. As far as he was concerned, he was just going for a drive. But a bit of a bounce on this pitch can do that to you. Short leg was placed for any sort of attempt like this, miscued, and they can get their wicket, and the things would have been wrapped up. But Abrar has played well in 46 deliveries, 21 runs, highest for him in the season here at the Quaid-e-Azam Trophy, because the previous one was 20 runs here at Rawalpindi, the previous game against Central Punjab. Here he stood there. There you go, we're just making a bit of the room, trying to play that big shot towards offside, but he checked his stroke. Well, like I said, he's a confident lad. He's exposing his stumps, wants to go after Hassan. And then again, it goes without saying, with that wicket of Mohammad Umar, you have to give it to Hassan. He has been placing his fielders excellently today, and we've seen some great catches, and that was just another example. A bit of a flight on that delivery. Played it with a heavy bat. We could hear the sound of that cracking bat right here in the comm box. Just 1 run away from that 200 mark now, Sindh. Yes, exactly, just 1 run away. They will be getting 1 point here. They should bat easily here, sensibly, to get that 1 run and 1 point. And Hassan Ali doing a good job, keeping his fielders nearby. 2 slips, short leg now. Then a gully point. Just trying his level best to avoid that 1 run or 1 point. Leg side, impact. Right on the money, that delivery from Hassan. Look at that. Obviously drifting down the leg side. But he's been pretty accurate today. 200 comes up with that for Sindh. They've been eyeing that 200 mark for those bonus points, and they've been able to get to it with their last pair standing. You're just backing away, and look at that. What luck has favoured him. Through to the wicketkeeper and slip. He has earned a boundary on the very last ball of the over. Just making a bit of the room. There you go. Hassan pitching it shot. Slight bit of backing away, and well played at the end, and earning 4 runs. 60 had gone. 204 for 9. ऊपर आ जाओ बस भाई विराट कोहली के अच्छा अंपायर है बस ऊपर आ छोटू इधर आओ उधर जाओ जरा इधर आओ शाबाश 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 दाना शाबाश दाना हसन खान बस
फ्लाइटेड डिलीवरी और 4 रन्स। मिस फील्डिंग हुई इस बार मिड ऑफ पे, और अबरार जो है अपने शॉट्स खेल रहे हैं, अब बड़ा इंटरेस्टिंग बैटिंग कर रहे हैं। अब आहनी हाथ दिखा रहे हैं अबरार के साथ मुदस्सिर भी, जिन्होंने कुछ देर पहले ही क्रीज पर आए हैं। नंबर 11वें नंबर पे बैटिंग के लिए हैं गुलाम मुदस्सिर। उन्होंने फैसला किया कि वो सिर्फ यहाँ पर रुकेंगे नहीं, बल्कि अपना जलवा भी दिखाएंगे बैटिंग का। एक बार फिर अफिश और पुश किया गैप में, बाउंड्री की तरफ जा रहा। अच्छा एफर्ट सलमान अली आगा का, 2 रन सेफ हुए। थोड़ा वाइडर ऑफ द क्रीज गए थे हसन खान, आर्म बॉल करना चाह रहे थे, लेकिन इस बार एंगल को अच्छा कवर किया और अच्छा फर्म पुश था यहाँ पर गुलाम मुदस्सिर की तरफ से, जिसके नतीजे में 2 रन्स हासिल हुए। ये बड़े कीमती रन्स हैं जो आखिर के विकेट्स के लिए जो बनते हैं। इस बार थोड़ा स्लो किया, हवा में छोड़कर किया, लेकिन समहाउ इसे मैनेज कर लिया गुलाम मुदस्सिर ने। यॉक करने की कोशिश की थी इस बार और कामयाब हुए, लेकिन गुलाम मुदस्सिर आखिर में बल्ला लगाया। इस तरह से एक दिफाई अंदाज से इस गेंद को रोका और 69 ओवर का खेल खत्म हुआ। सिंध का स्कोर 210, 9 विकेटों के नुकसान पे। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट कर रही है आखिरी विकेट साउदर्न पंजाब की टीम को। उनका जो एफर्ट है 50 for 5, और उसके बाद बहुत अच्छा डैमेज कंट्रोल सिंध की तरफ से। 210 इतना बुरा नहीं है अगर 50 पे 5 आउट हो जाए तो। इस बार हेरी फेरी स्ट्रोक, और यहाँ पर इस तरह से कवर्स में ये कैच थाम लिया गया। पीछे हट के अबरार उसे कवर्स के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन कोशिश में कामयाब नहीं हुए। और इसके साथ ही अब्बास के 5 भी मुकम्मल हुए, 5 विकेटें। वेल बॉल मोहम्मद अब्बास, आपने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया। और मोहम्मद अब्बास ने सिर्फ 50 रन के एवज 18 कवर में ये 5 विकेटें हासिल की। और आज के दिन के अगर सुपरस्टार कहें तो गलत ना होगा। और ये 41वीं मरतबा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 5 या उससे ज़्यादा विकेटें एक इनिंग्स में मोहम्मद अब्बास ने हासिल की हैं। ये ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, अमेजिंग कह सकते हैं। और अच्छा कैच, थोड़ा सा ऊपर था लेकिन एडजस्ट किया अपने आप को। इस तरह इब्रार की एक शॉट, लेकिन इंटेंट वाली इनिंग्स ख़त्म हुई। छब्बीस रन किए और सिंध की पूरी टीम 210 रन बना के आउट हुई 69.1 ओवर्स में। आप ये कह सकते हैं कि
एक अच्छा एफर्ट आप ओवरऑल कह सकते हैं। लेटर ऑन जो बैट्समैन थे सिंध के, उन्होंने अच्छा फाइट बैक किया, समहाउ हेल्प किया सिंध की टीम को कि वो एक रिस्पेक्टेबल टोटल पे फिनिश कर सके। पहली इनिंग्स में 210 का स्कोर ये सेट करने में कामयाब हुए हैं, क्योंकि एक वक्त था कि उनकी इब्तदा की बहुत सारी विकेटें जो हैं वो जल्द गिर चुकी थी। लेकिन जिस तरह से सरफराज अहमद ने, उमर ने और अबरार ने अपना हिस्सा डाला है वो काफ़ी अच्छा है। आपको गिर बैटिंग कार्ड की तरफ चलते हैं तो देखिए कि खुर्रम मंजूर 4 रन बना सके, उमैर बिन यूसुफ ने 5 रन बनाए, 23 रन बना के सऊद शकील आउट हुए। 4 रन फवाद आलम ने बनाए। 27 रन की फाइटिंग इनिंग्स फवाद आलम ने खेली। सिफर यानी साइम अयूब बगैर को रन बनाए आउट हुए। 56 रन की बेहतरीन इनिंग सरफराज ने खेली। 39 रन बनाए मोहम्मद उमर ने। अबरार ने 26 रन बनाए, जबकि 6 रन बना के गुलाम मुदस्सिर जो है वो नॉट आउट वापस लौटे। अगर हम बॉलिंग की तरफ देखें तो जो स्टैंड आउट बॉलर है वो मोहम्मद अब्बास रहे, जिन्होंने 18 कवर में 5 विकेटें हासिल की, सिर्फ 50 रन के एवज। इनके अलावा हसन अली, मोहम्मद सदाकत, मोहम्मद इलियास, हसान खान और सलमान अली आगा सब ने एक एक विकेट हासिल की। सो मेजर चंक जो है वो मोहम्मद अब्बास जो है वो उनके हिस्से में ही आया। जय सेशन की हाइलाइट्स, इब्रार अहमद जो कि वहाँ पे स्टिक रहे। मोहम्मद उमर कुछ अच्छी शॉट्स खेली लेफ्ट पे, फिर और सॉफ्ट डिसमिसल मोहम्मद उमर की शॉर्ट कवर में। लेकिन इब्रार जो है बिलतरतीब बाउंड्रीज हासिल करने में कामयाब रहे। कुछ मिस फील्डिंग्स भी हुई साउदर्न पंजाब की तरफ से, और फिर आखिर एक कवर में, शॉर्ट कवर में लास्ट विकेट जो कि आउट हुई। जब लेंगे हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे साउदर्न पंजाब की इनिंग्स
जी एक बार फिर से खुशामदीद। सदर्न पंजाब की टीम अब अपनी इनिंग्स का आगाज़ करेगी। इससे कबल बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया था और सिंध की टीम को पहले दिन में ही आउट कर दिया। दोनों ओपनर्स जो हैं वो इस वक्त सदर्न पंजाब के आपको नज़र आ रहे हैं, ज़ैन अब्बास और उमर सिद्दीक। उमर सिद्दीक ने लास्ट मैच में बड़ी बेहतरीन सेंचुरी स्कोर की थी। बहुत अच्छे बासलाहियत बैट्समैन हैं। 98 मैचेस में 5562 रन, 21 सेंचुरियाँ और 14 सेंचुरियाँ बना चुके हैं। ज़ैन अब्बास बुनियादी तौर पर इनका मुल्तान से ताल्लुक़ है। बहुत अच्छे लेफ्ट हैंड बैट्समैन हैं। 78 मैच, 4141 रन, 20 निफ सेंचुरियाँ, 7 सेंचुरियाँ, 178 बेहतरीन और 32.91 का इनका औसत है। ये सीज़न काफ़ी बेहतर जा रहा है ज़ैन अब्बास का। मोहम्मद उमर की बात करें तो बहुत ही बासलाहियत राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं। 12 मैचेस में 31 आउट कर चुके हैं। पहला गेंद अंदर स्विंग हुआ लेकिन थोड़ी जो उनकी लाइन थी वो लेग स्टंप से बाहर थी। मोहम्मद उमर, नया बॉल उनके हाथ में और लेग स्टंप के बाहर बॉल किया। टिपिकल राइट हैंडर की जो लाइन उस पर बॉल किया, लेकिन लेफ्ट हैंडर को वापस आना पड़ेगा और यहाँ से लाइन बनानी पड़ेगी क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंडर बैट्समैन हैं। अच्छी निक में उमर और जैन दोनों रन्स कर रहे हैं साउदर्न पंजाब के लिए। ये बड़ा ट्रिकी सेशन होता है जो लास्ट सेशन होता है और जो ख़ासतौर पर आखिरी घंटे का जो खेल होता है, इसमें फील्डिंग साइड जो होती है, जैसे सिंध की टीम है अभी बैटिंग में रह के आई है, शायद थोड़े से थके हुए भी होंगे और बैट्समैन को भी अपनी कंसंट्रेशन बड़ी हार्ड रखनी पड़ती है क्योंकि वो चाहता नहीं है कि उसकी विकेट गिरे और वो सेफली वापस पवेलियन लौटना चाहते हैं। जी हाँ, ऑलमोस्ट 1 घंटे का खेल बाकी है, 50 मिनट्स और इनफ है एक बैट्समैन को अपनी इनिंग को बिल्ड करने के लिए। आई थिंक अगले दिन आके वो दोबारा खेल सकते हैं। तो 4 डे वैसे क्रिकेट है ही सेशन बाय सेशन की। अब ये शॉर्ट सेशन है, इसको इनको सरवाइव करके जाना है। बॉल नया है, इसमें अच्छा खेलेंगे, 1 2 3 बाउंड्रीज लेंगे और उसके बाद अगले दिन आके अपनी इनिंग को बिल्ड करेंगे। तो ये माइंड सेट होना चाहिए एक बैट्समैन का जो इस टाइम पे बैट करने आता है। अच्छा यासिर, आप खुद बहुत तवील अरसा आपने ओपनिंग की है, ये कितना टफ फेज़ होता है किसी भी ओपनर के लिए कि जब सूरज ढल रहा हो और आपको पता हो कि आपने एक ख़ास वक्त के लिए अब सर्वाइव करना है और नया गेंद भी लगा हुआ हो, तो ये कितना टफ फेज़ होता है किसी ओपनर के लिए? जी बिल्कुल टफ़ होता है और ट्रिकी भी होता है, बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम है, 45 मिनट है, तो काफ़ी टाइम है। तो ये एक मेरे ख्याल से इतना शॉर्ट सेशन नहीं है, ऑलमोस्ट 1 आवर है, तो मोर देन इनफ कि बैटर जो है वो अपने आप को पूरी तरह 20-25 रन करके सेट कर सकता है। और ये वो 2-3 ओवर्स वाली वो ट्रिकी सिचुएशन नहीं है कि यार 2-3 ओवर्स करने, वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, टाइम्स कंफ्यूजन क्रिएट करता है बैटर के माइंड में। बट ये यहाँ पे थोड़ा सा 45 मिनट है, थोड़ा लंबा है, तो मेरे ख्याल से इनको प्रॉपरली सी ऑफ करना पड़ेगा नया बॉल, क्योंकि इतना टाइम है कि बॉलर्स के पास भी टाइम है, वो यहाँ पे 2-3 आउट भी कर सकते हैं। इस कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में अब तक बड़ी अच्छी बॉलिंग उमर ने की है, ऐसा ही एक स्पेल दरकार होगा इस मैच में भी। इस बार बाहर निकाला गेंद और उमर सिद्दीक ने इसको अपने पास से बड़े वॉचफुल तरीके से देखते हुए जाने दिया, कोई कोशिश ना की इस पे। और पहला ओवर मेडन, उमर ने 6 गेंदों का सामना किया, कोई रन नहीं बन सका अब तक। गुलाम मुदस्सिर बॉल करेंगे पवेलियन एंड से। इस मैच में मीर हमज़ा जो है वो रेस्ट कर रहे हैं और उनकी जगह आसिफ महमूद को खिलाया गया, जिनको हम बाद में देखेंगे बॉल करते हुए। गुलाम मुदस्सिर 23 मैचेस में 73 विकेट्स हासिल की, 3 दफ़ा 5 खिलाड़ियों को आउट किया, बेस्ट इनके 7 for 52। थोड़े से अगर ये लाइन और लेंथ पे फोकस करें, उनका बॉल अच्छी लाइन पे गिर रहा हो तो बहुत ट्रबल करते हैं बैट्समैन को।
और नो बॉल के साथ आगाज़ किया। ये एक आइडियल स्टार्ट नहीं है किसी भी फास्ट बॉलर्स के लिए कि आप पहली गेंद पे ओवर स्टेप कर जाएं। ये प्रॉब्लम रहा इनका थ्रू आउट द मैचेस। जितने भी मैचेस हुए यहाँ पे हमने देखा है ओवर स्टेप कर जाते हैं। जहाँ पे कोई क्रंच सिचुएशन होती है, लाइक कहीं ज़ोर लगाना हो, एक्स्ट्रा बाउंसर करना हो, वहाँ पे ओवर स्टेप कर लेते हैं। इस तरह पहला बॉल था तो इनको आइडिया नहीं था, इनका पाँव बहुत आगे निकल गया। देखें 4-5 इंच का मतलब ये फ़र्क था। तो कुछ चीज़ें हैं इनको अपनी इसमें बॉलिंग में वर्क करना है उस पर। अच्छी जगह से बाहर निकाला गेंद और उस पर अटेम्प्ट हो गए थे बैट्समैन, ड्राइव करने चले गए लेकिन कामयाबी से नहीं इसे कनेक्ट कर सके। जी अपने हाथों को थ्रो किया इस बॉल पे जैन अब्बास ने, लकी रह के एज नहीं हुआ। बॉल बाहर की तरफ जा रहा था। हमने देखा इन्होंने यहाँ पे एक 100 भी किया जैन ने, बड़ी अच्छी इनिंग्स थी वो। इनकी ज़्यादातर जो शॉट्स हैं वो फ्लिक ऑफ द रिस्ट होती हैं। जो आगे ड्राइव भी करते हैं उसको फ्लिक ऑफ द रिस्ट करते हैं, पूरे फुल फेस से नहीं खेलते। तो ये इनकी बैटिंग की जो है वो हम कह सकते हैं कि क्वालिटी है। ये इनकी शॉट है फ्लिक ऑफ द रिस्ट। अच्छा खेले इस बार। काफ़ी इस वक्त से ज़ैन अब्बास भी पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं। बहुत सीजन्ड ओपनिंग बैट्समैन हैं। यकीनन अपने सारे उस तजुर्बे को बरूए कार लाने की कोशिश करेंगे इस मैच में। और उनकी जो साथी उमर सिद्दीक है ये भी काफ़ी तवील अरसे से खेल रहे हैं। गुलाम मुदस्सिर इन्होंने इस क्वाइद-ए-आज़म ट्रॉफी में बीच में कुछ बहुत अच्छे स्पेल भी किए हैं सिंध की टीम के लिए। उमर सिद्दीक ने पिछले मैच में 100 किया, 14th 100 उन्होंने स्कोर किया लास्ट मैच में। इधर भी हमने जो गेम्स देखी इनकी, उसमें इन्होंने बहुत अच्छे स्टार्ट लिए थे लेकिन उनको कन्वर्ट नहीं कर सके। दोनों जो हैं बड़े कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं साउदर्न पंजाब के लिए, ज़ैन अब्बास और उमर सिद्दीक। के बाहर लूज डिलीवरी जिसका भरपूर फ़ायदा उठाया ज़ैन अब्बास ने, अगले कदम पे आके कट किया उसे 4 रन्स के लिए। ये देखिए कि थोड़ी सी विड्थ दे दी थी इस मर्तबा, लेकिन बिल्कुल तैयार थे और अपने हैंड्स को थ्रो कर दिया उन्होंने। थोड़ा अपिश खेले लेकिन गैप में खेले और इसे बैकवर्ड पॉइंट पर 4 रन्स के लिए खेल दिया ज़ैन अब्बास ने। न्यू हार्ड बॉल है और जस्ट बैट्समैन को टाइम करना होता है और बॉल बहुत तेजी से बाउंड्री लाइन की तरफ रवां दवा हो जाती है। इस बार चलकर खेले, बॉल की स्विंग को कवर करने की कोशिश की ज़ैन अब्बास ने। अब तक बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिली कुछ गेंदों को छोड़ के। नया बॉल है, एक जगह से करना चाहिए और बीच से करें। अच्छा आइडिया कभी कि आउटसाइड द ऑफ स्टंप करें। जिस तरह हमने देखा जैन ने जो पिछली शॉट खेली हवा में थी, थोड़ी रिस्की शॉट थी, तो बॉलर्स कभी इस चीज़ को माइंड नहीं करते 4-डे क्रिकेट में। और एक बार फिर अपर कट, बैकफुट, डीप बैकफुट पॉइंट पे बॉल गया 4 रन के लिए। बहुत ही जोरदार स्लैश था ये, और जहां पर आप ये देखिए कि थोड़ी सी विड्थ मिली 2 बार इस ओवर में, इसको बिल्कुल भी नहीं जाने दिया। 2 ओवर ये देखिए कि थोड़ी सी विड्थ मिली और कितना जोर से इन्होंने स्लैश किया। वो कहते हैं व्हेन यू स्लैश स्लैश हार्ड, और उसी चीज़ पे अमल पैरा रहे और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इसको उन्हें पनिश किया। और ये एक कामयाबी एक ओपनर की ये भी होती है कि जब भी उसको थोड़ा सा लूज बॉल मिलता है उसको स्पेयर नहीं करता। 2 ओवर का खेल मुकम्मल, 9 स्कोर बगैर किसी विकेट के नुकसान के।
अच्छा गेंद था, आगे से बाहर निकाला। यासिर कितना अटेम्प्ट करता है एज अ ओपनर कि जब आपको आगे से बॉल ड्राइव लेंथ पर कराया जाए और आपको बार बार लालच दी जाए कि आप मुझे ड्राइव करें। ये लेकिन बिल्कुल होता है, टेम्पटेशन होती है। अगर आपकी ये शॉट है, जब तक स्लॉट में ना हो आप ना खेलें, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको टेम्प्ट करते रहेंगे तो बेहतर यही है कि आप बाहर का बॉल है छोड़ें। नया बॉल है, 4 डे क्रिकेट में 3 स्लिप्स खड़ी हैं, गली है। पुल करने के लिए गए थे लेकिन दूर और हो गया उनसे बॉल, क्योंकि बाहर निकाल रहे हैं उमर। पीछे लेंथ जरूर थी पुल करने की, लेकिन जो मूवमेंट थी गेंद की वो और दूर ले चली गई गेंद को। थोड़ा सा लूज शॉट था ये, और थोड़ा कंसंट्रेट करना पड़ेगा इनको, क्योंकि अब सिर्फ आधे घंटे का खेल रह गया और इस वक्त इनकी विकेट चली जाएगी तो ये अफसोस करेंगे। इस बार पीछे का बॉल बैक फुट पे आके खेले, 1 रन बन सकता था लेकिन कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया। इस मरतबा थोड़ा बैक ऑफ द लेंथ किया था मोहम्मद उमर ने, इससे पहले बैक ऑफ द लेंथ के साथ थोड़ा आगे भी पिच कर रहे थे। मिक्स कर रहे हैं अब तक उमर भी अपनी लेंथ को। दोनों बाएं हाथ से खेलने वाले हैं और अवे स्विंग कराने की कोशिश कर रहे हैं मोहम्मद उमर। ओ खतरनाक अंदाज में खेले थे, लेट आउट स्विंग हुआ और वो गलती करवाते करवाते रह गए उमर। बिल्कुल क्लियरली उमर सिद्दीक को इस वक्त बिल्कुल आइडिया नहीं है कि उनकी ऑफ स्टंप किधर है। बाहर के बॉल को छेड़ रहे हैं, जाने देना चाहिए। अब ये बिल्कुल नथिंग शॉट है, अगर ये एज होती है तो सीधा स्लिप के हाथों में जाएगी। या तो आप शॉट खेलते तो पूरी खेले, बैक फुट पे आके कट मारे। ये बल्ला दिखाना इट्स नॉट गुड। इस मर्तबा अदर वे अराउंड, इस बार अंदर लेकर आए गेंद। बैट्समैन को अपनी इस कोशिश में एक किस्म का बीट कर दिया, क्योंकि बैट्समैन ने इसको आउटसाइड ऑफ स्टंप समझ के लीव कर दिया था। तो उमर जो है वो अपने तरकश के तमाम तीर चला रहे हैं नए गेंद के साथ। जी एक्सीलेंट डिलीवरी, अंदर आई और इस बार आगे की और अंदर लेके आए। बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे पीछे उमर सिद्दीक को कभी आगे लेके जा रहे हैं, कभी पीछे लेके आ रहे हैं, को कंफ्यूज रखा हुआ है। एक और अच्छा गेंद, इस मर्तबा थोड़ा बैक ऑफ द लेंथ से बाहर निकाला, फिर बीट किया और इसके साथ ही 3 ओवर का खेल खत्म। 9 स्कोर है बगैर किसी विकेट के नुकसान के। बैटिंग कार्ड हम देखें तो जैन अब्बास अब तक कोई रन नहीं बना सके हैं, 12 गेंदों का सामना किया, जबकि 8 रन उमर सिद्दीक ने बनाए, 7 गेंदों का सामना किया। उस्मान सलाउद्दीन, सलमान अली आगा, शारून सिराज, आजम खान, हसन खान भी बैटिंग कर लेते हैं, हसन अली भी बैटिंग के जौहर दिखा सकते हैं और इलियास भी डिसेंट है बैट के साथ। तो बैटिंग लाइनअप काफ़ी अच्छी है सदर्न पंजाब की अगर देखी जाए। सो ये एक टफ फेज़ है जिसमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से ये आगे लेके चलेंगे प्रोसीडिंग्स को। Curts and cuts nicely towards extra cover. It's a welcome boundary. A bit of width offered from Ghulam Mudassir and got the punishment. Good shot. It was a nice shot from Zan. Is in good touch. Ghulam Mudassir is in good touch. Has a very good tournament so far. If you talk about his bowling,
It's been impressive, isn't it? That is a dream ball for a bowler. Right there, Ghulam Mudassir showing his skill. It's brilliantly executed, that one. It's been a very cautious start for Sindh here. Batsman had absolutely no answer to that delivery. Ghulam Mudassir operating with 2 slips, 1 gully. Oh, edge straight to the Quaid-e-Azam. Remain lucky, didn't carry. We're seeing the same kind of pattern here with the field set and where the ball has been pitched by Ghulam Mudassir and the other bowlers. The same kind of plan that worked for Southern Punjab this morning. That's all Sindh is trying to do here. They're trying to get that first breakthrough before the end of the day, because that's going to be huge. Southern Punjab, a bit cautious here. A cautious start from them. They wouldn't want to lose any wickets today. Down the track and was trying to hit that hard. Swing and miss. Again, good bowling from Ghulam Mudassir. Some consistent bounce we have seen here today. Look at that. He came down the track, wanted to big swing and a miss. From there, he's not able to see the ball or see the swing at the moment. Zen struggling a bit. Looks a bit uncomfortable. This is what we have been observed against the Southern Punjab's bowlers as well. That the batters of Sindh, they were struggling early on. Saud Shakil, Khurram Manzoor even. But whenever you stay on the track, spend some time there, try to understand what's happening, just come up with a straight bat. So I think that you could get some good results. Absolutely, and that's all Mudassir is trying to do here. He's keeping his pace up. He's using the bounce very well. And he's just trying to tempt the batsman to come and play that shot and get trapped, because we've seen the Sindh batsmen do that today. A couple of them got trapped, just trying to go down the track and play the shot. That clearly wasn't there. Again, a very good delivery. Good line in length. Ending up this over with this dot delivery. Southern Punjab, 13 without any loss. Oh. Is that a kite? Or is that a bird? It looks like a kite to me. Oh, that's a bird. And again, wanted to play with a straight bat, but it went towards the third man. Bit of a chase for the fielder there, and only a single added to the total. If you talk about this bowler, Umar, he's been phenomenal so far in this tournament. The key is his consistency with his line and length. Really nice. I was talking to one of my friends, if you give him even 30 hours in a day, he will come up with the same line and length. Oh, it's a simple decision for Ali Haider, because height is the issue. It has been consistently been the issue here with his bounce, and we're seeing that the batsman is down. It's Umar. Hope he's not hurt himself too badly there. And again, the issue is again with the height. The ball skidded towards the batsman, wasn't able to time it properly, and he's down right now. Looks like he's in pain. Yeah, he is in pain. Physio is there
to help him out. It was a quick delivery. Swung in very quickly. Like you said, Asif is very consistent with his line and length, and we can clearly see that here. Umar getting some treatment from the physio, just making sure he's good on his legs. Trying to stretch out a bit. Meanwhile, everybody else is enjoying drinks. Should we too? Look at this beautiful camera work. Trying to catch this moon. Well, that is impressive as the bowling we've seen today from both teams. That's a beautiful view of the sky. And of course, the moon. Who doesn't like that? Well, we've got the sun as well here. That's some contrast building there from our cameraman. The sun and the moon are out at the same time. It's phenomenal work, and what does it mean that sun is setting, and of course that we are really close towards to end this day. Just 20-30 minutes remaining. The good news is that Umar is fine now and ready to fight against Umar. Well, this is Umar versus Umar. Doesn't get better than this. Some push-ups there from Sarfraz, trying to keep his blood pumping behind the wickets. By the way, do you do push-ups? Absolutely not. Absolutely not. Again, a very good delivery. Look, this is the line where he's hitting and targeting and try to bet batters if they could chase and get any nick towards slips in gully. Already got 3 slips. A very good delivery, isn't it? Absolutely. Umar has batted a lot on this particular pitch just like an hour ago or so, and he's batted for like more than 100 balls. He knows exactly where to pitch the ball to make it harder for the batsman to play, and that's what he's doing brilliantly. Nicely played towards cover. Timing is okay. It's rushing towards boundary. Saim Ayub cuts off. Good running between the wicket. Oh, it's been signalled a no ball. Well, that's not really smart. We'll have to reload that one. But that was a beautifully, very aesthetically pleasing shot by the batsman right there. Overstepping there, Mohammad Umar a bit. But who doesn't love to see that? A drive. Zan Abbas is in good touch. Already scored 439 runs in 6 matches with an average of 39. His best is 138 so far. That was swung a bit and well left by Zain there. Well, like you mentioned, he's averaging 39, and you, as Southern Punjab, I don't think you would want to lose your batsman who's been performing so consistently at the end, at the climax of the day. You would want him to bat the whole day tomorrow, play long, score some important runs. That's why we've seen that Southern Punjab is a bit cautious with their approach today. And overall, he has a good day. Zan has taken a couple of catches as well early on. Again, better length, good delivery, and ends up with this over. It's 5 overs gone, 19 for none.
he or she is the friend of Ali Yunus. Whenever Ali Yunus sits outside our colleague, he or she visits there. I like it. Well, he certainly made a friend, made an impression there. She's probably looking for him. Good start again, Ghulam Mudassir. As I was discussing earlier, that he has a phenomenal tournament so far. Bowled really nicely, already a fifer. So I think he got some confidence and coming up with this same aggression. An aggression required this time against Southern Punjab as well, I beg your pardon. Oh, that was beautiful. That was beautiful. Well, that's another big no ball. Well, we have seen a few of those in the first innings today from Sindh, and now from Southern Punjab, pardon me, and now Sindh is not very tidy with their extras today. This is the second no ball Mudassir has bowled. Overstepping is a problem with him, and he's struggling with this. Nicely driven. Straight to the fielder. Saud Shakil is there. Like you mentioned, Mudassir has played a key role in this team, in the Sindh's team, and they are second team on the points table. Well deserved. Obviously, they have played a brilliant brand of cricket so far, so they'll be looking towards him. All eyes on Mudassir to get that breakthrough for his team today. And we've seen some beautiful balls from him today. But can we see that one ball, you know, that can get him that wicket? We'll just have to wait and see. Well left from Zain. Read that one correctly. Mir Hamza is not playing this game. He was skipper in the last game and plenty of experience. Quaid-e-Azam having chat with Saad. They guys are ready to take some catches, enjoying smiles there. An over pitch delivery. Placed nicely in the gap for a single. So I was talking about Mir Hamza is not in this squad. He's a very good, you can say that early on he can get some wickets. So they might missing him. Well, there is something special about left arm pacers, isn't it? The romance between Pakistan and the left arm pacers is evergreen. Obviously they are going to miss Mir Hamza. But let's see how well they can do without him in this game. Oh, that's a brilliant catch. The plan has worked. The plan has finally worked for Ghulam Mudassir. And he's thankful, and rightfully so. The fielder making no mistake whatsoever. And they've got that breakthrough that we were talking about, Asif. Yes, again, a very good delivery. Outside the off stump, swung away. Omar went for a chase. Look at this. Really good delivery. And no mistake from Saad Khan. Omar Siddique gone on 6, 22 for 1, Southern Punjab. Hello, Umar Siddique. Umar Siddique was the last batsman to walk back.
It's a familiar sight here. We're seeing Mohammad Ilyas walk out as the night's watchman for Southern Punjab. We only have very few minutes left for today's game, few overs left, and they would want him to play that role of the night's watchman and wouldn't want to lose another one of their wickets on day one. It's a real test for Ilyas now to spend 10-15 minutes more there. Send him out as a night watchman. We have several stories regarding this. We'll share definitely. Three slips, a gully. Asking for the LBW. It's very close, but umpire isn't interested at all. Tariq Rashid isn't interested at all. Oh, you got a feel for the bowler. He's running in and he's giving his everything. At the end of the 6th over, it's 22 for 1. Well, look at this again. Pitching in line. Hitting. Impact in line. What do you think, Hijab? I think that was the closest one we've seen today. I think that could have gone either way. Looked very, very close. And I didn't see any bat involved there either. So difficult decision for the umpire, but it went in the favor of Southern Punjab. Well, I think it's not a good idea, Zan. The way he's trying to chase Umar away from the body could be really dangerous. But here we can see that big appeal from Ghulam Mudassir's last ball of the over. The ball was pitching in line. And I think that's very close. It's very close. We've seen a lot of balls going above the height because of the bounce, but I think that looked extremely close. It's a bit unlucky there, Ghulam Mudassir. Was a very good delivery. Swung in, and night watchman Ilyas wasn't ready for that. Very dangerous stuff from Ghulam Mudassir, and now Umar. I like his body language, very confident, calm, and just try to bowl on his and concentrate on his liner length. Impressive guy. Absolutely, we all love to see a bit of aggression when it comes to fast bowlers. That's just who they are. Another good ball coming in to the left-hander there. Well, it's not easy to be a batsman today, is it? They have been challenged on every other ball. The runs have not been easy to score. We haven't really seen anybody be that comfortable on the pitch today. Nicely played towards square leg area. Abrar is there. When you were talking about pitch, in the pitch report, as we have watched, what Ijaz was telling, that it's a very good pitch early on day one, and then till the lunch of second day, it will be really helpful for the fast bowlers, for the seamers. Things are going in the same way. Spot on prediction there from Ijaz, and absolutely, that's what Hassan Ali said in the toss as well today. He said that the reason why we want to bowl first is because we see a bit of a moisture, there's a bit of a grass on that pitch, and we hope that there's a bit of a movement for the paces there early on. But I see the paces are getting help, and it's the end of day one. Another good ball. A slight change in the fielding, 3 slips for Ilyas and a fielder at short leg as well. Or you say short mid-wicket? Yeah, he's a bit far from that short leg area. Let's see what they have planned for Mohammad Ilyas, who just has to survive.
until the very last over today. Ooh, that's a beautiful delivery, just out of reach from Mohammad Ilyas, and he does well not to reach out for that ball. And at the end of the 7th over, the score is 23 for the loss of 1 wicket. Ghulam Mudassir already taken a wicket of Umar Siddiq, and then bit unlucky against Ilyas. It was a very close call. Absolutely. Ilyas was shell-shocked with that ball, had no idea what happened on there, but obviously the decision didn't really go his way. But that's part of the game, isn't it? Yes, this is called sportsman spirit, of course. And this is what we are learning from cricket. Southern Punjab 187 runs behind now. Good delivery, but very solid stroke. The ball comes onto the bat very hard. You can hear the crack of the bat here when we're very far from the pitch, but we can hear it loud and clear in the comm box. And sometimes it's very nice to hear that. It's been a bit of a struggle for the batsmen today, not a lot of runs scored. Shadows are disappearing, if you can see that. So what does it mean that before this over, umpires were checking the light? You can see clearly, no shadows. Well, we did see the light meter making an appearance. A bit of a discussion between the umpires whether the game should go on because of the light. It's quickly disappearing. Umpire Tariq Rashid and Ali Haider. Just checking the light, and yes, batters are going back. Ilyas and Zan. I think umpires will call off now. Well, that's it for day one here from the Pindi Stadium. The players are walking off. The light meter is out. It's been a very entertaining day of cricket, especially for the bowlers, I would say. Rightly said. Look at Ilyas, he's enjoying. Oh, well, keeping the spirits high there. Umpires are still there. They're just checking lights, and the ground staff is there with them. Well, if you see today's session, the first morning session was good. 25 overs been bowled, 5 wickets. Even the afternoon, it was 27th over bowled and 3 wickets. In the last evening session, 4 wickets.
wickets has been pretty consistent, but let's look at that run rate. It's been creeping up a bit session by session, so that does show that, you know, it's getting a bit, probably not a lot, but a bit easier to bat as the time goes on. We have the batting card here for ATF Southern Punjab. Zain Abbas was the only batsman to lose his wicket today at the hands of Mudassir with a brilliant catch at the slip by Saad. It's Umar Siddiq, and it's not Usman Salahuddin, it's Muhammad Ilyas out there. कमबैक कर रहा हूँ और साथ आसिफ महमूद. Let's watch out the highlights. Khurram Manzoor versus Hassan Ali. Started well, Khurram Manzoor, but he was struggling. Nicely taken by Azam. Good catching all the way from Southern Punjab. Well, it has been that kind of a day where the fielding has been pretty much up to the mark, on target. We've seen a lot of runs being stopped and a lot of brilliant catches in the slip. And obviously Azam Khan has been very good today, very tidy. There's just another example of how good Southern Punjab has been in the field today. Look at that swing. Look how the ball is deceiving the batsman. And then came out Sarfraz Ahmed. And he looked a completely different batsman on this pitch. It's been hard to score runs, but he did it elegantly and so easily. But in the end, his dismissal was really soft. And look at that delivery from Ilyas. Brilliant bowling. He was good with his pull shot. Cut. Nice batting from Sarfraz, but it was a very soft dismissal. Well, then came out the Sindh batsman. For the very last session of the day, some pretty good placement there from Abrar Ahmed. He was mighty impressive. He took on Hassan Ali, scored a few important runs, and that was the dismissal of Muhammad Umar. Kind of like the turning point for the game, and that's just another example of how brilliant Abrar Ahmed was. And then another brilliant catch taken to end the innings for Sindh today. They scored 210 runs. Yes, and then the way Zain started nicely, a couple of boundaries. It was a good delivery and nicely taken by Saad. So Umar Siddiq is the only man, got out on 6. Zain Abbas, Muhammad Ilyas still there. Plenty of batting options. Usman Salahuddin, Salman Ali Agha, Sharoon Siraj is a very good batter. And then Azam Khan. Well, they bat pretty deep, so they should be backing themselves. And we only have 2 bowlers today in the last session. It was Ghulam Mudassir who shined with the ball. He was absolutely brilliant. Took that 1 wicket, gave that 1 breakthrough for his team. Muhammad Umar has been very, very economical. Only given 7 runs in total for his 4 overs. And Sindh should be backing themselves because they've got a brilliant pace attack. Well, as Sindh, they have made good total 210. Not impressive, but ATF Southern Punjab was really good with their bowling. 5 for Muhammad Abbas, and they're 187 runs behind. Well, that's it from Rawalpindi Cricket Stadium, and we'll catch you tomorrow 10 a.m. in the morning with the live action. Till then, stay blessed.